शैक्षिक संस्थानों सहित शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण से विशेष प्रावधान संबंधी भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(5) का कार्यान्वयन संबंधित 370वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखती हूँ। धन्यवाद। Report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs, Sri G.K. Vasan. Sir, with your kind permission, I rise to present the 254th report in Hindi and English of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs on cyber crime ramification, protection and prevention. Thank you, sir. Report on the Committee on Petitions, Sri Narayan Das Gupta. Sir, with your permission, I rise to present 163rd report in English and Hindi of the Committee of Petition on petition praying for making the treatment for cancer affordable and widely available as listed against my name. Report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture, Sri Sanjay Kumar Jhaji. Sir, I rise to present a copy each in English and Hindi of the 380th report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture, listed against my name at serial number 5 in today's list of business. Reports of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing, Srimati Ramila Ben Becher Bhai Bara. धन्यवाद माननीय सभापति जी महोदय। मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 100 पर 6 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित सूचीबद्ध कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति 2024-25 के 14वें, 15वें, 16वें, 17वें, 18वें, 19वें, 20वें और 21वें प्रतिवेदनों हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक नकल सभा पटल पर रखती हूँ। धन्यवाद। Statement of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing, Srimati Ramila Ben Becher Bhai Bara. धन्यवाद सभापति जी, आपकी अनुमति से मेरे आज की कार्य सूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित सूचीबद्ध कृषि पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 13वीं कार्यवाही रिपोर्ट पर सरकार द्वारा की गई आगे की कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण की एक प्रतिवेदन सभा पटल रखती हूँ। धन्यवाद। Reports of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Chemicals and Fertilizers, Sri Sanjay Raut ji. Sri Medha Raghunath Reddy. Sir, your kind permission, sir. Sir, I rise to lay the 9th, 10th, 11th, 12th and 13th reports, Hindi and English versions, sir, of the Standing Committee of Chemicals and Fertilizers as listed against my name in today's list of business, sir. Thank you. Report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Housing and Urban Affairs, Sri Ayodhya Rami Reddy Lalla. Namaskar, sir. I rise to lay on the table a copy in English and Hindi of the 6th report on action taken by the government. Please, mic is on. Okay. So, again I'll start, sir. Yes. Namaskar, sir. I rise to lay on the table a copy in English and Hindi of the 6th report on action taken by the government on the recommendations, observations contained in the 3rd report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Housing and Urban Affairs 2024-25 on demands for grants 2025-26 pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs. Thank you, sir. Statements by Minister Sri George Kurian. Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to make a statement on behalf of my senior colleague, Sri Rajiv Ranjan Singh ji, at senior number 10, A and B, in today's revised list of business. Honourable members,
18 notices have been received today on three different subjects under Rule 267. Since none of these notices received today are in adherence to the requirements of the rules, I am not admitting any of the notices. Please take your seats. Please, its matter is with the permission 0 hour. Dr. Medha Visram Kulkarni, please, आप 0 hour चलने दें, question hour चलने दें. Please, the House will meet at 12 noon today. नमस्कार, संसद टीवी के इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। उपराष्ट्रपति चुनाव पर गहमागहमी तेज हो गई है। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। संसद भवन परिसर में आने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने प्रेरणा स्थल पर जाकर महान विभूतियों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। ये उस समय की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। सीपी राधाकृष्णन जी हैं, उनके साथ किरण रिजिजू हैं। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। हम आपको बता दें कि चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन का राजनीति में 4 दशकों से ज्यादा का अनुभव है। वो महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल रह चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में अपनी यात्रा शुरू करने वाले चंद्रपुरम पोन्नुसामी 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने। 1998 में वो पहली बार कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए चुने गए। 1999 में वो पुनः लोकसभा के लिए चुने गए। 2004 में उन्होंने संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। आप देख सकते हैं, ये आज की तस्वीरें हैं। ये आज की तस्वीरें हैं जब आज पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे थे। इन तस्वीरों के साथ आपको एक विशेष वीडियो दिखाते हैं जो कि
राधाकृष्णन जी के जीवन से, राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ है। आइए एक बार एक नजर डाल लेते हैं। सीधा रुख करते हैं अपनी सहयोगी कृति मिश्रा का, जो कि वहां पर उपस्थित हैं जहां पर ये पूरी प्रक्रिया आज होने वाली है। कृति, अभी तक क्या पहुंच गए हैं राधाकृष्णन जी? जी हाँ, कृति से हम बात करेंगे और जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, और जो अब हमें जानकारी है कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं राधाकृष्णन जी। अपना आज नॉमिनेशन दाखिल करने वाले हैं, उपराष्ट्रपति पद के एनडीए के उम्मीदवार हैं, और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जो कि लगातार हम आपके साथ अपने टेलीविजन स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। कृति हमारे साथ जुड़ गई हैं। कृति, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है अभी तक? कहाँ? जी हाँ प्रतिबिंब, बिल्कुल जैसा कि आप जानते हैं आज एनडीए वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी का नॉमिनेशन होने वाला है, और मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो थोड़ा सा कैमरा पैन करके हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह से जो पार्लियामेंट हाउस है उसके फर्स्ट फ्लोर पर आप सामने देख सकते हैं वसुधा F101 है। ये पोलिंग डेट के लिए जो जगह है वो फिक्स की गई है। इसके सामने आप गैलरी देख सकते हैं, वहां पर रूम RS28 है जहां पर नॉमिनेशन की पूरी प्रक्रिया होनी है अभी कुछ ही देर में, जो एनडीए के वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सारे रूल्स और प्रोविजंस हैं, उनके साथ इस बार अगर की बात की जाए तो रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं मिस्टर PC मोदी, उनके साथ ही असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं। कुछ ही देर में ये पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी, और आप देख सकते हैं कि कैसे सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। लोगों की आवाजाही लगातार हो रही है। कुछ ही देर में अभी हम देखेंगे कि प्रपोजर्स और सेकेंडर्स भी आएंगे, और लगातार हम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। जी प्रतिबिंब। कृति, अगर बात करें कल एक विशेष बैठक जो है इस प्रक्रिया से पूर्व की गई, जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने अभिवादन किया, स्वागत सत्कार किया राधाकृष्णन जी का, और क्यों ना करें 4 अलग अलग राज्यों के राज्यपाल रहे हैं। एक लंबी एक यात्रा है राजनीतिक रूप से देखा जाए राधाकृष्णन की। क्या कुछ कहना है उनकी इस यात्रा के बारे में? कृति, आवाज आ रही है? कुछ गहमा-गहमी बढ़ी है। संभवतः बहुत जल्द चंद्रपुरम पोनुसामी राधाकृष्णन जी, जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति पद के, वो पहुंचने वाले हैं अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए। केंद्रीय मंत्री आप देख सकते हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री।
हम लगातार सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आपको हमने पहले बताया कि एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, 4 दशकों से ज्यादा का। चंद्रपुरम पोनुस्वामी जी महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना के राज्यपाल रहे हैं, पुडुचेरी के उपराज्यपाल रह चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में अपनी यात्रा उन्होंने शुरू की थी। 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने। 1998 में वो पहली बार कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए चुने गए। 1999 में वो पुनः लोकसभा के लिए चुन लिए गए। वर्ष 2004 में उन्होंने संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था और कुछ ही देर में चंद्रपुरम पोनुस्वामी, जो कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। लंबा अनुभव, राजनीति का 4 दशक से ज्यादा का। अगर बात करें उनके राजनीतिक करियर की, 4 दशकों से ज्यादा का उनका अनुभव। महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना और के राज्यपाल रहे, पुडुचेरी के उपराज्यपाल रह चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में अपनी यात्रा शुरू करने वाले चंद्रपुरम पोनुस्वामी 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने। 1998 में वो पहली बार कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए चुने गए। 1999 में वो पुनः लोकसभा के लिए चुने गए। वर्ष 2004 में उन्होंने संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी किया था। आइए एक ग्राफिक के माध्यम से जान लेते हैं कि कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष होता है, जिसके निर्वाचन मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। दोनों सदनों के मनोनीत सांसद भी वोट डाल सकते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाने के 7 दिनों के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राधाकृष्णन जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, अमित शाह जी हैं। एक बड़ा अवसर एनडीए के लिए, क्योंकि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जाते हुए। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद टीवी पर। प्रधानमंत्री, हम बता दें कि चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन जी का एक लंबा अनुभव रहा है राजनीति का, और वर्तमान में वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और आज वो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन भरने जा रही हैं और उस कक्ष में पहुंच गए हैं संसद भवन के, जहां पर वो नामांकन भरेंगे। प्रधानमंत्री भी उपस्थित हैं, गृहमंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, अन्य केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित हैं और एनडीए घटक के भी अलग अलग दलों के नेता और केंद्रीय मंत्री उपस्थित हैं।
वो धरती पकड़ नहीं है हमेशा हमेशा लोकसभा के फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाए मगर नहीं लेकिन भर के होंगे तो ठीक कुछ शब्द या नाम ऐसे पॉपुलर हो जाते थे कारण जुबरी चला गया नाम तो यही लगा सीपी राधाकृष्णन जी का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ और उन्होंने बीबीए की शिक्षा ग्रहण की। साथ ही साथ वो टेबल टेनिस के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। कॉलेज स्तर पर वो चैंपियन रहे हैं। उनका संबंध फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ और संघ के ही मार्गदर्शन में जनसंघ से उनका नाता जुड़ा। इस समय जो प्रक्रिया है वो पूरी करते हुए नामांकन की इस प्रक्रिया के समय सीपी राधाकृष्णन जी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और एनडीए के भी सदस्य और मंत्रीगण उपस्थित हैं इस अवसर पर। इससे पहले कल एक बहुत ही विशिष्ट बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री ने की थी और अभिवादन किया था, स्वागत किया था सीपी राधाकृष्णन जी का। उस विशेष बैठक में एनडीए घटक के सभी राजनेता, सांसद, मंत्रीगण उपस्थित थे और आज जब नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो रही है, एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में सीपी राधाकृष्णन के, तो उस समय भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ एनडीए घटक के भी मंत्रीगण, सांसद इस अवसर पर उपस्थित हैं। बीस अक्टूबर 1957 को तिरुपुर तमिलनाडु में जन्म लेने वाले सीपी राधाकृष्णन, उनका एक लंबा अनुभव है, 4 दशक से ज्यादा का। 4 दशक
से ज़्यादा कि अपने इस राजनीतिक करियर में वो महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना के राज्यपाल रहे, पुडुचेरी के उपराज्यपाल रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में अपनी यात्रा शुरू कर 1974 की बात है जब वो भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने। 1998 में वो पहली बार कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए चुने गए। 1999 में वो पुनः लोकसभा के लिए चुने गए। बात है वर्ष 2004 की, जब उन्होंने संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था और इस समय देश के उपराष्ट्रपति पद के एनडीए के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं और ये प्रक्रिया अभी चल रही है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं सीपी राधाकृष्णन हैं, एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं और दाईं तरफ संभवतः सीपी राधाकृष्णन जी के चिराग पासवान जी हैं। ये आप देख सकते हैं, दस्तावेज देखे जा रहे हैं, वो प्रक्रिया पूरी हो रही है उपराष्ट्रपति पद के नामांकन की। और नितिन गडकरी जी भी आपको स्क्रीन पर नजर आए होंगे अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ। आपको एक बार फिर से बता दें कि 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु में जन्म हुआ था सीपी राधाकृष्णन जी का। बीबीए की डिग्री उन्होंने हासिल की। खेलों में विशेष रुचि है। 40 वर्ष से ज्यादा का समय राजनीति में वो पूरा कर चुके हैं। इस दौरान अलग अलग प्रदेशों के राज्यपाल रहे, उपराज्यपाल रहे और 1998 में वो पहली बार कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए चुने गए। 1999 में पुनः लोकसभा के लिए चुने गए। वर्ष 2004 में उन्होंने संसदीय प्रतिनिधि मंडल के रूप में सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था, जिसका जिक्र आज तक किया जाता है। चर्चित था उनका वो संबोधन। एक कह सकते हैं बहुत सदी हुई 4 दशक से ज्यादा लंबी राजनीतिक पारी और अपनी राजनीतिक पारी के इस पड़ाव में वो आज एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दर्ज करवा रहे हैं। कह सकते हैं एनडीए सरकार का पूरा मंत्रिमंडल इस समय उपस्थित है इस विशेष अवसर पर। आप जैसा कि अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। प्रक्रिया चलती हुई नामांकन पत्र दाखिल करने की। अगर इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बात करें, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष रूप से होता है और इसके निर्वाचन मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद शामिल होते हैं। सीपी राधाकृष्णन जी आप देख सकते हैं हस्ताक्षर करते हुए।
जो प्रक्रिया है नामांकन पत्र भरने की, उस प्रक्रिया से गुजरते हुए, और इस प्रक्रिया की सीधी तस्वीरें आप केवल संसद टीवी पर देख रहे हैं। संभवतः ये प्रक्रिया संपन्न हो गई है। सेक्रेटरी जनरल राधा कृष्णन जी, और ये प्रक्रिया लगभग संपन्न हो गई है। एनडीए सरकार का लगभग पूरा मंत्रिमंडल इस अवसर पर उपस्थित था जब आज सीबी राधाकृष्णन जी ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन भरा। आपको खट्टर जी नजर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री। और अब प्रक्रिया संपन्न हुई और एनडीए सरकार के तमाम मंत्री जो कि उपस्थित थे, श्री सीपी राधाकृष्णन जी के नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया के दौरान वो सब कक्ष से बाहर आते हुए, बाहर सीपी राधाकृष्णन जी जो कि उम्मीदवार हैं एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के, प्रधानमंत्री भी साथ में हैं और सबका अभिवादन करते हुए समस्त मंत्रिमंडल आपको नजर आ रहा है। एक विशेष अवसर है, बहुत ही विशेष अवसर। और आप देख रहे थे सीधी तस्वीरें कि सीपी राधाकृष्णन जी जो कि अभी तक महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और इससे पहले भी 2 अलग अलग राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। 40 बरस से अधिक का उनका राजनीतिक सफर रहा है और अपने राजनीतिक सफर के इस पड़ाव में अब वो एनडीए सरकार की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने हैं और उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है, दर्ज करवा दिया है। आइए एक इंफोग्राफिक्स के माध्यम से जान लेते हैं कि कैसा होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष रूप से होता है, जिसके निर्वाचन मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। दोनों सदनों के मनोनीत सांसद भी वोट डाल सकते हैं। अगर उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल पूरा हो जाने के 7 दिनों के अंदर चुनाव आप देख सकते हैं। राधाकृष्णन जी भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष पद पर भी कार्य कर चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण भारत में विशेष कार्य किया है और जैसा कि हमने बताया कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जो है वो परोक्ष रूप से होता है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही इसमें वोट डाल सकते हैं। दोनों सदनों के लिए मनोनीत सांसद भी उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। हम बता दें कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाने के 60 दिनों के भीतर चुनाव करवाया जाता है। निर्वाचन अधिकारी चुनाव को लेकर एक पब्लिक नोट जारी करते हैं और उम्मीदवारों से नामांकन मंगवाते हैं।
आपको एक बार फिर से जानकारी दे दें कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी ने अपना नामांकन पत्र भर दिया है और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित थे। इस विशेष में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। आजादी के बाद आधी आबादी को मजबूत करने के मकसद से भारतीय संविधान में कई अधिकार दिए गए हैं। इसकी जरूरत जनसंख्या में महिलाओं के अनुपात में अंतर, बालिकाओं, किशोरियों और महिलाओं के प्रति होते भेदभाव और असमानता के चलते महसूस की गई। इस विषय पर देश और सरकार के प्रयास और लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में समाहित है। संविधान महिलाओं को समानता और भेदभाव रहित आधार देता है। अनुच्छेद 14 के तहत महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 खंड 3 के तहत कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। वहीं अनुच्छेद 16 खंड 1 के अनुसार लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता है। अनुच्छेद 19 खंड 1 के अनुसार समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वहीं अनुच्छेद 21 के तहत स्त्री पुरुष को प्राण और दैहिक स्वाधीनता से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 23 और 24 के अनुसार स्त्री पुरुष को शोषण के विरुद्ध समान अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 25 और 28 में दोनों को धार्मिक स्वतंत्रता के समान अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 और 30 के तहत शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक और उपचारों का अधिकार दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 39 खंड घ के तहत पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 42 के तहत महिलाओं को प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 51 खंड क खंड ड के तहत ऐसी प्रथाओं का त्याग करने की बात कही गई है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अनुच्छेद 243 खंड ड के तहत पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 1993 में हुए 73वें और 74वें संशोधन में महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं की स्थानीय निकायों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो उन्हें भागीदारी का मजबूत आधार प्रदान करता है। गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को कुछ विशेष कानूनी अधिकार दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 42 में कामकाजी माताओं के लिए भी कुछ प्रावधान है। इसी के तहत 1961 में कामकाजी महिलाओं के लिए प्रसूति प्रसुविधा कानून बनाया गया था। 2016 में इस कानून को संशोधित करने के लिए मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक लाया गया। Hello and welcome viewers. You're watching In Depth with your host Kriti Mishra. Article 63 of Indian Constitution states that there shall be a Vice President of India. The office of the Vice President was established within the framework of Indian Constitution in 1950. It reflects the framers' intent to create institutional continuity and effective parliamentary governance. Let's analyze the dual constitutional role of Vice President of India, that is, legislative and executive. Come along.
Article 63 of Constitution of India provides that there shall be a Vice President of India. Article 64 and 89(1) provide that the Vice President of India shall be ex officio Chairman of the Council of States, that is the Rajya Sabha, and shall not hold any other office of profit. In the constitutional setup, the holder of the office of Vice President is part of the executive, but as Chairman of Rajya Sabha, he or she is a part of Parliament. He thus has a dual capacity and holds two distinct and separate offices. The office of the Vice President is one of the unique features of the Constitution of India. It has no exact parallel in the countries of other democratic constitutions of the world. There is no such office in other parliamentary systems of governments in Commonwealth countries or in Ireland. The only constitution among the important democracies of the world which provides for such an office is that of the United States of America. But the office of the Vice President of India, though analogous to, but it is not identical with that of Vice President in the United States of America, for the obvious reason that it has a presidential system of government and not a parliamentary one as in India. And yet the constitution makers of India, while basically following the British parliamentary system, decided to opt for the American system and provided that, like the Vice President in the USA, the Vice President of India will preside over the upper house and act as President in certain contingencies. Thus, the Vice President of India has been clothed with a dual capacity as the second head of the executive and as the presiding officer of the upper house of Parliament. This naturally casts an enormous burden of responsibility on the holder of this office. He has to keep the responsibilities of the two offices distinct and separate. The chairman cannot allow his mind to be influenced by the knowledge acquired in his capacity as the Vice President. While performing his duties as Vice President, he cannot do anything which may impair his obligation as Chairman. It is remarkable that in India, the holders of this high office as Vice President have functioned within this fusion of roles and have received admiration and appreciation of the nation as a whole. They have occupied the chair of the Rajya Sabha with singular distinction and have performed their functions with grace and dignity during all these years. The Vice President is elected through an indirect election conducted by Election Commission of India with an electoral college comprising of elected members of Parliament and nominated members of Rajya Sabha. Only Parliament MPs can vote. MLAs of state assemblies cannot vote. Room number F101, Vasudha, first floor Parliament House, New Delhi, has been fixed as the place of polling for the vice presidential election. As per Article 66 of the Constitution of India, the Vice President is elected by the members of the Electoral College, consisting of members of both Houses of Parliament in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote. For 2025, that is the 17th Vice Presidential election, the Electoral College will consist of 233 elected members of Rajya Sabha, as presently 5 seats are vacant, 12 nominated members of the Rajya Sabha and 543 elected members of Lok Sabha. Presently, 1 seat is vacant. For marking the vote, the Commission will supply particular pens. The pen will be given to the electors in the polling station by the designated official when the ballot paper is handed over. Electors have to mark the ballot only with this particular pen and not with any other pen. Voting by using any other pen shall lead to invalidation of the vote at the time of counting. Under the law, nomination can be filed either by the candidate himself or by any of his proposers or seconders between 11 a.m. to 3 p.m. Nomination cannot be filed on public holidays. A nomination paper of a candidate has to be subscribed by at least 20 electors as proposers and by at least other 20 electors as seconders. No elector shall subscribe more than one nomination paper at the same election as either a proposer or a seconder and is governed by Section 5B, 5 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act of 1952.
A candidate can file a maximum of 4 nomination papers. The security deposit for the election is 15,000 rupees, which is required to be made along with the nomination paper or should be deposited in Reserve Bank of India or a government treasury under the relevant head of accounts for the purpose prior to filing of nomination. Each contesting candidate can authorize a representative to be present at the place of polling and at the place fixed for counting. Authorization of representatives for this purpose shall be made by the candidate in writing at appropriate time. Political parties cannot issue any whip to their MPs in the matter of voting in the vice presidential election. As per Section 18 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, the offence of bribery or undue influence, as defined in Sections 170 or 171 of Bharatiya Nyaya Sanhita, by returned candidate or any other person with the consent of the returned candidate, are among the grounds on which the election can be declared void by Supreme Court in an election petition. The election to the office of Vice President of India, being an indirect election, does not involve election campaigning in the conventional manner of displaying banners or posters. Still, the Commission, in view of importance of this election, has directed the returning officer concerned to ensure use of eco-friendly and biodegradable material and eliminate the use of prohibited plastic or materials as per extant instructions of Government of India. Let's take a look at the schedule of Vice President's election 2025. Last day of marking nominations, 21st August. Date for the scrutiny of nominations, 22nd August. Last date for withdrawal of candidature, 25th August. Date of polling, 9th September if necessary. And date of counting, 9th September 2025. The Vice President of India occupies a unique position in the country's constitutional framework, serving as a legislative presiding officer and an executive successor, ensuring institutional continuity. So who elects the Vice President of India? Well, the Vice President is elected by an electoral college which consists of members of Lok Sabha and Rajya Sabha, both elected and nominated members. What is the term of office of the Vice President? The Vice President holds office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. However, notwithstanding the expiration of his term, he shall continue to hold office until his successor enters upon his office. In the case of death, removal or resignation of Vice President, the Constitution does not provide any other method of succession apart from a fresh election. However, in such event, the Deputy Chairman can function as the Chairman of Rajya Sabha. What is the legal framework for the election? Well, the election to the office of Vice President of India is governed by the provisions contained in Article 64 to 68 of Constitution of India and the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952 and the rules made thereunder. Who conducts the election to the office of Vice President of India? Under Article 324 of the Constitution of India, the authority to conduct elections to the office of Vice President is vested in the Election Commission of India. What electoral system or process is adopted for the election? As per Article 66(1) of the Constitution of India, the election of the Vice President shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote, and the voting at such election shall be made by secret ballot. Who is appointed as the returning officer? By convention, the Secretary General Lok Sabha or Secretary General Rajya Sabha is appointed as the returning officer by rotation. 2 other senior officers of Lok Sabha or Rajya Sabha Secretariat are appointed as the assistant returning officers. The Election Commission of India makes such appointments. Can an elector propose or second the nomination of more than one candidate at a vice presidential election? Well, no. An elector can propose or second the name of only one candidate at a vice presidential election. Let's take a look at the grounds for rejection of the nomination of a candidate. A nomination paper may be rejected on the following grounds. On the date of scrutiny of nominations, the candidate is not eligible for election as Vice President under the Constitution. Or, if any of the proposers or seconders is not qualified to subscribe a nomination paper, that is, he is not an elector at the election. Or, if it is not subscribed by the required number of proposers and seconders. Or,
if the signature of the candidate or any of the proposers or seconders is not genuine or has been obtained by fraud. If the nomination paper is not presented in person by the candidate or any of his proposers or seconders, or if it is not delivered to the returning officer by the prescribed date. What is the color and form of the ballot papers used in election to the office of the Vice President? Ballot papers for Vice Presidential elections are printed in pink color. The ballot papers are printed with two columns, first column containing the names of the candidates and the second column for marking preference by the elector for each candidate. The ballot papers are printed in Hindi and English. How is the value of votes of members of Electoral College calculated? Unlike the presidential election, where the value of votes cast by the members of Parliament and that of various state legislative assemblies is different, the value of every vote cast in the vice presidential election has the same value, that is 1. Can an elector vote by post at the vice presidential election for any reason like illness, business or occupation? Well, no, only a voter under preventive detention can vote by post. Is it compulsory for an elector at a vice presidential election to mark his preference for all candidates? No, only the marking of a first preference is compulsory for a ballot paper to be valid. Marking other preferences is optional. What are the grounds for rejection of the ballot paper? The returning officer shall reject a ballot paper as invalid on which the figure 1 is not marked, or figure 1 is marked against the name of more than one candidate, or marked in a manner which renders it doubtful as to which candidate is intended to apply. The figure 1 and some other figure is marked against the name of a candidate. Candidates must meet specific constitutional requirements: Indian citizenship, minimum age of 35 years, and qualification for Rajya Sabha membership. They cannot hold any office of profit under central or state governments. If already serving as an MP, they must vacate their legislative seat before resuming the vice presidency. The vice president occupies the second highest office in the country. He is accorded a rank next to president in the official warrant of precedence. Well, viewers, that's all we had for you in this edition. Thanks for watching and stay tuned to Sunset TV. Goodbye for now from my side.
माननीय सभासदों, माननीय उपसभापति जी, तिवारी Papers to be laid on the table. Sri Ramdas Athawale. The table of the House. Paper Paper listed against my name at serial number 1C in today's revised list of business. ये हंगामा बंद करो, हंगामा बंद करो। एक मिनट में आप शांत रहिए। क्वेश्चन आवर, आप क्या करना चाहते हैं? औचित्य का सवाल 258 औचित्य का प्रश्न है कि आज जिस तरीके से वोट चोरी हो रही है, उस वोट चोरी की वजह से अंकित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 286 डॉक्टर सिकंदर कुमार। नंबर 286 सदन के महोदय विवरणी रखी गई है। आप शांत रहिए। सर, माननीय सप्लीमेंट्री माननीय मंत्री से मैं जानना चाहता हूं, क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC में किसी विशेष योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में सहकारी समितियों के ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है? यदि की है तो हाँ, अगर नहीं की है तो have been recommended that a leave of absence from the sitting of the House to be granted to the members as indicated in the report. Is it the pleasure of the House that the leave as recommended by the committee be granted? Honorable Speaker, the members will be informed accordingly. Item number 9, Chandrajit Singh, Chennai. Yes, sir. Sir, I rise to present a copy each of the 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th and 20th and 21st reports, Hindi and English version of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry, Food Processing 2024-25 as listed my name against my name at serial number 9 in today's list of business. Thank you. 7. Kalyan Wajinath Rao Khale. सर महोदय, मैं आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं।
धन्यवाद। आइटम नंबर 10 चरणजीत सिंह चेन्नई। Sir, I rise to lay a copy of the statement, Hindi and English version, showing further action taken by the government on the 13th action taken report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing 2024-25 as listed against my name at serial number 10 in today's list of business. Thank you. Item number 12 Magunta Srinivas Reddy. Sir, I rise to present the 6th report on action taken by the government on the recommendations, observations contained in the 3rd report of the Department Related Standing Committee on Housing and Urban Affairs 2024-25 on the subject Demands for Grants 2025-2026 of the Ministry of Housing and Urban Affairs, Hindi and English versions listed against my name in today's list of business, sir. Thank you. Item number 13 Satish Kumar Gautam. महोदय, मैं आज साइबर अपराध जलिस्ट सुरक्षा रोकथाम विषय के संबंध में विभाग संबंधी गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 254वें प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी में एक प्रति सभापटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 14 डॉक्टर डी पुरंदेश्वरी। श्री कामाख्या प्रसाद। Sir, I raise to lay the following reports in English and Hindi of the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports as listed against my name at serial number 14 in today's order paper. 369 report on review of functioning and performance of Sports Authority of India and Fellow India pertaining to the appointment of Sports Ministry, Youth and of Youth Affairs and Sports, and 370 report on implementation of Article 15(5) of Indian Constitution regarding special provision for reservation of SC, STs and OBCs in educational institutions, including private educational institutions pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Education. Thank you, sir. Item number 15 Vishweshwara Hegde Kageri. Speaker, sir, I raise to lay 388th report on overall review of safety in the civil aviation sector in Hindi and English of the department related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture listed against my name at serial number 15 in today's list of business. Thank you. Item number 16 Chandrasekhar Premsani. Sir, in pursuance with para 5 of Appendix 1 of Delegation of Financial Power Rules 2024, I would like to lay statements regarding withdrawal of funds from the Contingency Fund of India for expenditure in respect of SATCOM monitoring facility project and for servicing interest on sovereign guarantee bonds raised by MTNL, respectively pertaining to Department of Telecommunications. Thank you. Item number 17 BL Verma. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 17 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित अनुदान मांगों 2024-25 और 2025-26 पर संसदीय स्थायी समिति की क्रमशः 5वीं और 7वीं रिपोर्ट में मेरी सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ। Item number 18 Ranveer Singh. Sir, with your kind permission, I raise to lay on the table a statement regarding status of implementation of the recommendations, observations contained in the 5th report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing Industries on demand for grants 2024-25 pertaining to the Ministry of Food Processing Industries.
19, Nimmu Ben Bomania. माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 19 पर अपने नाम के आगे सूचीबद्ध विवरण जो संबंधित संसदीय स्थायी समिति के 6वें एवं 8वें प्रतिवेदन में अनुदान मांगों वर्ष 2024-25 और 2025-26 क्रमशः के संबंध में और 38वें एवं 40वें प्रतिवेदन में गैर हाउसिंग विकास नियामक प्राधिकरण का कामकाज और उचित मूल्य की दुकानों का रूपांतर जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के संबंध में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। धन्यवाद महोदय। Item number 23, Shri Ashwini Vaishnav. Honorable Speaker, sir, I rise to move that the promotion and regulation of online gaming bill 2025 be taken into consideration. Shri Manish Tiwari ji. सभापति महोदय, हाउस को ऑर्डर में लाइए, एसआईआर पे बहस कराइए, एसआईआर पे बहस कराइए पहले और उसके श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, श्री एन.के. प्रेमचंद्रन. No, no, sir, the house is not in order. The question is that the leave may be granted to introduce the bill. Those in favor may say yes. Those against may say no. I think the ayes have it. Ayes have it. The permission is granted and the minister may now introduce the bill. Honorable Speaker, sir, I rise to introduce the promotion and regulation of online gaming bill 2025 to be taken into consideration. Honorable member who have been permitted to raise the matters under Rule 377 today may personally hand over the approved text to the matter at the table immediately. श्री किरण रिजिजू जी. सर, जब से ये हमारा मानसून सेशन शुरू हुआ इस तरह का नारा ये लगाते रहते हैं और 3 दिन से कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सम्मानित करने के लिए चर्चा के लिए बिजनेस में लिस्ट तय किया गया है। ये बहुत दुख की बात है। हमारा देश का नायक जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा करके भारत का झंडा को लहरा के आया, उनको सम्मानित करने का भी मौका नहीं दिया है विपक्ष के लोगों ने। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आप लोग बाहर में जा करके आप देखिए कितना खराब लगता है आपका ये हरकतें, दुनिया हंसता है। अब स्कूल के बच्चे भी बोलने लग गए हैं कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऐसा बिहेव करता है क्या? आप सोचिए, शांति दिमाग से सोचिए। सरकार का बिजनेस तो हम पारित करके रहेंगे। देश का हक में, समाज का हक में जो काम हमको करना है, देश के लोगों ने दायित्व दिया है, हम काम करेंगे। लेकिन हंगामा करने से नुकसान होता है तो आप लोगों का ही होता है। ये सदन सबका है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान नए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विपक्ष के साथियों को होता है। आप लोग सोचता है कि हंगामा करने से कुछ फायदा होगा। जो ज्यादा हंगामा करेगा जनता उसको पूरा नकार देगा। आप लोग कोई सहानुभूति प्राप्त करने वाला नहीं है। इसलिए मैं पुनः आग्रह करता हूँ, आप लोग चर्चा में भाग लीजिए, बिल्स के डिस्कशन में भाग लीजिए। कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सम्मानित देने में साथ दीजिए। आपके माध्यम से मैं फिर अनुरोध करना चाहता हूँ सर। लोग देख रहे हैं। Members, I request all you all to go and sit in your respective chairs. House is adjourned to meet again at 2 p.m. today.
मैंने जो आपको होमवर्क कहा था तो उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है? और आपसे बात करते वक्त सर पीछे जो ये जंग तिरंगा लगाया था। ये वही तिरंगा है सर। और आपका मूंग और मेथी का प्रयोग तो क्या है? बहुत अच्छा है सर। मेरे टीम में जो मेरे साथ थे साइन करवा के लिख के लेके गए कि जब भी आपका घर चाहेगा आप हमें इन्वाइट करेंगे लॉन्च के लिए, जल्दी से जल्दी हमें आपके व्हीकल में बैठ के जाना। आप लोग जब इतनी बड़ी यात्रा करके वापस पहुंचते हैं काफी कुछ चेंज फील होता होगा। जब मैं समझना चाहता हूँ वो किस प्रकार से अनुभव करते हैं आप लोग? सर जब ऊपर भी जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो अलग है, ग्रेविटी नहीं है। आप जाते हैं उसमें तो सिटिंग अरेंजमेंट वैसा ही रहता है जो, और पूरे 23-24 घंटे उसी में निकालना पड़ता है। हाँ सर, लेकिन एक बार जब आप अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं तो आप सीट खोल के अपना हार्नेस खोल के आप उसी कैप्सूल में आप मूव अराउंड आप जा सकते हैं, इधर उधर चीजें कर सकते हैं। कितनी जगह है उसमें? बहुत तो नहीं है सर, लेकिन थोड़ी बहुत है। मतलब आपका फाइटर जेट का कॉकपिट है उससे तो ज्यादा अच्छा है। उससे ज्यादा अच्छा है। बट पहुंचने के बाद सर काफी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे पूरा आपका हार्ट स्लो हो जाता है, तो वो कुछ बदलाव होते हैं और वो फिर लेकिन 4-5 दिन में बॉडी आपकी यूज टू हो जाती है, वहाँ आप नॉर्मल हो जाते हैं। और फिर जब वापस आते हैं तो फिर वही दोबारा से वही सारे चेंजेस आप मतलब चल नहीं सकते वापस आते हैं, तो चाहे आप कितने भी स्वस्थ हो। मुझे बुरा नहीं लग रहा था, मैं ठीक था, लेकिन फिर भी जब पहला कदम रखा तो मैं मतलब गिर रहा था तो लोगों ने पकड़ रखा था मुझे। फिर दूसरा तीसरा, हालांकि मालूम है कि चलना है, लेकिन वो ब्रेन जो है वो उसको टाइम लगता है सर वापस समझने में कि अच्छा अब ये नया एनवायरमेंट है, नया वातावरण है। यानी सिर्फ बॉडी का ट्रेनिंग नहीं है, माइंड का ट्रेनिंग ज्यादा है। माइंड का ट्रेनिंग है सर, बॉडी में ताकत है, मांसपेशियों में ताकत है, लेकिन वो ब्रेन की रीवायरिंग होनी है, उसको दोबारा से ये समझना है कि ये नया एनवायरमेंट है। अब इसमें आपको चलने के लिए इतनी ताकत लगेगी या इतना एफर्ट लगेगा, वो वापस से समझते हैं सर। सबसे ज्यादा समय से वहाँ कौन था, कितने समय का? इस समय सबसे ज्यादा समय लोग एक टाइम पे करीब 8 महीने तक लोग रह रहे हैं सर। इसी मिशन से शुरू हुआ है कि 8 महीने तक रहेंगे। अभी वहाँ जो लोग मिले आपको, उनमें से कुछ लोग हैं जो कि दिसंबर में वापस आए। और आपका मूंग और मेथी का प्रयोग का क्या है? बहुत अच्छा है सर। मैं इस बात से बहुत सरप्राइज था कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, इन चीजों के बारे में। फूड बहुत बड़ा चैलेंज है सर एक स्पेस स्टेशन पे। जगह कम है, कार्गो महंगा है, आप कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा कैलोरी और न्यूट्रिशन आपको पैक करने की हमेशा कोशिश रहती है, और हर तरह से प्रयोग चल रहे हैं सर। और इनको उगाना बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा रिसोर्स नहीं चाहिए स्पेस स्टेशन में। छोटा सा एक आप डिश में थोड़ा सा पानी डाल के उनको छोड़ दीजिए और वो बहुत अच्छे से 8 दिन बाद वो स्प्राउट होना शुरू हो गया। तो स्टेशन में ही मुझे देखने को मिले। तो हमारी जो ये टिपिकल जो हमारे कंट्री के ये जो सीक्रेट्स हैं, मैं बोलूंगा सर, जैसे ही हमें ये मौका मिला कि हम माइक्रोग्रेविटी रिसर्च में पहुंच पाए, ये वहां पहुंच गए। और क्या पता कि ये हमारी फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स के लिए तो एक तरह से है ही सर स्टेशन में, लेकिन अगर वहां सॉल्व होती है तो ये पृथ्वी पे भी लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकती है। पहला एक बार कोई भारतीय आया तो भारतीय को देख करके उनके मन में क्या रहता है, क्या पूछते हैं, क्या बात करते हैं कि बाकी जो दुनिया के देश के लोग होते हैं? मेरा पर्सनल अनुभव जो रहा है सर पिछले 1 साल में, मैं तो जहां भी गया, जिससे भी मिला, सभी लोग बहुत खुश हुए मुझसे मिलके, बहुत एक्साइटेड थे बात करने में, आके मुझसे पूछने में कि मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सबको इसके बारे में मालूम था कि भारत स्पेस के क्षेत्र में क्या कर रहा है, सबको इस बारे में जानकारी थी। और सब मुझसे ज्यादा तो कई लोग थे जो गगनयान के बारे में इतना एक्साइटेड थे, जो आके मुझसे पूछ रहे थे कि आपका मिशन कब जा रहा है। एंड मेरे ही क्रूमेट जो मेरे साथ थे मुझसे साइन करवा के लिख के लेके गए हैं कि जब भी आपका गगनयान जाएगा आप हमें इनवाइट करेंगे और लॉन्च के लिए, और उसके बाद जल्दी से जल्दी हमें आपके व्हीकल में बैठ के जाना है। तो मुझे लगता है सर कि बहुत ज्यादा उत्साह है। ये सारी आपको टेक जीनियस के रूप में बुलाती थी, क्या कारण था? नहीं सर, वो लोग मुझे लगता है बहुत काइंड है और जो इस तरह से बोलते हैं, बट मेरी जो ट्रेनिंग रही है सर, जो एयरफोर्स में ट्रेनिंग रही है और उसके बाद हम लोग ने टेस्ट पायलट की ट्रेनिंग की सर,
तो मैं एयरफोर्स में जब गया था तो मुझे लगा था कि पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बट मुझे उसके बाद बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे पता नहीं था। और टेस्ट पायलट करने के बाद तो एक ये काइंड ऑफ एक इंजीनियरिंग का एक डिसिप्लिन बन जाता है। इसरो में ट्रेनिंग की, हमारे साइंटिस्ट ने हमको पढ़ाया 2-3-4 साल, तो मुझे लगता है कि हम लोग काफी अच्छे से तैयार थे सर इस मिशन के लिए जब पहुंचे। मैंने जो आपको होमवर्क कहा था तो उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है? बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है सर, और लोग काफी हंसे थे मेरे साथ। उस मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे चिढ़ाया भी था कि आपके प्रधानमंत्री ने आपको होमवर्क दिया तो है, और बहुत जरूरी है सर। हमें इस बात का आभास करना गया ही इसलिए था। मिशन तो एक सक्सेसफुल हुआ है सर, हम लोग वापस आ गए हैं, लेकिन ये मिशन अंत नहीं है, मिशन तो शुरुआत है। तो अरे तो मैंने उसी दिन भी कहा था, आपने उस दिन बोला था कि हमारा पहला कदम है, पहला कदम है। तो इस पहले कदम का मेन जो उद्देश्य था वो यही था कि हम कितना कुछ इससे सीख के हम वापस ला सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा काम होगा हमारे सामने, एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉट का पूल होना चाहिए हमारे पास। हमारे सामने 40-50 लोग रेडी इस प्रकार का। अब तक तो शायद बहुत कम बच्चों के मन में होता होगा, हाँ यार ये कुछ अच्छा है, लेकिन अब आपके आने के बाद शायद वो विश्वास भी बहुत बढ़ेगा, आकर्षण भी बढ़ेगा। जब मैं छोटा था, राकेश शर्मा सर पहली बार गए थे 1984 में, और एस्ट्रोनॉट बनने का सपना कभी मेरे मन में नहीं आया, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं था। बट मैं जब इस बार गया सर स्टेशन में, तो 3 बार मैंने बच्चों से बात की। एक बार लाइव इवेंट था सर, और 2 बार वीडियो के थ्रू उनसे बात की। और तीनों इवेंट में सर एक बच्चा था हर इवेंट में जिसने पूछा कि सर मैं कैसे एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में हमारे देश के लिए बहुत बड़ी सफलता है कि आज के भारत में वो उसको सपने देखने की जरूरत नहीं है, उसको मालूम है कि ये पॉसिबल है, हमारे पास ऑप्शन है और हम बन सकते हैं। और आपने जैसा कहा सर कि ये जिम्मेदारी है मेरी, मुझे लगता है मुझे बहुत मौका मिला कि मैं अपने देश का रिप्रेजेंट कर पाया हूँ, और अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि अब मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ तक पहुँचाऊँ। अब स्पेस स्टेशन और गगनयान जो हमारे बड़े मिशन है, उसमें आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, स्पेशली सर क्योंकि इस तरह का कमिटमेंट हमारी गवर्नमेंट आपके द्वारा जो है स्पेस प्रोग्राम को सस्टेन बजट एवरी ईयर इन स्पाइट ऑफ फेलियर्स, जैसे कि चंद्रयान 2 सर सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके बाद भी हमने कहा कि नहीं हम आगे बढ़ेंगे, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ। ऐसे ही फेलियर होने के बाद भी अगर इतना सपोर्ट मिल रहा है और ये पूरी दुनिया देख रही है, तो कहीं ना कहीं सर हमारी इस समय क्षमता भी है और इस समय पोजीशन भी है, तो हम यहाँ पे एक लीडरशिप रोल एक्वायर कर सकते हैं सर। और बहुत बड़ा एक टूल होगा अगर एक ऐसा स्पेस स्टेशन जो लेड बाय भारत, बट बाकी लोग आके उसका हिस्सा बने। मैंने सुनी सर आपने जो आत्मनिर्भरता इन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग वाली आपने बात की थी, तो ये सारी चीजें एक ही तरह से जुड़ी हुई है। जो विजन आपने जो अभी दिया है हमें, ये गगनयान का और बैस का और फिर मून लैंडिंग का, बहुत बड़ा ड्रीम है। हम अगर आत्मनिर्भर बन के करेंगे तो अच्छा करेंगे। बिल्कुल सर। मैंने काफी सारी चीजें सर स्पेस के फोटोग्राफ वगैरह कोशिश की भारत की लेने की। ये भारत यहाँ से शुरू से ये ट्रायंगल, ये बैंगलोर है सर, ये हैदराबाद क्रॉस हो रहा है, और ये जो फ्लैश आप देख रहे हैं सर, ये सारी बिजली चमक रही है सर, बिजली जो पहाड़ों में हो रहा है सर, और ये क्रॉस होती है जो डार्क एरिया आता है सर, ये हिमालय आ जाता है, और ये ऊपर की तरफ जो जा रहे हैं सर, ये तारे हैं सारे, और ये क्रॉस करते ही ये पीछे से सूरज आ रहा है सर। Namaskar, hello and welcome to Sunset TV. I am Namrata Singh and you are watching Sarokar, where we bring you conversations that matter to you and society as a whole. Today we focus on an issue that affects each and every one of us, road safety. India has the second largest road network in the world, spanning across 66 lakh kilometers. But along with this vast network comes a grim reality. We also rank among the highest in road accidents and fatalities globally.
In 2023 alone, over 1.7 lakh people lost their lives in road crashes. That's almost 500 deaths every single day. So despite better policies, improved vehicle technology and awareness campaigns, road crashes remain one of India's biggest public safety challenges. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari recently pointed out that India loses 3% of its GDP every year due to road accidents. And what's worse, that most of the victims are young people aged between 18 and 45 years. The reasons are many: rash driving, poor enforcement, badly designed roads, and above all, a lack of respect for traffic laws. In this edition of Sarokar, we explored the current state of road safety in India. Are we, as a citizen, doing enough to make our roads safer? And what steps the government is taking to improve the situation? So that is what I'm going to analyze on the show today with an eminent panel of guests in the studio. I'm delighted to welcome Mr. Subhash Chand. He's Chief Scientist and former Head Traffic Engineering and Safety Division, CRRI. I'm also delighted to welcome Mr. Anurag Kulshresht. He's President, TRAX, Road Safety NGO. Thank you both for being here and welcome to Sunset TV. And it's also a pleasure to welcome our wonderful studio audience. Let me begin the discussion with you, Subhashji. You know, over 1.5 lakh people succumb to road accidents in our country every year. And nearly 500 lives are lost each day and one life every 3 minutes. So how do you respond to this grim reality and what are we doing to bring down these numbers? Yeah, as you know, the problem is very serious, but it has multi-dimensional. It is not a simple problem. It has got its many phases. It starts from road infrastructure. It starts from which include roads and road vehicle. Then there is engineering. Then there is how to manage road safety and traffic. Then there is other part which are involved, which know the education, enforcement, and post-crash treatment. And above that is the society. So everything, if we work together, then only this problem can be taken care of. So everybody has to step up. Yes. Mr. Anurag, you know, overspeeding, rash driving, and you know, they remains the main cause of the accidents. And above all, then you are, you know, people talking over the phone, not wearing helmets, not wearing seat belts, also make it worse. So how can we change this sort of mindset among people? Before that, I want to say one thing. Over-speeding is not the, I think, right term to define, but although our government used to announce that over-speeding is the main cause, but it has never been investigated scientifically in India. Maybe in 0.01% case it has been investigated, otherwise not. So we are releasing the facts or the figures on the basis of that no investigation. Okay. Whatever is not, reason is not available in front of the police persons. So this is a one-way system which we are just announcing in front of the public. Over-speeding is the cause. Second thing, it is promoted at all level. Over-speeding, what is over-speeding? We are making the road of for 100, 120 and more than have a 150. Is it over-speeding? Posted speed and the speed of this road at the level of constructing it, it's different. Suppose in city you are doing the driving at the level of 50, then means road is meant for 60 speed to manage this 10 kilometers per hour gap. So accident, if not investigated at any level and then announcing it at every angle and investigated by non-technical persons. So this is the entire ecosystem which is giving us the wrong figures and everything. Then the manipulation of the figures is there. Like we are announcing this age group 18 to 35 is dying more on our roads, and yes, it is. Figures 1.5 or 1.7 lakhs. It's not the real figure. This is the real figure as per the FIRs. And this is up to the time of accidents and maximum 1 day later. But after that, if somebody is dying in the hospital after 2 days, 3 days, 10 days, 1 month, no record of them. So WHO used to say a figure may be double of that, 1.7 into 2. So this is a gravity.
And apart from this, we are not defining the definition of accident or the crash. If I'll ask the audience how many vehicles in our Delhi is undented or untouched, which is 6 months older, so I think the answer will be 100%, maybe 95% or 98%. This is the gravity of the issue. Within 6 months, every vehicle is dented or hit with someone. That so means also comes into crashes, right? Yes. If a vehicle is hit by any object or the vehicle to vehicle, this is an accident or the crash, in other words. Right. So, if the vehicle population in Delhi, suppose it's almost 1.5 CR, then how many accidents are happening in Delhi every year? 1.5 CR into 2. That is a minimum 3 crore accidents are happening in Delhi itself, and national figure is coming just 4.5 lakhs accident. So 95% cases, police is doing the investigation and it's outside court or I think outside these are reported ones, right? These are the reported one only. Yeah. In foreign countries, such type of accidents are reported. Every accident is reported. And then they are doing the investigation, making the policies according to them and improving the level of the enforcement. Somewhere it is missing in our country. So this is the entire scenario of our road safety in India. Unfocused, unaddressed, uninvestigated. In Delhi, almost 50% two-wheelers riders are dying and almost 50% pedestrians are dying. But nationally, we are focusing on what? Vehicle improvement must be there. Which vehicle? Cars. Cars, driver is not pedestrian, car driver is not a biker. These two categories are dying more, but we are focusing on the cars and cars with 4 bags, 6 bags, everything we are giving over there. Okay. So, Subhashji, so basically what Mr. Anurag was saying, that lack of awareness is one of the important reasons, and data also shows that most of the road victims are pedestrians, cyclists and motorcyclists. So, what concrete steps are we taking to bring down these numbers? Actually, the focus should be, as Anurag told rightly, that focus should be on the vulnerable road users. Okay. So vulnerable users consist of pedestrians, cyclists and two-wheelers. Okay. So as you know, in majority of the cities, there is no proper footpath. If footpath is there, the condition of the footpath is not proper, their surface is not proper, their continuity is not proper, and majority of the footpaths are encroached upon by the vendors, by the trees, by the other road infrastructure like thing. So one has to focus on that. At least you should have continuous availability of the pedestrian footpaths along the road and crossing facility for them, so that they themselves can save themselves. Okay. So next thing is the cyclist. So cyclists should be given a due share of their requirement based on the population, and they are using on a particular stretch of a city. They are not available everywhere. So there should be need-based planning for handling the movement of cyclists with proper way. And we are also doing at CRI, we are making road standards. We are making guidelines for segregation of two-wheelers also. Because yes, they are mixed. Even my next question was on that safe road infrastructure is the key to preventing accidents. Yes. So, but problems like poor design roads, then potholes, then lack of maintenance remains the key challenge today as well. So, what are we doing to improve the road infrastructure? You see, as far as the road infrastructure is there, we are far ahead, and we are making our road of the world standard. But there are some maintenance issues, definitely. It has to be looked into. At ground, the road should be proper in that shape and do not require much of investment to keep them maintained. So we are poor in maintaining the road. Okay. But as far as the design is concerned, we are up to the standards. So, but what is the reason for poor maintenance of the roads? The reason may be neglect, or maybe lack of resources, lack of funds available within, and our focus for building new roads and neglecting the already made road. So that may be another reason.
But definitely, but porthole, to repair the porthole, even CRI has come up with the technology. You can use modern techniques to fill up all these potholes. Okay. And with the mechanized system, you can rectify them within no time. So that is there. So we are there. There should be a will to actually do it. So the technology once transferred to the site and to the agencies, definitely we will improve further for them. Okay. Yeah. And Rajya, you know, the government has repeatedly stressed on the need for behavioral change among the citizens. So why is traffic sense so poor in India? I mean, you know, from loud honking to breaking rules, ignoring lanes, ignoring traffic lights. So what steps are we taking to bring the real change? Actually, frankly, road user behavior cannot be changed directly. It can be changed only by improving the infrastructure and then the management, that is the enforcement. I'm just giving you one report about this, if you're having the time. Sure, sure. Recently, one channel has given the details about the aggressiveness in India. So means we are having the aggressiveness up to almost as an average 70% people are abusing. And then in Delhi, pedestrians are dying more and two-wheelers are dying more. It's 5% increment in the figures in terms of fatality. The number of accidents are reduced, okay, but deaths are increased. So they are happy with that figure. Second thing, helmet. I already discussed here that 99% ladies are wearing substandard or fake helmets, but there's no check on this. Although they are manufactured in Delhi NCR, 99% manufacturing is in Delhi and NCR, but there's no check. 75%, because there's a ISI mark on the helmet. Out of that, 75% helmets are fake. They are having the fake stamp of ISI and it is being sold in our market. Two-wheelers people are dying more. That's why I'm giving this figure. Then about the pedestrians. 80% of Delhi's roads are not having the footpath. And whatever, 20% are having the footpath, they are not walkable even in 90%. Not walkable means enclosed, broken, full of vegetation, trees are planted over there, and one of the rules of green tribunal, because every tree must be having a 6 feet muddy space out of the tree. Okay. So all the footpaths are destroyed, all the means 90%. So almost just we are having the footpaths 5%. Then pedestrians, zebra crossings in Delhi. You must have seen this police notice on a number of poles. Stop before stop line. Means you have to stop before stop lines. Right. In 99% case in Delhi, on our zebra crossing, there's no stop line. Only zebra crossing is there. Second thing, lane movement. Delhi police is just focusing on the traffic regulation. They are meant for this, not for traffic management. Because lane discipline, school audience is there. Lane discipline is the key enforcement anywhere, inside the schools also, which we are teaching already to the students. Because through the lane management, we can stop rash driving, unnecessary overtaking, whatever speeding, over speeding, whatever the terms are there in case of negligent driving and all, we can stop this, but no focus. Second thing, we are having, I think you must have seen the 3 traffic signals or 4 traffic signals on the crossings. Right. In Delhi, nobody knows why these traffic signals are there, 3 signals, 4 signals. Nobody knows about it. That was a lane designated traffic signals. Means left signal for left movement, straight signal for straight movement, and right signal for the right turn. But not even a 0.1% of Delhiites knows about it. That is awareness. With the technology, we are not aware of that. Road designs, like we have discussed, 99% of the crossings or the roundabouts in Delhi, they are faulty. They are pro-accident designs are there. They are not telling us what we have to do. And even the lane marking also. In 90% case, lane markings is wrong. We don't have any lane balancing. Like if road is there, then some flyover is there. Then there's no balancing of the lane marking. Means
3 and 3.5 meter lane marking on the road, then on the flyover it is 4 meter, and there's no matching. So we are confused. On every flyover, when there is a nose, means a diversion point, there's no specification, there's nothing, lane marking is there. Everybody is confused. But in light of this, do you think that formal driving training or, traffic sense education is essential to make people aware of these rules? No, actually, first we have to create proper infrastructure. Then it can be enforced. Then people will be aware of that. As I have already told you, discussed here, 99% ladies are wearing substandard helmet. Right. If government is not stopping this, why the people will having any demand for that? They are happy with 100 rupees helmet. They are happy with that size of the helmet. And interestingly, there is a penalty if these people are wearing the substandard or topi helmet. Basically, proper implementation, you're saying that proper enforcement is necessary, proper implementation of the rules is necessary. And because today we have advanced technologies like speed cameras, then traffic surveillance systems, stricter laws have been introduced though. But despite these tools, do you think lack of strict enforcement, Subhashji, lack of strict enforcement of traffic laws remain a major challenge in the country? Yeah, of course, that is there, because there is always need for enforcement. Any infrastructure can work only when it is properly enforced and it behaves the way it has been designed. So what is happening actually, even police people, there is always a shortage of police people. Everywhere police cannot be present. So there are technology. We can use the technology like ATMS, Advanced Traffic Management Systems. We can use the AI for chalaning. We can use these for speed management also. So everywhere, if people are aware that I am always watched, whenever I am violating anything or I am doing a wrong thing, I am being watched and I may be challaned, then people will start behaving that way also. Ultimately, he has to respond for his own safety. And there is requirement of having a capacity building at every level. Even traffic police need the capacity building. As Anurag rightly told, they don't know how to design a system, how to manage the traffic at an intersection, how to manage the pedestrian at a footpath at the corner of the intersection. You know, there are everywhere near the intersection, all the bus stops are there. All the buses are stopping there. All the vendors are concentrated over there. All the pedestrians are standing right at the left turns or right turn at the intersections. All the exits when traffic gets green, all the exits are blocked. They have been fantastically designed. Their width is calculated based on the traffic volumes. Right. The signal has been designed based on the traffic volume and the saturation capacity of any signal system. But there are fixed signal, and if the exits are blocked, how the people will be moving in that? And these things forces the people to violate. And it becomes a chaos system. As if nothing is there, a rule of the law is not there. That is why the infrastructure is not behaving the way it should behave. So there is urgent need of employing each and every scientifically designed road infrastructure and its road signs and marking. Road signs and marking are the not ornamental things. They are the true sense they are conveying between the drivers and the user. Why people are behaving different way while traveling in the metro? Because the environment, the kind of infrastructure. Because they are much stricter. They are stricter also. They are always watched upon. And infrastructure also is designed the way the people should behave. That's why but you have to follow the rules. So you have to follow the rule, and your infrastructure is visible on that. So you are always guided. The arrows indicating that you have to take the right turn, then you have to be on the right lane. But if there is wrong arrow, if there is no arrow, then people will not be guided. So they will be moving the way they want to move. Anuragji, you know, road safety in India is just not a health concern, but it's a serious economic issue because, you know, Union Minister Nitin Gadkari pointed out that we lose nearly 3% of our GDP every year due to road accidents. So in light of this, what is the way forward to tackle this crisis more effectively? Actually, the investigation system continued in India is wrong. There are two types of things, short-term measurement and long-term measurements. In short-term, what is the report is there?
do the lane marking is not there, do the lane marking, road sign is not there, put the road sign. If maximum in case of road traffic lights are required, then this is an investigation at short-term measurements. And in long-term measurements, there is a requirement of flyover is required, underpass is required, and this type of interventions. But in between that, as he is saying very well, proper designing of each crossings, and even I am saying that 99% crossings are poorly designed. So at least channelize these crossings properly, and there's no investigation out of that, short term and long term, and here we are zero. So that's why accidents are increasing. Second thing, Gadkari ji is this central minister. Right. He can form the policies, but ultimately states has to behave. States has to accept, but they are not accepting. If you remember, motor vehicle amendment in Motor Vehicle Act was there. Almost every state has refused to accept that amendment or the charges on the people. And the charges on the people is like announced like a tax on the people. It's not the tax. It is to save the life of the people. But our different communities, different political parties, they are announcing it is a tax on them. It's not the tax. So investigation at this level and the city level. Second thing, 66 lakhs road network is there in our country. The country, yeah. Gadkari ji is focusing on 1 lakhs kilometers of road network, 1.5 lakhs kilometer network only. Rest, 64.5 lakhs states are doing. But there's no focus by the states because they don't have any specifications what to do, how to do, because we all are crying for last 10-15 years, road safety, but we don't know what is road safety. Cars should be strong enough. Car drivers must be safe. But 90% case, other road users are dying on our roads. There's no focus on that. Okay. So basically you say that, you're saying that states need to step up in this regard. So now I'd like to open the floor for our audience. Hello sir, hello ma'am. My name is Bhavya Gautam. I'm from Ambedkar University, Delhi. Sir, I want to say that most of us must have seen accident in our life. But if you have seen any terrifying accident, so what did you notice that this is the biggest reason for that particular accident, and how are that current traffic laws are preventing those accidents nowadays? Actually, right. That's what Rajya was telling, that majority of our data is derived from the police records of FIR. And the causes of the accidents are recorded only after the accident has happened and the situation and scenes has been totally turned. So here, according to the law, they make the every time the major fault is overspeeding, rash driving, and that too the fault is of the heavy vehicle. So that the person, those who are lying as a poor person, they can get some compensation because their fault, it is not their fault. Maybe pedestrian is at fault. He might be drunk and he is passing on the road. Or might be cyclist is drunk and he is driving on that. Even then, if he is hit by the car, the reason will be recorded as the car was speeding up. So there is always a lack of data. As your question was saying, definitely there is provision. The accident investigation is taken care of. There are agencies, even CRI also do, and the other agencies also do. That is called accident investigation. So each accident, we cannot take every accident. Serious accident is investigated thoroughly from engineering angle, from other angles, people behavior angle, from motor vehicles fault angle and all that. So exact reason is known. But as data is very limited and major accidents are known, and even people, those who are technically qualified, they can extract what has been wrong with that. Next question. Yeah. Hi everyone, I am Shweta and I am a teacher at Rainbow English Senior Secondary School. I truly agree with sir, first of all, that infrastructure and lot many other things can be held responsible for these road safety issues. But my main concern is I have two sons and both of them, like one is 17-year-old and he is driving an EV vehicle, that EV scooter, which we have only given in the name of eco-friendly. But he is also not wearing a helmet despite us telling him. But I
actually want to know that why are we introducing such vehicles, in which he can give me the answer that ki mama, it's not required. These EV vehicles do not require a helmet or license for that. So why are we having such vehicles? Even though, sir, apart from cars, these e-rickshaws, these are also quite reckless driver. How do we make, we make aware them about these road safety issues? Actually, well said by you, because this is a problem of, like Namrata has already discussed like this. It's an issue of every family. You're not alone. I am also on the same boat, and everybody is on the same boat. Number one, misconception: if a person is driving an e-bike on the road where the high-level vehicles, other vehicles are moving with different speed, and our person without license is safe on that. I don't know. This is a mistake of our policy makers. They are taking it like no license is required for this. Everybody is required the helmet on our roads, even the cyclist also. There was a road safety bill before that government. Congress has come out with the road safety bill, which was kept pending just because of the objections from the other parties. So that Gadkari ji has announced, okay, there will be a motor vehicle amendment only, because all political party was opposing that. In that particular scenario, in that particular bill, there was a provision to make compulsory helmet for the cyclist also. But it was kept pending. Second thing, we are governed on our roads through Motor Vehicle Act, which is saying everything about the vehicles, not other road users, cyclists, pedestrians, no focus in that bill. So we have to have number of policies related to this. Till the moment we are not having the policy, we all will be confused. Second thing, because there is no public demand, public is happy whatever is going on. If pothole is there, they are happy. Few media person, social media people, they are raising the voice. Otherwise, everybody is happy. With the opened mail hole, they are passing regularly, but no objection. So we are the people, or the type of society we have. There's no observation, there's no vigilance. We are not vigilant for that, and reactant, forget it. So first thing for anything, be observant, be vigilant, and be reactant also. So basically, be the change you want to see. Exactly. Next question. I am Karuna from Ambedkar University. I want to ask you, as you told us earlier, that 90% of the accidents are of pedestrians and two-wheelers. So why there is more focus than required on the safety of the car drivers and the cars? I think you must focus on the demand of the people, because we are demandless. So yes, our sector, the government sector, is more focusing on cars and cars and cars. If you have the problem, raise your voice. If you don't have the footpath in front of your college or in front of your school, have you write something to someone to provide us at least footpath in front of our school? We are happy with the management inside the boundary. Every school is doing every type of management which must be on the road by the police. But schools are happy within the boundaries, but they are not doing anything on the road. Students are their property inside the school. Students are the property outside the school also. Because if something is mishappening over there, then ultimately school will be blamed. That student from this school is getting hurt in front of this. Okay. My name is Jia Sharma and I'm from Dr. B.R. Ambedkar University. So my question is, in India today, what are the most common causes of road accidents in India? And how do you ensure that the authorities are addressing them? Major causes of accidents, actually, there are three causes. One is environment, that consists of road infrastructure and the surrounding built-up infrastructure. Second part of that is the vehicle, because vehicle has to be part of that accident, then only accident will happen. So there are accidents due to faulty vehicle, fault in the vehicle or driver's fault,
resulting due to threat. And the third one, the cause is the social. That means people behavior. So in majority of the cases, the people behavior, people are at fault and they don't behave the way they should behave. So the accident action. So we have to take care of all of them. If we just leave one of them, we are not going to be safe. I am Kriti Prajapati. My question is from Shubhash sir. Sir, during the COVID-19 pandemic, in the peak time, we lost millions of people in a year. And today also, we see that in a year, we lose many people, millions of people in the road accidents. And at that time, when we are losing the people in a pandemic, then we took the pandemic as a major concern. But why we are not taking the road accidents and people who are dying on the roads as a major concern? And today also, we see, despite many government awareness campaigns, people still break the traffic rules. And so how should we make the people also aware that traffic rules are not just meant for the exemption from the government fines, but they should follow the rules for their own safety also? Right. You are right. You have given your answer also, because the answer lies in that everybody has to be responsible. Rightly, when it was a pandemic, we took the challenge as a pandemic. So society should force the government. It is not a simple daily accidents happening. It is a kind of pandemic. And even WHO has declared it as a pandemic. So it has to be taken in that spirit, and every corner, every citizen, every government and every NGO has to come up forward with the action plan so that it is visible, and you have to be part of that. Then only it can happen. For that you have to go for capacity building. Capacity building, that there should be some expert knowledge within his own domain, so that he can tackle that situation and he can enhance his knowledge and he can educate the other people. That capacity building is needed from all these aspects. Okay, yeah. So basically people's behavior needs to be changed, as road safety begins with us. And the government can, build better roads and enforce laws. But if we continue to break the rules, nothing will change. Every time someone chooses to drive aggressively or carelessly, they not only put their own life at risk, but also endanger the lives of others on the road. So let's choose to drive responsibly, value every life, and be the change we want to see on our roads. So thank you to our guests and our wonderful audience, and to you, our viewers, for being part of this important conversation. So stay tuned and keep watching Sunset TV. Namaskar viewers, hello and welcome to Sunset TV. I'm Tina Jha, you're watching Perspective. On the show today, we turn our focus to the ongoing visit of Chinese Foreign Minister Mr. Wang Yi to India. A visit being closely watched not just in New Delhi and Beijing, but around the world. On Monday, Mr. Wang Yi met External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, who underlined that India-China relations must rest on the three pillars of mutual respect, mutual sensitivity and mutual interest. He stressed that moving forward from a difficult phase will require a candid and constructive approach from both sides. At the 24th round of special representative level talks on Tuesday, National Security Advisor Ajit Doval also pointed to an upward trend in bilateral engagements, noting that borders have remained quiet, peace and tranquility have prevailed, and interactions between the two countries are becoming more substantial. And for his part, the Chinese Foreign Minister acknowledged that recent setbacks were not in the interests of either nation. He emphasized that the October 2024 meeting between President Xi Jinping and Prime Minister Narendra Modi in Kazan had provided a new direction to bilateral ties and fresh impetus to efforts at resolving the boundary question. So what does this moment mean for the future of India-China relations? Can this visit of Mr. Wang Yi to India truly mark a new phase of cooperation between the two Asian giants? And what should we expect from Prime Minister Modi's upcoming visit to China for the SCO summit? We'll discuss these aspects and much more with an illustrious panel. So let me begin by introducing the guest to you.
With me in the studio is Mr. Ghulam Ali. He's a member of Parliament. He represents the BJP in the Rajya Sabha. Glad to have you with us on the broadcast, Mr. Ali. Next to him is Professor Shrikant Kondrapalli, where he's Professor, Centre for East Asian Studies, School of International Studies, Jawaharlal Nehru University. Professor, glad to have you with us on the broadcast as well. Welcome to Sunset TV. Joining us virtually is Mr. D.P. Srivastav, former Ambassador and Distinguished Fellow, Vivekananda International Foundation. Ambassador, welcome to the program. Let me begin the conversation with the guests in the studio, beginning with you, Mr. Ali. How do you look at the ongoing visit of Mr. Wang Yi in context of the improving India-China relations? देखिए, चाइना हमारा पड़ोसी है और वाजपेयी जी कहा करते थे कि आप पड़ोसी को चेंज नहीं कर सकते। बीच में चाइना और इंडिया के भारत के थोड़े ताल्लुकात में लद्दाख बाउंड्री पे थोड़ी तल्खी आ गई थी और हमारी सेनाओं ने उसको पूरा कवर करा था चीज़ों को। लेकिन इसके साथ साथ चाइना और भारत का बिजनेस में बहुत बड़ा पार्टनरशिप है। जैसा कि आपने कहा फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, ट्रस्ट भी होना चाहिए, इनसेंसिटिविटीज मतलब उनका भी सेंसिटिविटीज का और इनसेंसिटिविटीज को दोनों को बैलेंस रख के और आगे बढ़ना चाहिए हमें। देखिए, जो मौजूदा सरकार है दिल्ली में एनडीए की, जिसकी रहनुमाई नरेंद्र मोदी जी करते हैं, बेसिक मकसद है एनडीए का कि भारत पहले। तो भारत की नेशनल इंटरेस्ट के साथ हम कोई भी समझौता नहीं करते। हमारा सिक्योरिटी हो, जहां सॉवरेनिटी हो, हम उस पे कतन किसी के साथ भी अपना समझौता नहीं करते। हाँ, इसके साथ साथ जो अभी रिसेंटली हमारे रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, इसमें हम कंस्ट्रक्टिव जो डायलॉग है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स हैं, मतलब डिफेंस में है, टेक्नोलॉजी में है, डिफरेंट क्षेत्र में है, इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। Sure. We'll continue to talk about how this momentum and the current phase in ties can take this relationship forward. Professor, recent statements both from the National Security Advisor, Mr. Ajit Doval, and our External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, indicate there's an upward trend in improved relations, especially in the last 9 months, especially after the Kazan talks between Prime Minister Modi and President Xi Jinping. The NSA spoke about quiet borders, substantive talks. How do you see or how significant are these factors in the larger arc of the India-China bilateral relations, which we saw went on a downward trend, especially since June 2020 when the Galwan clash happened? I think Foreign Minister Wang Yi's visit is very significant because of the last 9 months of the trend that has that included Foreign Secretary Vikram Misri's visit to Beijing and Mr. Ajit Doval, the National Security Advisor, in December for the Special Representative meeting. Later it was by once again by Mr. Vikram Misri as well as Raksha Mantri Rajnath Singh visit in June for the SCO Defense Ministerial meeting. There was a meeting between Admiral Tung Chun, the Chinese Defense Minister, and the Indian Defense Minister in June. That was useful because of the military, mobilization on the borders and the disengagement process that was, began during October 23rd last year, meeting between the two sides. We also had Dr. Jaishankar's visit last month and the current visit by Foreign Minister Wang Yi. So I think these visits are important to understand each other,
and initiate a kind of communication between the two sides. Number one. Number two, we used to have about 30 dialogue processes between Foreign Ministry, Defense Ministry, HRD Ministry, Education Ministry, between finance ministries, the two finance ministries, the Niti Aayog and NDRC in China. We have a youth dialogue, we have think tank to think tank, media to media, so many, about 30 dialogues we used to have. All of these have been shut down. So Mr. Wang Yi's visit rekindles that we will have probably in future, near future, these dialogues to be recommenced. Right. So I think that is very important because 1.4 billion each people cannot shut down the communication process. We have laid down a few red lines, as Dr. Jaishankar mentioned on June 17, 2020, 2 days after Galwan. Unless until peace and tranquility prevails on the border, we will not have bilateral relations. A very clear message from the Indian Foreign Minister. And we stuck to that for the past 4.5 years. And I think the Chinese now realize that it is actually very costly for shutting down the bilateral relations because we have had the promises in Wuhan and in Mahabalipuram in 2018 and 2019 for the resolution or keeping the border stability. President Xi promised that, but we have had the problems on the border, as you mentioned, June 15, 2020. So the visit is important because we now rekindle those dialogue processes between the two sides. Certainly. Peace and tranquility is something that India set as a prerequisite for the bilateral engagement. Ambassador, fortunately, what the National Security Advisor, following his meeting with Mr. Wang Yi, has said, and it comes as good news, is that the borders are now quiet. Peace and tranquility have prevailed at least over the last 9 months. What does this indicate, especially in context of the confidence building measures between India and China? You know, the border relations have to be seen in the long-term perspective. There has definitely been improvement since Galwan, and it is hoped that the visit of Chinese Foreign Minister to India, and this will be followed by our Prime Minister for SCO Summit, will further reinforce this trend. But we have to wait and watch how this impacts on a long-term basis. And we also have to keep in mind the contemporary international situation, which is in a state of flux, both for China and for India. China is having internal problems, economy has slowed down, and it has a difficult relationship with US, and we are going through a similar phase. So I think this will be, in this probably is one of the immediate reason which has brought about a convergence in their position. And we do hope that we can build on it on a lasting basis. Okay, since we're talking about building hope, Professor, I'll come back to you and try and understand. You said 1.4 billion people cannot shut down on China. We know as two large economies in Asia, two large economies in the world, we are interconnected. There is a positive momentum that has been generated through consistent efforts over the last few months. How can this new phase of positive engagement now expand to further cooperation in areas of trade, of connectivity and regional stability also? We do not know. We are just building the blocks right now after the disastrous June 2020 incident where 20 Indian soldiers were killed and China said 4 of their soldiers were killed. So we do not know because we are still in the discussion phase at the moment, and we have actually a lot of differences on all of these issues. So for instance, trade, for example, cumulatively in the last 20 years, China had $1.4 trillion of surplus over India in the bilateral trade.
In other words, when President Trump was imposing a lot of tariffs because there is unfavorable balance of trade, we could have also resorted to some kind of pressure on the trade issues, but we did not. We stuck to the WTO market economy status, and we allowed the Chinese goods to enter into the Indian market. China did not show any one of those favors to India. For example, none of our software companies have functioned in China. They were not able to sell their products. And none of our pharmaceutical companies could be allowed into the China market, even though we produce a lot of generic drugs. And there are 180 million liver patients in China. When they come to India, they pick up individually much of these medicines. So there is a problem in terms of the market economy status for China, yet we allowed them to function in the Indian market. So these need to be resolved, market status, because Foreign Minister Wang Yi himself mentioned about no trade protectionism. So they need to open up based on this. Secondly, while peace and tranquility overall prevails on the border, we have not had de-escalation and de-induction so far. As we are talking now, there is at least 70,000 Chinese troops on the border in the Ladakh sector alone. The Aksai Chin Ladakh sector alone. So that poses concern because we do not know what is for tomorrow, what is the situation for tomorrow. So fingers crossed on those issues. Let's hope that the positive momentum generates some fruitful results in context of improved India-China relations. But as a member of Parliament, which are the areas that you would see both neighbours perhaps building their relationship or sort of resetting their ties back into trade, technology, regional security? Which are the areas where India should focus more particularly on with China? देखिए बहुत खूबसूरत कहा आपने कि हमारा प्री कंडीशंस हैं, जैसे आपने कहा कि डोवाल साहब ने कि स्टेबिलिटी और ट्रैंक्विलिटी के लिए हमें प्री कंडीशंस हैं, क्योंकि चाइना के पास नौजवान जो हैं यूथ, इंडिया के पास यूथ है, ह्यूमन रिसोर्स है। चाइना के पास इतना नौजवान जो है वो कम पड़ गया है। उससे क्या है कि अगर वो एंगेज रखेगा हमारे साथ बॉर्डर पे अपना आर्मी को, जहाँ हम वहाँ एंगेज रहेंगे, तो हम जो अदर सेक्टर्स हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जहाँ अदर चीज़ें हैं, उस पे हम डिफेंस पे हैं, जहाँ बाकी उस पे हम ब्रीथ नहीं ले पाएंगे। तो चाइना भी समझता है और इंडिया और चाइना के लिए ये ज़रूरी है कि वो, और बड़ी मेजर पॉपुलेशन वाले देश हैं, कि वो इस तरफ बढ़ें, और ये अच्छा स्टेप है। इसके साथ साथ हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स भी हम शेयर करते हैं, जैसे आपका एससीओ है, जहाँ ब्रिक्स है, जहाँ ये हमारे एजेस हैं अदर बड़ी इकोनॉमीज के सामने। लेकिन जिस तरह हम फोमा है, जहाँ आपने पूछा कि किन सेक्टर्स में हम बढ़ सकते हैं, सेमीकंडक्टर्स है, जहाँ रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें हम जो इस वक्त की ज़रूरत है, और क्लीन एनर्जी है, इस तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं, और जिसमें इंडिया काफ़ी आगे बढ़ा है। जैसे हम एक पावर निकल के आए हैं कि अमेरिका ने जैसे हम पे टैरिफ सिंगल फिर डबल प्रेशर डालने की कोशिश करी। हमारी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ रही हैं। जितना अमेरिका हम पे प्रेशर डालेगा इतना ही हमारा अपॉर्चुनिटी बढ़ता है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप में भी वो है, यूरोप पूरा हमें 23 देश हमारी तरफ देखते हैं, वो हमसे बिजनेस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका उनका ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ रहा है, तो अमेरिका और उनके डिफरेंसेस हैं कहीं ना कहीं वो, तो हमें इस कम्प्लेक्स रिलेशन से चाइना के साथ हमारे अच्छे रिलेशन से चाइना को भी लाभ है, हमें भी लाभ है, और हम एक इन्फ्लुएंस, हमारा जो रीजनल इन्फ्लुएंस है और इंटरनेशनल जो हमारा एक अच्छी ताकत उभर के आएंगे, इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। Based on what you've said, I'll take the next question to Ambassador. Ambassador, it's said, and especially in context of the ever-changing geopolitics, you have no permanent enemies, you have no permanent friends.
I seek your apology well in advance, because in no way I want to give the credit of our diplomats who worked so hard on bringing us to this stage of a thaw with China. But the buzz and the talk about the US President Donald Trump having played a significant role in bringing India and China together is making the headline. It's being said that the tariff war unleashed by President Donald Trump has brought India and China together. From a diplomatic lens, sir, did you see both countries, both neighbors, both Asian giants looking at it as an opportunity to perhaps get back and extend cooperation in numerous ways which can ultimately benefit people of both sides? Let me begin by saying that we should not let China-India relations be a subset of our relations with third countries. And it is in China's interest to realize that by keeping border issue alive and building Pakistan as a counterpoise to India, they have neither succeeded in stubbing India's growth nor managed to get more stability. If the present situation, contemporary situation, where both countries face challenges, if that brings about a realization that there, on the part of Chinese, that there should be a serious rethink, that will be a welcome opportunity. Otherwise, this will be one more comma in a long process. Immediately, I think that what they can do is to open up their doors to the Indian exports, which we are trying to diversify in the aftermath of the tariff hike which America has announced. And it is also in China's interest to look for to diversify away from the American market. So there are some opportunities, and let's at least start with that. The larger background which I have mentioned will probably take a little more time. Certainly. 4.5 years of standstill. Now we've begun to talk. There is a positive momentum that's been generated due to constant efforts. But let's hope, as you said, it's not a comma and it's not a temporary thaw. It's just one of the steps towards a more long-lasting relationship. But in that context, Professor, let me quote the Chinese foreign minister. He did acknowledge, following his meeting with the National Security Advisor, that the setbacks of the last 4.5 years have not been in the interest of people of either of the nations. How important or how significant are these acknowledgements in shaping future negotiations, and in this context with China, with a country that we need as much as they need us? We are not just neighbors, but we are two leading economies and interdependent on each other. We have to wait and watch what the reassessment in China is. But in the recent times, we have seen over 9 million videos were released by Quancha, a social networking site in China, criticizing India in the India-Pakistan conflict just about 2 months ago, May 7th to 10th. Secondly, there are also reports, including day before yesterday, there was a report by, it's a pen name which was mentioned in the Haisu. There is a pen name of an author, generally a high-level party cadre, writes with that kind of pen name. We don't know the veracity, but mentioning about the burdens of the Trump administration's tariffs on India, and India is more malleable in the sense of being, becoming pro-China in this context of tariff increase. So we have different views within China on this. So we have to wait and watch whether Mr. Wang Yi's statement would result in any positives for the bilateral relations. If this is regrettable, last 4.5 years,
we need to see some progress on various issues that India has been asking for. Trade deficits to be reduced. This is a demand in 2010, not now. 15 years, for the past 15 years, we have been asking for trade deficits to be reduced. We are not asking for the moon. Those issues we used to discuss before Nuclear Supplies Group membership, United Nations Security Council membership endorsement. China is the only country which doesn't endorse the... we are not discussing these issues. We are discussing mundane issues. Even mundane issues are not being resolved. So I think we need to wait for a while to see what's the progress on the ground. And for example, on the border, we have no de-escalation and de-induction. Powerful offensive equipment is mobilized on the border. They have not been removed yet. So we need to see our ISR capabilities have to detect if there is any, and then suggest in these dialogues that we need to actually move. We need to walk the talk. Absolutely. Following Kazan, there was some movement. Let's hope that, at the high-level dialogues that take place in future, there will be a push towards achieving all of these objectives. But now all eyes are on Prime Minister Modi's visit to China to attend the SCO summit. What realistic outcomes should we have? Or can India leverage the positive energy that's being generated in the improved relationships at platforms like the SCO? Even if it's a multilateral forum, can India make its point about lots of things, not just improving bilateral relations with China, but perhaps making China agree to a lot of things that India wants, and particularly in context of terrorism, cross-border terrorism emanating from Pakistan? I think the SCO meeting will be significant because generally we have 4 items on the SCO agenda. Energy security, which is a burning topic given the tariffs that have been imposed on India. Secondly, counter-terrorism, which has been raised. Raksha Mantri raised this issue 2 months ago. The bilateral economic and cultural, economic issues between the SCO states. Finally, multipolarity, which we are wedded to that idea of a just world order, and so multipolarity will also be raised. So the Prime Minister's visit, I think, to Tianjin would be significant to renew those strategic communication between the two leaders. But we have not had any news so far about a third informal summit after the Wuhan and Mahabalipuram meetings. So that indicates that there is still, this is a work in progress. Ambassador, looking ahead, and especially in context of the upcoming SCO summit, of course, we would like to hear your thoughts on the expectations on what could be on the agenda. What would you particularly consider a realistic and meaningful outcome from the upcoming visit of the Prime Minister to China, not just in context of India's overall engagement with the neighboring country, but also in the larger interest of regional security, regional stability? SCO does not have any impact on the security in our region. What impacts the security of our region is Chinese support to Pakistan and the Chinese presence on our northern borders. These are outside the SCO framework. Now, there are 2 interesting questions. Let me just highlight them. Wang Yi, the foreign minister, is headed to Pakistan tomorrow for a strategic dialogue with that country. How do Chinese look at Pakistan's flirtation with US? General Asif Munir has been, strutting about or boasting about this tremendous change in their relationship, and Pakistan has nominated President Trump for a Nobel Prize. This must be giving Chinese something to think about, their relationship with the country they have bankrolled for such a long time, turning out to be such an unreliable partner. The second issue which the Chinese have to worry about is how are Russia-US relations are going to turn out. If the Ukraine
war issue is resolved, the Chinese leverage over Russia will be much less, and they will need friends like India. And the third issue is, how does China's equation with US works out? President Trump has extended the truce in the tariff war. And interestingly, while US has targeted India for buying Russian oil, it has given China a reprieve, even though China, if you look at last 3 years perspective since Ukraine war broke out, has been a bigger purchaser of Russian oil. And even more interesting, America has left out Europe, which, spent more money buying Russian LNG last year than aid to Ukraine. So these are interesting times, and these are questions, larger questions, which are outside the SCO framework, but will have an impact on the trajectory followed by these three countries, which will meet in SCO. I think in the short run, we do not expect a great deal. At this stage, SCO summit outcomes, if you have a look, they present an alternate view of the world to the West. I have dealt with multilateral issues for 8 years in the ministry. My own feeling is that this time the outcome will be very mild, because both countries, despite all the uncertainties, Russia and China, do not want to give up their America option. And that brings me to the point that for us also, America is not the problem. We run a $40 billion surplus with them. Our problem is China, with which we have a $97 billion deficit. And I hope our Chinese friends understand that, they cannot expect that they turn to India when they are in difficulty, and then they turn their back on us and go back to their, their protege in the neighborhood. These answers to these questions will be clearer after a couple of days after Wang Yi's visit to Pakistan. I think that's what Dr. Jaishankar meant when he emphasized on mutual interest. Perhaps it's time that China also looks at the fact that it needs India as much as India needs China. What the outcomes of the SCO summit will be, we'll have to wait and watch until the 1st of September. But for now, we'll have to wind up the conversation. The important takeaway is that the Chinese foreign minister is in India. It's a significant visit. He's had meetings with Prime Minister Modi, with the External Affairs Minister, with the National Security Advisor. There is a positive momentum that's been generated over the last few months in the India-China relationship, and we hope that it's just the beginning of the long-lasting relationship for India and China, the two Asian giants. With that, we'll have to wrap up the conversation. Thank you once again, Ambassador, Professor, and Mr. Ali, for joining us on this edition of Perspective, sharing your thoughts, your views with us and our viewers. And to you viewers, thank you very much for your time as well. Hello and very warm welcome viewers. You're watching the special presentation of Sunset TV, Samvad, with your host, Priti Mishra. And joining us right now is a very special guest, Ports, Shipping and Waterways Minister of India, Mr. Sarvanand Sonowal. Sir, welcome to Sunset TV and thank you so much for joining us. Sir, first of all, let me begin by asking you about the bill that has been passed by Parliament recently, Bill of Lading Bill 2025. Tell us about the importance of the bill because it also ensures ease of doing business in India. Let me begin with this, that Honorable Prime Minister has given us a vision that is very clear that by 2047 we are to achieve the target of becoming one of the top developed nation in the world, and also to make India self-reliant nation, Atmanirbhar Bharat. To achieve that goal, under the visionary leadership of Honorable Prime Minister,
Narendra Modi ji, all the ministries are working day and night. And as he started with this principle that reforms perform and transform. So that is why a lot of reformation is required to bring the transformation in the different sector in terms of our growth, in the sector of our day-to-day activities. So that is why Ministry of Port, Shipping, Waterways, since 2014, Honorable Prime Minister has taken up the leadership, and he has set a target for this ministry, that ministry will have to enhance its capacity of port operation, handling of cargo, and efficiency in all aspects. That is why one very, very important flagship program has been brought into place, that is Sagarmala program. And this Sagarmala program, through this program, the agenda has been set very clear that we are to make all the port modernized, mechanized, digitized, and creating an environment of ease of doing business. Then port-led connectivity enhancement, railway connectivity, road connectivity, all other concerned ministry connected with EXIM trade, they are to be integrated, and an ecosystem should be developed so that this handling of cargo efficiency can be enhanced. Then come port-led industrialization. Close to the port, we are to create industries, and that industry will manufacture the goods meant for global market. It should be located close to the port so that, like, the transportation become easy and logistic costs can be minimized. Then come coastal community development. Right from Gujarat to West Bengal, there is more than 7,500 kilometer length of coastal area. We have different, state and also union territories. For the development of coastal community, we are to undertake different scheme, like creating fishing harbor and giving fishing vessels, and also creating the institutional mechanism for maritime skill development, so that we could create employment opportunity and also entrepreneurship. So this is one of the vertical of Sagarmala program. And then come coastal shipping and inland waterways. In both the sector, we'll have to give importance for coastal shipping as well as inland water transport. So because of this particular initiative, in the last 10 years' time, lot of development have taken place. Now in all the verticals, even World Bank Logistic Performance Reports Index speak the volumes of our growth, how we could able to double the cargo handling capacity from 2014 to 2025. So this is the power we could able to generate because of the Honorable Prime Minister's vision and his dynamic leadership, and because of his initiative, policy program, and also quality governance, good governance. So I believe this is the way this ministry has been performing and creating exemplary success story. And you have all the figures available with you, right from cargo handling to the turnaround time, and so also positioning from 44 to 28, how our ports have been placed among the top 100 ports in the world. So that's the way in all the verticals our growth story has started, and ultimately created confidence among the traders, among the stakeholders. And also, due to the incorporations of latest technology into our place, particularly port quality operation,
for our sustainable growth. And these are the landmark achievements and happening because of Honorable Prime Minister's vision. We must admit it very frankly. And earlier, what was the condition of this? You know that. So during the UPA regime, this was totally neglected kind of sector. It has never been brought to the limelight, and it was never been realized by those government that this ministry is the largest transporter of the country, and we have to handle more than 90% by volume and 70% by value. That is the EXIM cargo. We have got Himalayan responsibility to generate our kind of efforts so that country's economic growth can be met speedier and also with kind of a scale of our world-class activities. So this is how this ministry is performing. And Bill of Lading of 1856, it was enacted by the British regime for their own interest. So Honorable Prime Minister has given very clear direction to all the ministry that whatever legislations were enacted during the British regime, it should be replaced and repealed. We should bring our fresh law into our domain, so that our legal wisdom, legal knowledge can be well incorporated to demonstrate our power of legislative reforms. That is why this bill has been repealed, and this has made the country out of colonial mindset and bringing this legislation. We are making the entire kind of efforts of this particular set of law simple and for better understanding. Simplifications and better understanding is the key to this reform, because this reform is going to empower our stakeholders, whether it is shipper, carrier, consignee, endorsee, and the transfer of right of suits and liabilities has been very clearly given to the kind of consignee and also the endorsee. So this is the significance of this particular reforms, and ultimately this will help for effective governance, effective implementation of this particular set of law. So this is the remarkable changes we have brought, and ultimately, as this is a kind of legal document, this is treated as a legal document, this Bill of Lading, and this legal document will empower our stakeholders and also to make the entire business transaction trustworthy. That is why we have incorporated some numbers of clauses, so that whatever provisions are there in this act can be effectively implemented by the stakeholders and make the entire transaction trustworthy, credible, and more easy for business. Absolutely, sir. You talked about Prime Minister's vision. There's a lot of focus on the shipping industry, whether it's Make in India or in fact dismantling the ship. How do you see the Prime Minister's vision being translated on the ground? Of course, it will be translated into ground. We have started to articulate into action. And now that is why ecosystem has now been developed in such a manner. You will be happy to know a lot of shipbuilders, leading shipbuilder of the world, they are coming and joining hands with the Indian kind of stakeholders. So that reflects how Honorable Prime Minister's vision is now making into a reality now. So that is why, with the help of the kind of state government, coastal state government, and we are creating clusters for shipbuilding and also creating the ecosystem
so that like equipments and kind of parts which should be applicable for shipbuilding will be manufactured within India itself. So that's the way we are targeting to make India by 2047 one of the top 5 shipbuilding nation in the world. And it is possible because whatever Honorable Prime Minister says, it is always articulated in action, and that is why India is growing faster, and that is why India could able to make itself one of the top, leading economy in the world, and now we could able to position ourselves one of the 4th largest economy. By 2028, we are becoming the 3rd largest economy. Why it is happening? Why it was not happened before 2014? Because those governments were having no business, no vision, no kind of policy, and no good governance. So that is why they have failed. Now Honorable Prime Minister has brought all the changes, good governance into place, which has empowered every citizen, and generated self-confidence. Yes, I could also contribute for the growth of the country. So this is how he has integrated the more than 142 crores people in the country through the principle of kind of Ek Bharat, Shresth Bharat, and also making everyone empowered and also providing social security and economic upliftment. That speaks the volume of his broad mind for the cause of the people of the country, and also to make India one of the leading developed nation by 2047. Finally, sir, before we wrap up this conversation, your vision of port-led development of India. Yeah, of course, I want that whatever Honorable Prime Minister is giving us the vision, that's the a target we are to fulfill, and that is why we are making our all the ports whether it is chairman, deputy chairman, or all the officers involved, workers involved, all other stakeholders involved, because our ministry going on the principle of PPP mode, and whatever project we have been undertaking, it is all being implemented through this principle. And that is why, because of the success story, now many more stakeholders are coming forward and trying to join hands with us, because they know that joining hands with our ministry means success, success, success. On that note, sir, and all the very best for all your successful endeavors in future as well. Thank you so much for talking to Sunset TV. Thanks, docs. Hello and welcome viewers. You're watching In Depth with your host, Kriti Mishra. Parliament of India has passed the Coastal Shipping Bill of 2025. The bill will unlock the full potential of the country's vast and strategic coastline and will help in achieving the goal of country's coastal cargo traffic to 230 million metric tons by 2030. The proposed legislation will also minimize regulations and maximize facilitation of growth opportunities in coastal trade. Here's everything you need to know about this proposed legislation. Come along. In a historic moment towards boosting the coastal economy of the country, the Coastal Shipping Bill 2025 was passed by the Rajya Sabha. This historic act is set to unlock the tremendous and vast potential of India's 11,098 kilometers long strategic coastline spanning 9 coastal states and 4 union territories. The bill was proposed for adoption by Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal. The bill, which was earlier passed by the Lok Sabha on April 3, 2025, seeks to simplify and modernize the legal framework governing coastal shipping, replacing a part of Merchant Shipping Act 1958 with a new age progressive legislation aligned with global norms. Introducing the bill in the Rajya Sabha, Union Minister Sarbanand Sonowal stated that the legislation is central to India's ambition of increasing its coastal cargo share by 230 million metric tons by 2030, while strengthening the maritime sector's contribution to Atmanirbhar Bharat and Viksit Bharat. This is not merely a legal reform, but a strategic enabler of economic growth, employment and logistics efficiency. The bill reduces regulatory burdens,
enhances competitiveness of Indian vessels and aligns with Prime Minister's vision to make India a global maritime hub. The Coastal Shipping Bill 2025 comprises of 6 chapters and 42 clauses. It introduces a simplified licensing system for coastal shipping and lays down the framework for regulating foreign vessels engaged in coastal trading. Additionally, the bill mandates the formulation of a national coastal and inland shipping strategic plan to guide future infrastructure development and policy direction. The legislation also provides for creation of a national database for coastal shipping, enabling real-time access to authentic and regularly updated data. This database will keep potential investors informed about the government's development plans and policy priorities in the sector, promoting transparency and confidence. Once implemented, the bill is expected to significantly enhance supply chain security by increasing Indian ships' participation in domestic cargo movement. The government is working on a mission mode towards building an Atmanirbhar Bharat. In the same spirit, this bill aims to reduce India's dependence on foreign vessels, thereby preventing the outflow of foreign exchange. In doing so, it will catalyze local economic development, generate employment opportunities across coastal regions, and strengthen ease of doing business for Indian shipping operators. With the passage of the Coastal Shipping Bill 2025, India takes a decisive step towards building a seamless, efficient, and globally competitive coastal and inland shipping ecosystem. This landmark reform will unlock the immense potential of our coastline, enhance supply chain resilience, and drive economic growth in line with our national vision of Viksit Bharat. Which is particularly unlock the full potential of India's vast and strategic coastline, which stretches over 11,098 kilometers across 9 coastal states and 4 union territories. To support the goal of growing India's coastal cargo share to 230 million metric ton by 2030, we need a framework that minimizes regulation while maximizing facilitation of growth opportunity in coastal trade. The Coastal Shipping Bill 2025 is designed to make coastal trade easier, more competitive, and better integrated with India's overall transport vision. Sir, presently regulation and licensing of coastal shipping is governed by Part 14 of the Marine Shipping Act 1958. The current bill provides a holistic, forward-looking and progressive legal framework suited to today's commercial realities in line with the globally prevalent cabotage practices. This bill is a part of the larger vision of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji to undertake a series of legal reforms which in the past 11 years have led to increased growth and developmental of maritime and shipping sector. Honorable Sir, this bill contains 6 chapters and 42 clauses that mainly consist of provisions of licensing and regulations of foreign vessels in coastal trade, formulations of national coastal and inland shipping strategic plan, creation of a national database for coastal shipping. This bill will reduce the compliance burden for Indian ships in line with the mission of ease of doing business. If greater numbers of Indian ships handle cargo, it will ensure supply chain security for the country. This is very significant. Supply chain security for the country prevent escapement of countries' foreign access by reduced dependence on foreign ships and enable creation of glowing local economy with versatile employment opportunity. Easy accessibility to authentic and periodically updated data through the national database on coastal shipping along with information of the strategic plan for the development of infrastructure on coastal and inland routes will keep potential investors better informed about the development plan and policy priority of the government in the sector. Sir, with this, I want to request you, sir, this bill is very significant bill, very important, very reformative kind of initiative, and I believe the members of the House will definitely help this bill to pass. The question is that the Coastal Shipping Bill 2025 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will say no.
I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the motion is adopted. Let's take a look at the highlights and key provisions of the bill. Services to be also covered under coasting trade. Under the Act, coasting trade refers to the carriage of goods and passengers from one place or port in India to another. The bill expands this definition to include provisions of services. Services include exploration, research, and any other commercial activity except fishing. License for coasting trade and certain other purposes. The Act requires license for all vessels engaging in coasting trade. The bill states that vessels wholly owned by Indian persons will not need a license. For purposes other than coasting trade, the bill requires licenses for vessels that are not wholly owned by Indian persons. These are vessels that are hired by Indian persons, non-resident Indians or overseas citizens of India, and are operating between Indian and international ports or between international ports. OCIs hiring vessels for operating exclusively outside India will not require a license. The licenses will be issued by the Director General of Shipping, who is appointed by the central government. The Director General may permit a vessel registered under the Inland Vessels Act of 2021 operating in inland waterways to engage in coasting trade. Revocation of licenses. The Act empowers the Director General to modify or revoke licenses. The bill specifies the grounds for modification, suspension, or revocation of licenses. These include violation of terms of license or an existing law, or failure to comply with directions of Director General. Revision of penalties. Under the Act, engaging in coasting trade or taking a vessel to sea without a license is punishable with imprisonment of up to 6 months, a fine of up to 1,000 or both. The bill increases the maximum fine to 15 lakh or 4 times the gains from an unlicensed voyage, whichever is higher. The Act empowers the Director General to issue directions on subjects such as class of passengers or cargo that may be carried and diversion of routes. Failure to comply with its directions is punishable with imprisonment up to 6 months, a fine of up to 1,000 or both. The bill replaces the punishment with a civil penalty of up to 5 lakh rupees or 2 times the gains made from contravention, whichever is higher. The Director General may seek information on subjects such as transaction records and fares. Failure to provide details correctly or on time is punishable with imprisonment of up to 6 months, a fine of 500 or both. The bill increases the fine to 50,000 rupees. Vessels may be detained for certain offences. The bill also provides for detention of vessels as a punishment for certain offences, such as operating without a license, violating directions of Director General, and providing false information. Compounding of offences. The Act allows all first offences to be compounded. Under the bill, only following offences will be compoundable: undertaking coasting trade without license or with an expired license, taking vessel into sea without license or failure to furnish information, or violating a detention order. Coastal and Inland Shipping Strategy Plan. The bill requires the central government to prepare a national coastal and inland shipping strategic plan within 2 years of the commencement of the Act. Powers to exempt. The central government may exempt any class of vessels from the application of the bill. With the passage of the Coastal Shipping Bill 2025, the Ministry of Ports, Shipping and Waterways has successfully secured parliamentary approval for all 3 critical marine legislations: the Merchant Shipping Bill 2025, the Carriage of Goods by Sea Bill 2025, and the Coastal Shipping Bill, paving the way for a modern, efficient and self-reliant maritime ecosystem in line with vision of Viksit Bharat. The government has taken legislative reforms to modernize India's maritime sector. With these 3 bills, the ministry is trying to lay a foundation for a future-ready maritime ecosystem that supports Atmanirbhar Bharat and propels us closer to the goal of Viksit Bharat. With the passage of these landmark legislations, India moves a step closer to building an integrated, efficient
and globally competitive coastal and inland shipping ecosystem. Well, viewers, that's all we had for you in this edition. Thanks for watching and stay tuned to Sunset TV. Goodbye for now from my side. माननीय सभासदों, माननीय उपसभापति जी, Honorable members, the Indian Institute of Management Amendment Bill 2025. The bill was listed in the revised list of business for today, subject to receipt of President's recommendation required under Article 117 in bracket 3 of the Constitution. The same has been received today. Now, Sri Dharmendra Pradhan, please. Chairman sir, let me please go to your seat. Go to your seat. Some few go points. to your seat. No, no. I am thankful to This is Chair not sir. the way, honorable members. Yesterday, you are a senior member. What the juniors will learn from you. In Lok Sabha. Please go to your seat. Please go to your seat. You can go to your seat. Please. विधेयक को अनुमति दिया है। चेयरमैन साहब, आसाम और विशेष करके नॉर्थ ईस्ट हमारे देश की एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। वहाँ के युवाओं की, वहाँ की नागरिकों की, वहाँ की समाज की आगे बढ़ने की एक जज्बा है। और जब से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उन्होंने मिशन पूर्वोदय के तहत, एक्ट ईस्ट के तहत प्रतिदिन सरकार की ओर से पूर्वोत्तर के लिए कैसे ज्यादा काम किया जाए, नॉर्थ ईस्ट को कैसे और सुविधा दिया जाए, विशेष करके युवा वर्गों को कैसे ज्यादा सुविधा दिया जाए, इसीलिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। आसाम में जो जनरल डेवलपमेंट एक्ट बनी भारत सरकार और आसाम सरकार के बीच में, वहाँ की संगठनों के साथ में वहाँ एक अपेक्षा थी। नॉर्थ ईस्ट में पहले से शिलोंग में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट था। आज IIM न केवल भारत में एक प्रतिष्ठा बनाई है, IIM
दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। IIM की ओर से आज जो छात्र पढ़ते हैं उन्होंने दुनिया की अनेक देशों में अपने महत्वपूर्ण प्रभाव रखा है। आज विदेश में भी IIM की कैंपस खुले, ये अपेक्षा रहती है। कालखंड में देश में 13 IIM खुल चुके थे। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दायित्व के लिए पिछले 11 साल में और 9 नया IIM खुला गया है। ये IIM की संख्या अभी बढ़ के 21 हुआ है। ये IIM 20 राज्यों में काम कर रहा है। Honorable Minister, sir, 1 minute. LOP wants to say, yeah. You go to your seat. LOP will speak now. Go to your seats. LOP will speak now. Go to your seats. सर, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। सर, हम रोज ये मुद्दा उठा रहे हैं। We are discussing the IIM Guwahati now. रोज ये मुद्दा हम उठा रहे हैं। देश के हित में, लोगों के हित में और हमारे चोरी के बारे में हम बताना चाहते हैं कि कैसा हर दिन नोटिस जा रहे हैं, हर दिन नोटिस जा रहे हैं। सर, वो देखो आप कैसा चिल्ला रहे हो। Nothing will go on record. Except the listed business, if you speak outside it, nothing will go on record. And I am very happy that you are speaking on the IIM Guwahati bill, which is, we are very happy because you know Northeastern region, you are the leader of the opposition, you know Assam, you know Guwahati. So please cooperate and speak only on the subject, only on the listed bill. Other will be, I will not be happy to take out whatever you say from the record. So nothing will go on record except the IIM Guwahati bill. You speak on that, speak on subject, we'll be very happy. सर, देखिए, हर दिन हम इसीलिए ये मुद्दा उठा रहे हैं। ये देश का महत्व का मुद्दा है। अगर वोटिंग पावर नहीं रहेगी, आप नहीं रहेंगे, न हम रहेंगे, न इस देश के लोकतंत्र रहेगा। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। In the beginning, only on the subject, the IIM Guwahati bill, if you speak, that will go on record, but not all. Yes, Mr. Minister. Honorable members, maintain the decorum of the house. You are walking out, that is also a part of democracy. Nothing wrong in it. But you maintain decorum. While going out also, you should maintain decorum. Please maintain the decorum of the house. You are walking out. Mr. Derek, your party is walking out, isn't it? Your party is walking out, isn't it? So please maintain decorum. Please maintain decorum. Minister, you can continue. सर, थोड़ा हाउस को ऑर्डर में आ जाए। बहुत महत्वपूर्ण विषय में चर्चा हो रही है।
opposing IIT Guwahati bill? Derek. IIM, sir. Derek ji, please. IIM. Are you opposing the IIM Guwahati bill? Derek ji, you are a senior member. You are a senior member. Maintain decorum. Please maintain decorum. चेयरमैन साहब, जैसे अभी आपकी अनुमति से मैं वर्णन कर रहा था, जैसे मैं आपकी अनुमति से ये वर्णन कर रहा था, आज भारत दुनिया की एक उभरते हुई अर्थनीति, चौथे बड़े अर्थनीति बन चुका है। दुनिया भर के सारे विशेषज्ञ इस बात को उल्लेख कर रहे हैं कि थोड़े ही दिनों में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। मित्रों, आज भारत, चेयरमैन साहब, ये स्थिति ऐसे ही नहीं आई है। पिछले दिनों में भारत की नौजवानों की विशेष दक्षता के कारण ये स्थिति उपलब्ध हुई है। उसमें हमारी देश की IIM की एक प्रमुख भूमिका रही है। चेयरमैन साहब, अभी हाउस ऑर्डर में आया है, मैं इसको इस संबंध में थोड़ा आपकी अनुमति लेके एक बात कहना चाहता हूँ, भी थोड़ा शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है। सारे जो प्रतिपक्ष के लोग देश की बड़ी हानि कर रहे हैं, बड़ी अहित काम कर रहे हैं, संसद चलने नहीं देते हैं, गरीबों के पैसे से, टैक्स से ये संसद चलती है, ये कार्रवाई होती है। सारे किस विषय को छुपाना चाहते, किस विषय में चर्चा करनी चाहते? सर, इस मुद्दे को ये चर्चा करना चाहते, इन्होंने इन दिनों में एक तथ्य को कोट किया। एक स्वयंसेवी संगठन है, थिंक टैंक है, CSDS, उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव की एक डाटा उद्देश्य के साथ, जो अखबारों में मैं पढ़ के समझ पा रहा हूं, with a malified intention that agency has posted few data by a important person of the institution, कोई एक महानुभाव है, उन्होंने जानबूझ के भ्रम देश में फैले, जिसको ये विपक्ष विशेष करके कांग्रेस पार्टी वाले उस विषय को आगे बढ़ाए। आप सब्जेक्ट में मैं आता हूं सर, देश की हानि हो रहा है सर, ये विषय इसीलिए मैं उल्लेख कर रहा हूं कि मैं देश के शिक्षा विभाग के दायित्व में हूं। अभी मैं आज अखबार में पढ़ा, शिक्षा विभाग की एक इंस्टीट्यूशन CI सामाजिक अनुसंधान संस्थान CISSR की ओर से उनको कुछ आर्थिक अनुदान दिया गया है। सर, भारत सरकार की पैसा लेके भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को चुनौती देना ये उचित बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। CISSR उसके ऊपर संज्ञान लिया है। आज अखबारों में मैंने पढ़ा, उनको उचित कार्रवाई करेंगे ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। उस संस्था के मुखिया ने भी सार्वजनिक रूप में माफी भी मांगा है कि मैं गलती से जिसको लेके ये पूरा संसद के कार्य को बाधित करते हैं और हो हल्ला करते हैं, ये तथ्य गलत है, इसे उस संस्था के मुखिया ने कह चुका है। उसके बाद मैं अभी भी आपके माध्यम से विपक्ष को अपील करता हूं, आप जैसे कहा, गुवाहाटी हमारे पूर्वोत्तर की केंद्र बिंदु है, हमारी एक प्रकार से सांस्कृतिक केंद्र है भारत की, जहां ओहम राजा ने एक व्यवस्था बनाई थी, वहां की लोगों को सुविधा उपलब्ध करने के लिए सदियों पहले वीरता की, पराक्रमता की, विकास की वहां पराकाष्ठा हुई थी। मां कामाक्षा देवी की साक्षात उन्होंने विजय किया है। आज देश भर के लोग गुवाहाटी श्रद्धा के साथ जाते हैं मां कामाक्षा के दर्शन करने के लिए। आसाम की नैसर्गिक संपन्नता को आनंदित होने के लिए, पर्यटन की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से, कला की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से वहां की नौजवानों की, चेयरमैन सर, आप भी उस आसाम प्रांत से आते हैं और आसाम के स्टूडेंट यूथ मूवमेंट के आप भी प्रोडक्ट हो। सर, सदियों से आसाम जिस प्रकार से विकसित होनी चाहिए, भारत की एक प्रमुख हिस्सा होने का नहीं हो पाई थी। अंग्रेजों ने उसको पहले लूटा, बाद में जिन्होंने दिल्ली में बैठा उन्होंने आसाम को, पूर्वोत्तर को अनदेखा किया। जब से देश में एनडीए की राज आई, पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे,
और पिछले 11 साल से देश की लोकप्रिय जननेता माननीय नरेंद्र मोदी जी देश की सेवा करने की दायित्व मिला है। और पूर्वोत्तर भारत, विशेष करके मैं आसाम की जनता को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने बार बार नरेंद्र मोदी जी की शासन प्रणाली को आशीर्वाद किया है, समर्थन किया है, इसलिए उनके कारण आज हम लोग यहाँ सेवा कर पा रहे हैं। आसाम की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी अध्यक्ष चेयरमैन साहब। आसाम की आकांक्षा है, आसाम की सरकार, वहां की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा, और यहाँ हमारे अभी तक बैठे थे आसाम के और एक बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, ये बार बार एक विषय को उल्लेख करते थे कि आसाम में नौजवानों को और मौका दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने उस बातों को स्वीकृति देते हुए, उस बातों को स्वीकार करते हुए कैबिनेट में निर्णय करवाया कि गुवाहाटी में देश की 22वां 22nd IIM को स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार उसमें 550 करोड़ रुपया खर्चा करके राज्य सरकार के सहयोग से इसी साल से, बीते काल लोकसभा ने उनको इस बिल को पारित किया है। आज आपकी मार्गदर्शन में इस संसद, इस सदन उस बिल को पारित करेगा, फिर ये कानून की रूप ले लेगा, इसकी रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाएंगे। हम इस सदन के माध्यम से देशवासियों को, विशेष करके आसाम वासियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि इसी एकेडमिक ईयर में IIM गुवाहाटी में स्टूडेंट की एडमिशन होगी, प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी और पढ़ाई भी शुरू किया जाएगा। फिर तो देश जब आगे बढ़ रहा है, देश आज विकसित भारत की लक्ष्य को लेके जा रहा है, देश दुनिया की आर्थिक महाशक्ति होने के काम पे लगा है। और IIM जो आज देश में, चेयरमैन साहब मैं कुछ विषय कहूंगा तो फिर आप कहोगे इसी विषय पे बोलो। सर ये सारा विषय आपको पूरा बोलूंगा ना, अभी डिस्कशन के बाद आपको मौका मिलेगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी और बोलेंगे। सर ये तो इंट्रोडक्टरी स्पीच है, के देश तो के माहौल इन्होंने इतना कम रखिए सर, देश के माहौल को इतना खराब करके ये कुछ दिनों से ये प्रतिपक्ष के लोग रखे हैं, देश में असली मुद्दे को चर्चा होने नहीं देते। आपने सही कहा, क्या कांग्रेस पार्टी बताए वो आसाम में गुवाहाटी में IIM को सपोर्ट कर रहे कि नहीं कर रहे? सर हम अनेक ओकेजन आई है इस देश में जब हमने सर्वसम्मत होकर देश के विकास के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज विपक्ष की इस नकारात्मक मुद्दे से आसाम वासियों को बहुत आहत आया होगा, बहुत बुरा लगा होगा। सब IIM की प्रतिष्ठा वहां की बहुत दिनों की अपेक्षा थी। इन दिनों में हमने अनेकों इंस्टीट्यूशन, इस बीच में IIT गुवाहाटी की रूप बन चुकी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आसाम में अच्छा काम कर रहा है, NIT सिलचर अच्छा काम कर रहा है। सर एक बचा था IIM बनाना। आज मैं इस पवित्र गृह में इस प्रस्ताव को लेकर आया हूं, इस बिल को उपस्थापित कर रहा हूं जिसको लोकसभा ने पारित किया है कि आप इसको अनुमति दे, हम इसी सत्र में IIM गुवाहाटी का इनागुरेशन कर उसको खोले, विद्यार्थियों को पढ़ाए। मैं सदन की अनुमति के लिए, व्यापक चर्चा के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं अध्यक्ष जी। Thank you, Honorable Minister. Now, motion moved. Voting to I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. List of speakers. Srimati Gita alias Sandra Prabha. बहुत बहुत धन्यवाद उप सभापति महोदय कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया। उप सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में केंद्र में सरकार बनने के पश्चात देश भर में महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान जैसे IIM, AIIMS, IIT, मेडिकल कॉलेज के बनने की गति दोगुनी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार में पिछले 11 वर्षों में भारतीय शिक्षा व्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्राप्त हुई है। महोदय, शिक्षा क्षेत्र में सरकार के सकारात्मक प्रयासों के कारण इस वर्ष विश्वविद्यालय रैंकिंग में
देश 46 उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है, जबकि आज से 10 वर्ष पहले इसमें सिर्फ 9 शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया था। इस प्रकार से टाइम्स हायर एजुकेशन इनफैक्ट रैंकिंग में भी देश ने ऐतिहासिक प्रगति की है। महोदय, इस रैंकिंग में पहले सिर्फ 13 भारतीय संस्थान शामिल थे, परंतु सरकार के सकारात्मक प्रयासों के कारण अब इनकी संख्या 105 हो चुकी है। आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर यदि देश में खुले शिक्षण संस्थानों को प्रतिदिन के औसत की तुलना की जाए तो देश में हर दिन 2 नए कॉलेज, 1 नई ITI की स्थापना हुई है। महोदय, सरकार इस विधेयक के माध्यम से देश के असम राज्य में एक नया IIM स्थापित करने जा रही है। 2014 से लगातार सरकार देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक काम कर रही है और लगातार प्रयास कर रही है, जिसमें देश में छात्रों को एक नई प्रगति और उनको शिक्षा मिलने का प्रयास हो रहा है। महोदय, 2014 में देश में केवल 13 IIM थे, अब देश में IIM 22 हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने असम में IIM की स्थापना के लिए 555 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आसाम और पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए भी उन्होंने चिंता की है। महोदय, अभी तक असम में कोई IIM मौजूद नहीं थे। मैनेजमेंट क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए असम के विद्यार्थियों को अन्य राज्यों में जाना पड़ता था, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। असम के साथ पूरे पूर्वोत्तर भारत की शिक्षा और समग्र विकास शिक्षा के लिए असम में IIM की स्थापना आवश्यक थी। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम स्वागत योग्य है। अतः देश की शिक्षा क्षेत्र को निरंतर मजबूत करने के लिए तथा असम सहित पूरे पूर्वोत्तर भारत की शिक्षा को मजबूत करने के लिए और उनके विद्यार्थियों के हितों में सोचते हुए IIM स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ और माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद फॉर कंप्लीटिंग योर स्पीच ऑन टाइम। आप समय पर समाप्त किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इस बिल को सिर्फ 1 घंटा दिया है, तो हमें सारे कामकाज 1 घंटे में कंप्लीट करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। इसलिए मैं जो स्पीकर्स हैं उनको विशेष अनुरोध है कि आप समय पर अपना भाषण समाप्त कीजिएगा। अब निरंजन BC, गोला बाबूराव। Yes. Sir, at the outset, I also thank the Honorable Prime Minister and Honorable Minister for Education to reform the IIMs in India. The main objective of this bill is to give a greater autonomy to the IIMs in terms of administration and academic affairs and financial matters. Sir, in fact, it is a small bill which aims to open IIM in Guwahati. With this, a number of these IIM and the students total IIMs in India are now 22. The bill also proposes that until formation of Board of Governors of new IIMs at Guwahati, its functions will be taken care by the experts appointed by the Government of India. In pursuance of the AP Reorganization Act 2014, one IIM was also established in my nodal district, Visakhapatnam. Sir, Honorable PM as Modi ji had inaugurated the permanent campus of IIM in Visakhapatnam on 20th February 2024. Last year, when YSR party was ruling in the state, even though IIM Visakhapatnam was
started in 2015. There was no permanent campus for this premier institution till 2019 and was running from the temporary premises. It was our leader Sri Y.S. Jagannath Reddy Garu who has taken keen initiative and interest to complete the permanent campus of IIM, and it was finally completed by him and inaugurated by then Honorable Prime Minister. Sir, IIM Visakhapatnam, sir, just only so many, the other parties are not there. It is the Business Advisory Committee which has given 1 hour to this bill. I will tell you. You have 2 minutes, so you complete your speech. Yes, sir. Yes, sir. The second important unique aspect of IIM in AP is the recognition by the Ministry of Social Justice and Empowerment. Sir, it is only IIM in the country which has Dr. B.R. Ambedkar chair the professorship and is endowed by the Ministry of Social Justice and Empowerment. It is an achievement and compliment the management of IIM for this. Thank you. One more point, sir. I would like to mention I have to call the next related speaker. to faculty position. Faculty position Please. are very poor, Please. and many posts are vacant. And now, without lecturers and professors, how can the IIM be run in a place like Visakhapatnam? Visakhapatnam is the most Thank you. most Sri Niranjan developed BC. city. Sri Niranjan BC. Please. Your time is up. Your time is up. Niranjan BC. Thank you, Honorable Vice Chairman sir, for giving me an opportunity to speak on the Indian Institute of Indian You also have 2 Institute of minutes. Management Please Amendment restrict Act 2025, which aims to include the Guwahati aims under the IIM Act 2017. I welcome the bills and I congratulate and thanks Honorable Union Education Minister, respected Sri Dharmendra Pradhan ji, with a request to establish more Indian Institute of Management in our 30 district of Odisha state for the education development of Odisha, sir. And I request that, which my colleague said, that about 500 posts, faculty posts are lying vacant. So all the vacant posts should be filled up, and ragging in Indian Institute of Management and IIT and other universities should also be stopped, and my Honorable Union Education Minister should look into it. And my western part of Odisha, my district in the district of Balangir, which is KBK region, there is a IIM in Sambalpur district. So I request Adaniya Sri Dharmendra Pradhan ji, our respected Honorable Union Education Minister, to establish a IIM at Balangir. Thank you, sir. Thank you, Sri Niranjan BC. Now, Dr. M. Thambidurai. Professor, you have 5 minutes. Thank you. You have 5 minutes, and thank you, sir. Honorable Vice this Chairman, is a sir. bill on behalf IIM of Guwahati. my ADMK party, Sri Edapadi Palaniswamy, I raised to participate in the discussion on the Indian Institute of Management Bill. With the setting up the new IIM Guwahati, the total number of IIMs in India would rise to 22. This is a historical thing this year created. Sir, and other things that you are establishing IIM institutions, sir. I am welcoming that. At the same time, what is happening? Many students studying in IIM Institute committing suicide. That is the issue. Why it is happening? That I request the Honorable Minister to look into this matter. What is the reason, sir? Then not only They have been given time by their alliance partner, the ruling party, BJP. Sir, carry on. Sir, establishing IIM Institute good. Or they say universities are good. What about without the head of the universities, Vice Chancellor, how to run? Such pitiable condition, there is a controversy about appointment Vice Chancellor in Tamil Nadu. The process of appointing Vice Chancellor in Tamil Nadu state universities is currently entangled in a legal and political dispute created by the inefficient government of DMK government. During the UPA government, UG, they decided
to appoint one of the nominee for selection committee for Vice Chancellor from UGC. But state government of Tamil Nadu not accepting. DMK is the root cause who passed the regulation during that period, UPA government period. Because of that, the Madras is now, because this kind of thing, we could not appoint nearly 8, 9 universities in Tamil Nadu, no vice chancellors. How it will go, how they will run, sir? Because of that, Anna University is a reputed university. There is no vice chancellor now. There is no security for the girls. One girl student in Anna University molested by a DMK member. That is a new member girl. It's a recorded is there. He's a DMK member, molested that girl. No action is taken till now. Namesake, they conducted the inquiry that kept. So this is the, I am requesting central government to, because this is a concurrent list, education concurrent list. You know, your central government has the authority to look in this matter, it's higher education, especially university. Where how that girl is molested and why the DMK government not taking action about that. He is because he's a member of DMK, that is why that fellow is belongs to that committee. Sir, and also regarding, sir, I want to come to the next point regarding, sir, that IIM, we are taking many students. As I said, suicides are taking place means because the students who are studying CBSE score or any matriculation score, because +1, +2, they are not attending classes. They are only coaching centers they are going. The coaching centers need exam like that. They are getting marks and joining these kind of higher institutions. When they are joining afterwards, because they are not familiarized in +2, that syllabus, they are facing lot of problem. That is one of the reasons this is happening, suicides are taking place. Sir, CBSE schools, now the new guidelines has given, it is going to affect, because the new good guidelines, with giving retrospective infrastructure, how it has to be there. But CBSE school, if can put such kind of condition, how can previously 4 square meters in a classroom, now they have given 5 square meters. But this is given by retrospective effect, 8 years. How now the existing institution CBSE school can fulfill the new conditions? They are demolishing the classes. They cannot done, sir. Therefore, I am requesting government to consider this. Mainly, sir, I am very, very concerned about the, in Tamil Nadu, no vice chancellors, the DMK inefficient government, they want to their own people to appoint. They are fighting with the governor and they are not following any rules. And you have less than a minute now. You have less than a minute now. Say one word about IIM Guwahati also. So I am supporting. I already said. Gawaj, you are coming, sir. Your state. I am very happy that Vice Chairman sitting Thank there. you. Thank you very much. Thank you. To establish IIM in Institute Guwahati, and at the same time, let them take action. Inefficient DMK government, because of many students are committing suicide. That is my demand. Okay, I am calling the next speaker. Sri Praful Patel ji, you have 5 minutes. Yes. Vice Chairman, sir, thank you very much. I stand in support of the Indian Institute of Management Amendment Bill 2025. This is one more step, I would say, in the improvement of higher education in our country. And thanks to the visionary leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi, who in the last 11 years has expanded the scope of higher education much beyond what we could have ever imagined. And it is the need of the hour, sir. You are aware, you are also from the Northeast, to come to start a IIM in Guwahati would be a very welcome step for many aspiring young students from the Northeast. And the number of IIMs now stands at 22. And I'm sure this number will not stop here in the years to come. I remember, sir, when IIM Ahmedabad had initially started, there were people from all over the country vying to get admission into those 100 seats of admission in IIM.
Today, with Prime Minister's vision, look at the number of medical colleges. We have more than 700 medical colleges in India. We have now IITs, we have AIIMS. All these are premier institutions which most people in the country were being deprived of. I remember AIIMS in Delhi, when people used to come here from all over the country, poor people not having a place to stay, where to go, whom to approach, and getting an admission into AIIMS for treatment was almost like impossible. These are the days, and now look at the transformation which is taking place across all sectors. Even AIIMS is a center of excellence for higher education. So would be an IIT, so would be an IIM. How many of our students go to Harvard, to Columbia, to Stanford, to so many other institutions? Our students are going to Australia for higher education, to the UK for higher education. These are the institutions which are not only on par, but some are even better than some of the best of the universities across the world. So this is a transformation in education which is required. Unless and until we bring this transformation, why are we spending lakhs and lakhs and crores of rupees per student for international studies when that kind of education can be made available here? And that is why the entire exercise of the Prime Minister and the HRD Ministry under Dharmendra Pradhanji is to transform the landscape of India. And I feel, sir, that IIMs, though they may be 22 in number, but as centers of excellence, institutes of excellence, they should be upgraded constantly, because that is where you will be really competing with the best in the world. There should be a day when students from all over the world want to come to our IIMs and IITs to get their degree so that they can stand higher in the world. That should be the vision with which the Prime Minister is moving. 2047 Viksit Bharat cannot happen without transformation in education. And unless and until you spread education across the length and breadth of the country, my friend was talking about having an IIM in every district. Well, that may not be the possible scenario, but at least every state, every region. That is when you integrate India also, through education also, through other developmental initiatives. And that's the vision with which this bill has been brought in. I fully support the IIM Amendment Bill, and I would urge the Honourable Minister, though he was a little away for a few minutes, but I know that he has, I think, transformation and development in his core, and he would like to see that the IIMs of India truly stand out as exceptional institutes of excellence. My fullest support, especially because the IIM is starting in Gauhati, and from this year itself, as we have mentioned, my congratulations to him and to the Prime Minister for bringing in this historic legislation. Thank you, Mr. Patel. Sri Naresh Bansal ji, आपके 4 मिनट है, 4 minutes. धन्यवाद उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे IIMs अमेंडमेंट बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं आपका आभारी हूं। यह विधेयक मोदी जी की सरकार की रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म इस नीति को प्रकट करता है। वर्षों तक नॉर्थ ईस्ट अशांत रहा, वो पहले की सरकारों की नीतियों के कारण जो नॉर्थ ईस्ट की उपेक्षा हुई है। जब से मोदी जी की सरकार आई, पहले सी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, फिर एक्ट नॉर्थ ईस्ट, इस पर जो काम हुआ है, विभिन्न प्रकार से वहाँ जो अशांति थी उसमें भी कमी आई है, लगभग समाप्त हुई है। जो भारत सरकार, आसाम सरकार और उल्फा के बीच में MOS हुआ था, उसके अंतर्गत बहुत सारी विकास की योजनाएं स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज के अंतर्गत आसाम में होनी है, हो रही है। उसी के अंतर्गत ये IIM भी वहां पर स्थापित किया जा रहा है। मैं इसके लिए अपने शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को बधाई देता हूं कि 555 करोड़ रुपए के आवंटन से
ये IIM वहाँ प्रारंभ हो रहा है। बड़ा आश्चर्य होता है देखकर, जिस आसाम की आबादी 3 करोड़ है वहाँ पर कोई IIM नहीं था। 5.5 लाख युवा वहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए कोई अवसर नहीं था, दूसरी जगह जाना पड़ता था। आज उनको वो अवसर प्राप्त हो रहा है कि वो अपना एक्सीलेंस बढ़ा सकते हैं, हायर एजुकेशन में अपर स्थान पा सकते हैं। जहां 2014 से पहले केवल 2 IIM मेरिट लिस्ट में आते थे, ग्लोबल रैंकिंग में आते थे, वहां आज 7-7 IIM ग्लोबल रैंकिंग में आ रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की जो ग्लोबल रैंकिंग है, जो सबसे विश्वसनीय मानी जाती, उसने 7 हमारे IIM को ग्लोबल रैंकिंग में लिया है। तो यह हर्ष का विषय है। और जिस प्रकार से 2014 से पहले केवल 3,500 छात्र IIM में शिक्षा प्राप्त करते थे, आज 9,800 से ज्यादा छात्र उसमें शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लगभग 3 गुना ये संख्या है। इससे और इसमें वृद्धि होगी और युवकों को उसमें अपना अवसर प्रदान होगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, इसी प्रकार से एजुकेशन ही नहीं, सब क्षेत्रों में अभी हमारे वक्ताओं ने कहा भी है कि किस प्रकार से मेडिकल कॉलेज डबल हुए, हवाई अड्डे डबल हुए, वंदे भारत ट्रेनें गई, यूनिवर्सिटीज खुली। तो इसी प्रकार से करते हुए जहां केवल 13 IIM थे, आज 22 IIM हो रहे हैं। और जो प्राइवेट उसमें IBS में, इंडियन बिजनेस स्कूल में छात्रों को जो 1 साल के कोर्स के लिए 34 लाख से 42 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ता था, IIM खुलने के बाद 2 वर्ष का जो MBA कोर्स है उसमें केवल 14 लाख से 26 लाख रुपए के बीच में गरीब छात्रों को शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। सरकार इसमें प्रत्येक छात्र पर जो 150 रुपए खर्च होता है उसमें से 125 रुपए सरकार वहन करती है और इंस्टीट्यूट केवल 25 रुपए वहन करता है। इस प्रकार सरकार के द्वारा पूर्ण अवसर नॉर्थ ईस्ट के, आसाम के और उसके आसपास के छात्रों को मिलेगा हायर एजुकेशन के लिए। अब उनको विदेश नहीं जाना पड़ेगा। मैं इस अमेंडमेंट बिल का समर्थन करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम ये किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नाउ श्री Dr. V. Shivdasan, not present. Shri Mokaria Rambhaji. ये डिस्टर्ब कर रहे हैं सब, आवाज आती है तो पता नहीं चलता क्या बोलते हैं। राजा साहब है ना, पीछे पीछे परेशान करते हैं। सर, ये धर्मेंद्र प्रधान साहब ने अच्छा को डिस्टर्ब न कीजिए, उनका भाषण रखने दीजिए आप, क्योंकि आपके पास 4 मिनट। 4 मिनट, 1-2 मिनट बढ़ा देना प्लीज। सर, आपने मेरे को बोलने का अवसर दिया, मैं आपका भी सह दिल से आभार व्यक्त करता हूं और अपने सीनियर सब है मेरे वडील, उसका भी वंदन करता हूं। ये जो बिल लेके आए हैं प्रधान जी, बहुत अच्छा बिल है और मोदी सरकार में करीबन 11 साल से एजुकेशन, एयरपोर्ट, रेलवे सब में जो सुधार, जो डेवलपमेंट रहा है, तो ये शिक्षण सबसे अपने देश के डेवलपमेंट के लिए उसका एक अच्छा पासा है कि वो सबसे ज़्यादा एजुकेशन के लिए काफ़ी लोगों ने पहले पत्थर हड़ताल करवाया था। हमारे मित्रों लोगों ने, मोदी साहब ने सबको कंप्यूटर दिया, सबको पुस्तकें दी, नया नया कोर्स दिया, सस्ता कोर्स दिया और बाहर के लोग भी यहाँ पढ़ने आ गए। जैसे पहले तक्षशिला में था, इससे ज़्यादा अभी यहाँ सब लोग आने लगे। तो डेवलपमेंट देश का भी हो रहा है। मोदी साहब ने काफ़ी कुछ अच्छा किया और धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी काफ़ी कुछ किया। मेरा एक राजकोट मेरा क्षेत्र है, मैं एक रिक्वेस्ट भी बीच बीच में कर दूं, क्योंकि हम विद्यार्थी परिषद में दोनों साथ में था तो थोड़ा मेरा हक भी बनता है। तो राजकोट में एक केंद्रीय विद्यालय है, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन, आबादी और सरकारी कर्मचारी की संख्या काफ़ी है, तो एक और मेरे को ये केंद्रीय विद्यालय देगा तो इसका अच्छा रिजल्ट भी आएगा और मैं इसका आभार मानता हूँ और वो मेरे को मना नहीं करेंगे। पहले सर, ये जो 555 करोड़ रुपए उपलब्ध किए गए हैं IIM के लिए, वो IIM अहमदाबाद, IIM गुवाहाटी के लिए मार्गदर्शन संस्था होगा। जैसे गुजरात मार्गदर्शन पूरे देश में, दुनिया में करते हैं, वैसा ही हमारे IIM अहमदाबाद, गुवाहाटी के लिए मार्गदर्शक बनेगा। क्या बात है, सही बात है।
IIM गुवाहाटी में प्रमुख MBA प्रोग्राम के लिए प्रति वर्ष 60 छात्रों का प्रवेश प्रति शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में शुरू होगा और 2025 में कॉमन एडमिशन टेस्ट में बैठने वाले छात्रों के IIM गुवाहाटी चुनने का विकल्प भी मिलेगा। और ये नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद के आगामी मॉनसून सत्र में भारतीय प्रबंधन संस्था संशोधक विधेयक 2025 करने को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक ने असम राज्य के कामरूप जिले में परामिता में भारतीय प्रबंधन संस्थान गुवाहाटी के नाम के एक नया भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने और भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 के अनुसूची में IIM गुवाहाटी को शामिल करने का प्रावधान है। दूसरा सर, ये तो सब बोलेंगे, ये देश के संस्थान को पहले 5 वर्षों के लिए संचालित करने के लिए भारत सरकार ने 2,555 करोड़ रुपए की राशि आवंटन की गई है। वो सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा के पीछे केंद्र सरकार और हमारी गुजरात सरकार भी काफ़ी कुछ धनराशि आवंटन करते हैं और देश के भविष्य के लिए, ये विद्यार्थी के लिए काफ़ी अच्छी खुशी की बात है। IIM गुवाहाटी में प्रमुख MBA कार्यक्रम शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में शुरू होगा। पहले बैच में 60 छात्र होंगे और 5 वर्षों में धीरे धीरे बढ़कर 600 हो जाएंगे। ये 600 स्टार बनेंगे देश के लिए, वो भी बहुत बड़ी बात है, विकास के लिए जरूरी है। IIM अहमदाबाद के मार्गदर्शन में IIM गुवाहाटी की स्थापना भारत और विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्रों के छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली प्रबंधन शिक्षा और उससे संबंधित बहुविषयक शिक्षा के लिए एक अतिरिक्त अवसर खोलेगी। यह विकासशील भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप पूरे क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने, प्रतिभाओं को विकसित करने और उद्यमता एवं आर्थिक विकास की समग्र संस्कृति को बेहतर बनाने की मदद करेगा। सर, मैं दिल से ये बिल को अपना समर्थन करता हूँ और हमारे देश में जो पहले आक्रांता आने के बाद हमारी शिक्षा नीति में सनातन विरोधी लोगों को अपनी शिक्षा नीति में खुद का गद्दारी का पाठ चलाया था, वो सब अभी तो कैंसिल हो गया है। लेकिन अभी भी कोई अन्य जगह पर आक्रांता का नाम, रोड, बिल्डिंग, कई रेलवे स्टेशन वगैरह नाम तुरंत निकालने के वहाँ हमारे क्रांतिवीर भगत सिंह, चंद्रशेखर राजा, सुभाष चंद्र बोस वगैरह के नाम से नया रूप देने के और ये मुस्लिम आक्रांता का नामो निशान मिटाने की मैं अपील करता हूँ अपने शिक्षण मंत्री से। और टाइम मिला, आभार, थैंक यू, वंदे मातरम, भारत माता की जय, गर्वी गुजरात। धन्यवाद। श्री संतोष कुमार पी, नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर के लक्ष्मण। Thank you, sir. I stand here in support of this IIM Amendment Bill for establishing an IIM in Guwahati, Assam. This is another feather in the cap of development of Modi's agenda in Assam. Prior to Modi ji came to power, during particularly Congress and UPA regimes, we used to see a lot of disturbances and unrest among the Northeast people and the growing extremism and terrorism. The entire country was worried about it. From the day when Modi ji has come to power, he has given a call to act Northeast. So from that day onwards, every ministry has come up with some or other a development program or project in Northeast. The people of Northeast used to feel that, are we a part of India? So within this decade period, right from higher educations to highways, railways, airways, every capital city of the Northeast states now are connected to national capital Delhi, and they feel that they are a part of now mainstream. And they feel proudly and call them as now as Indians. Sir, this is going to be the 22nd IIM in the country, and surprisingly, there was only one IIM during 10 years period of UPA. But in 10 years of NDA regime, Modi's regime, 9 IIMs have come out. So this is the vision of Modi ji, and Modi ji's dream is to see that every educated of this country, let them become job creators rather than job seekers. With this visionary agenda, prior to Modi ji came to power, before 2014, hardly we had 350 startups. So now,
you can imagine more than 90,000 startups have come up within a span of 10 years because of this courses like managerial courses, excellence. And unicorns, hardly we had any unicorn in the country prior to Modi ji came to power. Unicorn in the sense $1 billion investment. Now we see more than 118 unicorns have come up in this 10-year period. Just because the courses like managerial, IIM, IIT. Apart from that, now we have seen that global brand IIMs like Ahmedabad, Bangalore and Kolkata. I also feel that Guwahati IIM will also definitely become one of the global brands. Now the youth of this Assam and the students of the Assam, they did not travel for thousands of kilometers for a better study, for better education. Now they have their own institution in Guwahati itself. Now they can be rest assured with the support of 555 crores of central government. Now Assam is going to be one of the, we have been seeing how northeastern states are flourishing just for the agenda of development. Repeatedly, not less than 6 states of northeastern states have come to power out of 8 states, irrespective of their caste and religion. People are supporting that development agenda. Finally, sir, I hail from Telangana and Hyderabad. My sincere and humble request to the minister concerned. After the formation of this new state, Telangana, we have now the demand in Hyderabad, let IIM be established. I request through you, sir, the Honorable Minister to look into it and concern for this. Thank you very much, sir. Thank you, Dr. Lakshman. The next speaker is Ravi Chandra Vediraju. Thank you, sir. The Indian Institute of Management Amendment Bill 2025 ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టినందుకు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారికి, అస్సాంలో గౌహతిలో ఐఐఎం శాంక్షన్ చేయడానికి 550 కోట్ల ద్వారా పెట్టడానికి మేము సంపూర్ణంగా మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ గారి నుంచి సమర్థిస్తున్నాం ఈ బిల్లును. ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించి 33 జిల్లాలు చేయడమే కాకుండా 33 మెడికల్ కాలేజీలు, అనేక నర్సింగ్ కాలేజీలు, గురుకులాలు పెంచడం అంటే చదువు పట్ల, విద్య పట్ల ఉన్నటువంటి మా వైఖరి మీ బిల్లులు సపోర్ట్ చేయడానికి దోహదపడుతుంది ఖచ్చితంగా. ఇంకా ఒకటి చెప్పాలంటే ప్రత్యేకంగా ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ గారు, మున్సిపల్ అండ్ ఐటీ శాఖ మంత్రి చేసిన సేవ, ఆయన నాయకత్వంలో హైదరాబాద్ను ఒక అంతర్జాతీయ ఐటీ హబ్గా ఎదిగింది. టీ హబ్, వి హబ్, ఇమేజ్ టవర్స్ మరియు స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్స్ అన్నీ ఈ విజయానికి, వారి దూరదృష్టికి ఫలితమే. ఐటీ రంగంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం 2023-24లో 2.7 లక్షల కోట్లు ఎగుమతి చేసింది. దాదాపు 10 లక్షల మందికి ఐటీ రంగం నుంచి ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి కారణం గౌరవ కేటీఆర్ గారు, కేసీఆర్ గారు అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయడం వల్లనే. ఇది దేశంలో 2వ అతిపెద్ద సాఫ్ట్వేర్ ఎగుమతి కేంద్రంగా కూడా హైదరాబాద్ చూడడం జరుగుతుంది. లైఫ్ సైన్సెస్ రంగంలో హైదరాబాద్లో ప్రపంచంలో వ్యాక్సిన్ రాజధాని అని కూడా గౌరవిస్తుంది. ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరం 11 బిలియన్ల డోసులు ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఇది భారతదేశ వ్యాక్సిన్ రంగంలో 65% వ్యాక్సిన్ తయారయ్యేది హైదరాబాద్ కేంద్రంగానే గుర్తించాలి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మరియు పరిశ్రమలు అభివృద్ధిలో ఫార్మా క్లస్టర్లకు జినోమ్ వ్యాలీ, ఐటీ రంగానికి హైటెక్ సిటీ, స్టార్టప్కు టీ హబ్ వంటి కేంద్రాలు హైదరాబాద్లో గ్లోబల్ మ్యాప్పై నిలిపాయి కూడా. ఈ బలమైన పునాది ఉన్నప్పటికీ హైదరాబాద్ తర్వాత గ్లోబల్ స్థాయి సాధించాలంటే కూడా ఇక్కడ ఐఎం అస్సాంతో పాటు హైదరాబాద్లో కూడా ఒక ఐఎం ఇవ్వడం తప్పనిసరి అవసరం అని చెప్పి భావిస్తూ గౌరవ మంత్రి గారికి మరియు ప్రధానమంత్రి గారికి కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. హైదరాబాద్ కూడా ఒక ఐఐటి కేంద్రం ఇవ్వాలి, ఐఎం ఇవ్వాలని చెప్పేసి కోరడం జరుగుతుంది. జాతీయ దృష్టి 5 ట్రిలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థతో ముందుకెళ్లాలంటే కూడా ఖచ్చితంగా కూడా ఇట్లాంటివన్నీ ఇవ్వాలి. కొన్ని గ్లోబల్ సిటీలు అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి ప్రధాన కేంద్రాలు కూడా నిలపాలి. ఐటీ, ఫార్మా, లైఫ్ సైన్సెస్, ఇన్నోవేషన్స్ రంగాల్లో ముందున్నటువంటి హైదరాబాద్ కు ఐఐఎం కూడా ఇస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, హైదరాబాద్ ఈజ్ ఏ గుడ్ సిటీ, మంచి వాతావరణం ఉన్న సిటీ, బయోటిక్, ఏరోస్పేస్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అన్ని రంగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కూడా వస్తే బాగుంటుంది. కొన్ని లక్షల మంది పిల్లలు పాస్ అయి కూడా ఇది ఒక మేనేజ్మెంట్ ఐఐఎం ఇస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి బలంగా కోరుకుంటూ ఇది శాంక్షన్ చేయాలని ప్రధానమంత్రి గారిని, విద్యాశాఖ మంత్రి గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం మీ ద్వారా. థ్యాంక్ యూ సార్, వీఆర్ సపోర్టింగ్ దిస్ బిల్. Thank you. Sri Ramji. धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे IIM अमेंडमेंट बिल 2025 पर बोलने का अवसर दिया, और साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी के मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का. मान्यवर, निश्चित तौर पर यह सराहनीय कदम है. आसाम के गुवाहाटी में IIM स्थापित हो रहा है. मान्यवर, बिना उच्च शिक्षा और शोध के
देश विकसित भारत का लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकता। यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात को गंभीरता से समझा और उन्होंने उपदेश दिया, शिक्षित बनो। और साथ ही मुंबई जैसी जगह पर सिद्धार्थ कॉमर्स कॉलेज खोलने का भी काम किया। इसी क्रम में हमारी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तब तमाम विश्वविद्यालय खोले, तमाम डिग्री कॉलेज खोले, तमाम मेडिकल कॉलेज खोले, साथ ही तमाम ITI, हजारों ITI कॉलेज खोले, BEd कॉलेज खोलने का काम किया, 5000 से अधिक प्राइमरी स्कूल खोलने का काम किया गया। साथ ही आज जो काम रुका उत्तर प्रदेश में, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं, यहाँ बैठे हुए हैं, SC ST PhD का स्कॉलर पहले UGC से आता था तो उन्हें टाइम पे मिल रहा था, रेगुलर मिल रहा था, लेकिन जब से सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के हाथों में गया है, तब से SC ST के स्टूडेंट्स को PhD का स्कॉलर रेगुलर नहीं मिल पा रहा है। कई महीने, कई साल उनको वेट करना पड़ता है। जब शोध करने वाले छात्र स्कॉलरशिप को लेकर परेशान रहेंगे तो शोध कैसे कर सकते? बिना शोध के हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम जानते हैं। बिना शिक्षा के आगे नहीं बढ़ सकते, हम अच्छी तरह से जानते हैं। और साथ ही इसी क्रम में माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट भी और करूंगा कि गुवाहाटी के इस IIM में नॉर्थ ईस्ट की भागीदारी भी तय कर दी जाए। कम से कम नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट को 50% के रिजर्वेशन इस IIM में मिलना चाहिए, ताकि इस वहां के भी छात्र आगे निकल करके देश के इस विकसित भारत के सपने को पूरा कर सकें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद श्री राम जी। श्री कर्नाट पुरकायस्ता, यू हैव 2 मिनट्स, तो यू हैव संक्षेप कीजिएगा। कर्नाट पुरकायस्ता नॉट प्रेजेंट। आपके 2 मिनट है। 2 मिनट्स। Thank you, Deputy Speaker, sir. Chairman, sir. I rise to strongly support the Indian Institute of Management Bill 2025. Sir, this bill is historic for the entire nation and particularly for the Northeast, as it paves the way for the establishment of an Indian Institute of Management at Guwahati in Assam. Sir, for decades, the people of Assam and the Northeast have been deprived of the access to institutions of the highest standards in education. Sir, our bright and talented youth had to travel far outside the region in search of quality higher education. So this is not only caused hardship to students and parents, but also resulted in a huge outflow of talents and resources. But sir, the scenario has completely changed under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who has termed our Northeast as Ashtalakshmi, giving the much needed impetus to the development of the Northeast in all sectors. Since 2014, the government has been making a conscious and determined effort to empower the Northeast with world-class institutions. We have already seen the establishment of IIT at Guwahati, AIMS in the region, and the several central universities and national institutes. And now the prestigious IIM is being set up at Guwahati. Sir, setting up an IIM not merely about another educational institution. This is about transformation. The IIM at Guwahati will open vast opportunities for the youth of the Northeast in the fields of management, entrepreneurship, and innovation. It will also help in building a strong ecosystem for business, industry, and startups in the region. Honorable HRD Minister Dr. Dharmendra Pradhan ji and our Honorable Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ji deserves our appreciation for taking this initiative forward. With this, the Northeast is no longer on the periphery of India's educational map. Instead of, it is becoming a hub for excellence. Sir, I would like to conclude by saying that with IIT, AIMS, and now IIM, the vision of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, making the Northeast a powerhouse of knowledge and progress, is being fulfilled. The people of Assam and the entire Northeast are grateful to this gift, and the students are especially happy as they now
have access to world-class education right at their doorstep. Lastly, sir, if Assam rises, Northeast rises. If Northeast rises, India rises. I strongly support this bill, sir. Thank you, sir. Dhanyavad. Sri Birendra Prasad Baisyaji, 2 minutes. Sri Baisyaji will speak in Assamia. I speak in English, sir. Okay, sir. Thank you, Honorable Chairman, sir. Allow me to speak in a historic moment of three-course people of Assam. Sir, I raise here to speak on behalf of my party, Assam Gana Parishad, on behalf of my party president, Atul Bora, and on behalf of three-course people of Assam, sir. Sir, aim of this Indian Institute of Management Amendment, aim is to establish a campus, IIM campus, Indian Institute of Management will be at Guwahati, sir. And government has already allotted 550 crores for development of the IIM in Guwahati. Indian Institute of Management, most prestigious organization of our country. And it is always recognized by, globally recognized by every part of the world. Students from every part of the world coming to study in Indian Institute of Management, sir. Sir, it was a long-standing demand of people of Assam, sir. We were always trying to have a Indian Institute of Indian Management in Guwahati, but when Congress were ruled, they totally ignored the demand of people of Assam, but it is Honorable Prime Minister Narendra Modi ji who has given this beautiful gift to three-course people of Assam, sir. I must compliment Honorable Prime Minister. I must compliment Honorable Dharmendra Pradhan ji for have this bill. Our dynamic Chief Minister Himanta Biswa Sharma always fought to establish one IIM in Guwahati, and it is already established, sir. With this institution, it will be not only develop Assam, because Guwahati is the hub of the northeastern region. Students from every parts of the northeastern region take part there, sir. I like to request Honorable Minister, look in this situation. Please, there should be some opportunity given to the students of the northeastern region and Assam to priority basis admission in the Indian Institute of Management. Dhanyavad. Sir, Dr. Bhupen Hazarika, known to everybody. Jetia, with your permission, I'd like to speak few lines in Assamese also, sir. Jetia, Assamar Otijjo Mandito, Guwahati Vishwavidyalaya স্থাপন হৈছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই গাইছিল জিলিকাব লুইতৰে পাৰ আজি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট গুৱাহাটীত যেতিয়া স্থাপন কৰিবলৈ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে 3 কোটি অসমীয়া মানুহে উচ্চ স্বৰে কাব জিলিকিব অসম জিলিকিব অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা জিলিকিব অসমৰ ৰাইজৰ আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিব আৰু এই অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্টে অসমৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক উৎকৃষ্ট স্থান প্ৰদৰ্শন কৰিব সক্ষম এইখিনি কথাকে কৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমক তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক সদায় গুৰুত্ব দিছিল মই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়াক ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট গুৱাহাটী স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে IIM 2025 যি আজি সংশোধনী বিলখন ইয়াত উত্থাপন কৰিছে অন্তৰেৰে সমৰ্থন কৰিছোঁ আৰু 3 কোটি অসমৰ মানুহৰ হৈ ইয়াক মই সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ শ্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীজী 3 minutes उपसभापति महोदय,
मैं अपनी मातृभाषा आसामीज में बोलना चाहता हूं कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। अब मैं धन्यवाद देना चाहता हूं असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी को। কংগ্ৰেছৰ মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল। অসমৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল, কিন্তু কেতিয়াও ভবা নাছিল যে নৰ্থ ইষ্ট বা অসমৰ উন্নয়নৰ কথা। আজি কংগ্ৰেছে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয়, কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই নৰ্থ ইষ্টৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কিছুমান এনেকা পদক্ষেপ লৈছে। আমি ধন্যবাদ দিবই লাগিব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক। আজি এই IIM প্ৰতিষ্ঠা হ'ব গুৱাহাটীৰ কামৰূপ জিলাত, আৰু এইটো 22 নম্বৰ IIM হ'ব, আৰু ইয়াত 555 কোটি টকা খৰচ কৰা হ'ব। তো মই পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভাৰতৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আমাৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়াক। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক। নিশ্চয় আপোনালোক জানে আমাৰ চৰকাৰে গুৱাহাটীত এইমছ নিচিনা হস্পিটেলো ইতিমধ্যে স্থাপন কৰিছে। এনেধৰণৰ পদক্ষেপ ইতিমধ্যে চৰকাৰ দ্বাৰা লোৱা হৈছে। সেইকাৰণে মই চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাই মোৰ চমু বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। Thank you, Mr. Teliji. Now, Sri Dharmendra Pradhan to reply to the discussion. धन्यवाद महोदय। अभी आपकी अनुमति से इस सभागार में 13 मान्यवर सदस्यों ने IIM गुवाहाटी की कैंपस को, गुवाहाटी की अंदर एक नई IIM की जन्म लेने को समर्थन किया। उन्होंने इसके प्रति इसके ऊपर जो मंशा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पूर्वोत्तर की विकास के लिए प्रतिबद्धता दिखाई, उसको समर्थन दिया, उनको अप्रिशिएट किया। इसलिए मैं सभी को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं। कई मान्यवर सदस्यों ने अनेक अच्छे सुझाव भी दिए। इसको कैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड की इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, जो वैकेंट पोस्ट है अन्य IIM में उसको कैसे भरा जाए और उसको कैसे अच्छा किया जाए, उसके बारे में बहुत पॉजिटिव एंड कॉन्क्रीट सजेशन दिया है। ये निश्चित रूप में सभी सजेशंस को मैं अच्छे से उसको कैसे क्रियान्वयन किया जाएगा उसकी मैं दायित्व भी लेता हूँ। चेयरमैन साहब, 1961 से हमारे देश में IIM की काम चल रही है। IIM एक इंस्टीट्यूशन के रूप में काम कर रहा है। अगर मैं 2061 से 61 टू 2014 इसी 53 इयर्स में 13 IIM खोला गया था। 13 within the span of 53 years, government of those years could create 13 IIM only. Due to priority of Prime Minister Narendra Modi, especially giving focus to youth and youth aspiration, और हमारी जो प्रतिबद्धता है भारत की नौजवान आत्मनिर्भर बने, ये एक अनायास हम लोगों के लिए एक स्लोगन नहीं है, एक पॉलिसी नहीं है, हम लोगों का ये एक फिलोसफी है। चेयरमैन सर, इस फिलोसफी को पूरा करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ते हैं। इसीलिए पिछले 11 साल में आज की इस अनुमति के उपरांत देश में और 9 नया IIM बन जाएगा। 8 पहले हमने बनाए थे, पिछले IIM मुंबई तक, आज को मिला के ये नया 9वां IIM बन जाएगा मोदी जी के कार्यकाल में। इसको मिला के
तो अगर इसे प्रारंभ में कहूँ कि इसमें पहले 13 IIM था 53 साल में और 11 साल में 9 IIM बने। ये एक अपने आप में एक स्टेटमेंट है। 2013-14 में समूचा 13 IIM में स्टूडेंट्स की नंबर था 3,500। आज 24-25 में मैंने इसमें IIM गुवाहाटी आया ही नहीं, इसमें स्टूडेंट नंबर इज 9,800। 3,500 to 9,800. This statement shows the commitment of our government towards creating new institutions and giving opportunity to many more students, needed students in our country. सर 17 में हम लोगों ने एक हिस्टोरिकल स्टेप लिया IIM को लेके, जो प्रधानमंत्री जी ने समीक्षा किया कि IIM, सर उन दिनों इफ यू कैन रिमेंबर, IIMs are not known as not competent to give degrees. In those days, IIM, whatever they may be, whatever quality they may have produced, the degree was known as PG diploma. So it was known as a diploma. For the first time, Prime Minister Modi, after 61, this has been started, but after 53 years, Prime Minister Modi recognized a key area, and after a few years, after 55 years, he envisioned a new act. By that provision, IIM became a full-fledged institute of national importance, INI. It creates a global branding, though IIM has branding previously also, but it has, in the global scenario, the issue of equivalence is a priority area. In the area of, when we are talking about equivalence, now with enactment of 2017 Act by this Parliament, IIM became a full-fledged university-like institutions. So today, IIM Guwahati, when it will start functioning, it is as good as a university. It's a university, sir. It's a university institution of national importance. Sir, उसकी अमेंडमेंट करते हुए आज हमने एक ही लाइन उसमें से जोड़ा कि भारत की 22nd IIM गुवाहाटी में खोला जाएगा, जिसमें मैंने पहले भी कहा 555 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। सर ये हमारी कमिटमेंट था, जो कहते हैं हम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की संतुलन विकास के लिए जो दायित्व लेते हैं उसको करते हैं। लंबे समय से मेरे मित्र और रामेश्वर तेली जी ने ठीक से याद किया, सर इस देश में माननीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। I think if you can correct me, I think in the entire period he was representing Assam, state of Assam. I think all the 10 years. लेकिन अगर इतिहास के विद्यार्थी के नाते, पब्लिक पॉलिसी के विद्यार्थी के नाते उसको समीक्षा करूं, और आसाम के सबसे खराब दिन किसी समय में था 2004 से 14 ही था। आसाम को कितने भी प्रकार से अनदेखा किया जाए कांग्रेस पार्टी ने, और उस समय में प्रधानमंत्री रहते हुए, क्योंकि उनके हाथ में निर्णय नहीं था, निर्णय और किसी के हाथ में था। ये अपेक्षा सर पहली बार नहीं था। उल्फा, मैंने आज जैसे कहा कि आप, हमारे वैश्य जी, हमारे तेली जी, अभी सर्बादा, ये सब उपस्थित थे। वहाँ हमारे मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी, हमारे कनक जी, ये सब आसाम के आंदोलन की उपज है। उस समय से ये मांग आते रहे कि आसाम में नेशनल इंस्टीट्यूशन खोले जाए। मैं आभार प्रकट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने उस आकांक्षा को, उस अपेक्षा को उन्होंने पूरा किया। और IIM के आज के अगर मैं 2 परिचय दूँ सर, IIM के बारे में मेरे को इस हाउस में इंफॉर्मेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं, सब मेरे से ज़्यादा भी जानते हैं, अच्छा जानते हैं। सर इस बार जब UAE की नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री जी को मिले सर, उनकी 2 मांग थी। अब हमारी देश में सर आज UAE एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, उनकी कारोबार के कारण दुबई है, अबू धाबी है, शारजा है, कई प्रकार की इकोनॉमिक मॉडल उनके पास है। सर उस इकोनॉमिक मॉडल में माननीय प्रधानमंत्री जी को UAE की नेतृत्व 2 चीज मांगा, हमें एक भारत की IIT दीजिए, हमें भारत की एक IIM दीजिए। मैं आज आपको सुखद सूचित करना चाहता हूं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जब हम इंडियन एजुकेशन को ग्लोबलाइजेशन की बात कहते हैं, हम विदेश की यूनिवर्सिटी को भारत में खोलने का अनुमति दे रहे हैं पहली बार। आज सर 15 यूनिवर्सिटी भारत में खोलने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ खुल भी गए हैं। और ऐसे ही भारत की इंस्टीट्यूशन IIT और IIM, सर पिछले 2 साल से भारत की 2 IIT विदेश में खुले हैं, उसमें से एक अबू धाबी में, एक उसमें अफ्रीका में। मैं अगले महीने
भारत की ओर से IIM अहमदाबाद, जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है। सर, IIM अहमदाबाद की परिचय क्या है? IIM अहमदाबाद फैक्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग यूनिकॉर्न, भारत में 2014 में बिल्कुल गिनती में स्टार्टअप होते थे। आज इसकी संख्या 1,50,000 से ऊपर जा चुका है। उनमें से अनेक यूनिकॉर्न बन चुके हैं। वो सारे ज्यादातर लोग IIM अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। ये आज इस प्रकार के IIM हम लोग वहां खुलने वाले हैं। हमने, जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने कोई भी चीज को, आज आसाम की क्या परिचय हो रही है, नॉर्थ ईस्ट की क्या परिचय हो रही है। सर, आज आसाम में लॉन्गेस्ट रेल कम रोड बोगीबिल ब्रिज आज आसाम में है। विश्व के सबसे 2 बड़े इंपोर्टेंट टनल, मेरे मित्र देश की इस संसद की जिनके नेतृत्व हम काम करते, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और मेरे मित्र अरुणाचल की जननेता श्री किरण रिजिजू जी को मैं बधाई देता हूं। उनकी राज्य में शीला टनल बन चुके हैं और इसी कार्यकाल में बन चुका है। सर, त्रिपुरा में मैत्री सेतु त्रिपुरा और बांग्लादेश को लिंक करते हुए बन चुके इन्हीं कार्यकाल में, पिछले 10 साल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में नॉर्थ ईस्ट में 10 नए एयरपोर्ट बन चुके हैं। सर, अभी अभी भारत सरकार ने 4 सेमीकंडक्टर कारखाना को खोलने के लिए अनुमति दिया। सर, कारखाना खोलने की अनुमति क्या देना पड़ता है? भारत सरकार उस इन्वेस्टमेंट की 50% इन्वेस्टमेंट भारत की ट्रेजरी के पैसे उन राज्यों को देता है। सर, 10 साल तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे देश की। सर, वो तो चिंता नहीं किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आसाम में, जब सर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे प्रांत में सेमीकंडक्टर खुल रहे थे, उस समय में नरेंद्र मोदी जी की पहल से आसाम में सेमीकंडक्टर की कारखाना खुला, 27,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट कर। सर, आज ऑर्गेनिक फार्मिंग में सिक्किम देश की अव्वल नंबर राज्य बन चुका है। मेघालय में फूड प्रोसेसिंग की अपनी नई दुनिया बना रही है। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अष्टलक्ष्मी, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, 8 राज्य हमारी भारत की स्वाभिमान की, भारत की विकास की, भारत की संवेदनशीलता की, भारत की भाईचारा के प्रतीक है। उसको हमारी सरकार में 8 ईस्ट पॉलिसी के तहत पहला अधिकार, कभी सारे इस देश में नेतृत्व कहता था संसाधनों की पहला अधिकार कोई वर्ग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा संसाधनों की पहला अधिकार देश की गरीबों की है, देश की महिलाओं की है, देश की युवाओं की है, देश के किसानों की है। और उसको करके दिखा, संसाधनों की पहला अधिकार भारत की पूर्वोत्तर हिस्सा की है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट की है, सब करके उन्होंने दिखाया। मैं इस पहल के लिए फिर मैं एक बार आसाम की सरकार को, विशेष करके वहां का मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने निरंतर प्रयास करते हुए आसाम में प्रधानमंत्री जी की अनुमति प्राप्त करके आज आसाम में गुवाहाटी में IIM खुलने वाला है। मित्रों, मैं अध्यक्ष जी, मैं सभी सदस्यों का और इस सदन का फिर एक बार आभार प्रकट करता हूं और मैं आश्वस्त करता हूं हमारे देश में अभी जॉब सीकर की संख्या, विशेष करके अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले बच्चे नौकरी के पीछे ना जाए और नौकरी बनाए। दे शुड बी जॉब क्रिएटर, दे शुड नॉट बी जॉब सीकर, दे शुड बी जॉब क्रिएटर, एटलीस्ट दोज हु आर स्टडीइंग इन elite institution like IIT and IIM. I am happy today the way North East is emerging itself, and Prime Minister Modi is solidly behind for the development of the North East, and the new leadership of that zone is aspiring for a new heights. This IIM Guwahati will certainly create a bigger scenario for entire Northeast, especially Assam and Guwahati. Again, I thank all the members for supporting this bill. Thank you, sir. Thank you, Honorable Sri Dharmendra Pradhanji. The question is that the Indian Institute of Management Amendment Bill 2025, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against, please say no.
I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. There is one amendment. Amendment number 1, Dr. Fawzia Khan, not present. I shall now put clause 3 to vote. Those in favor will please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 3 is adopted. Clause 4 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 4 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 1, enacting formula and the title are adopted. Now, Sri Dharmendra Pradhan, Honorable Minister, to move that the bill be passed. चेयरमैन महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को इस बिल को पारित करने के लिए अनुरोध करता हूं. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against, please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. We'll take up special mention now. Dr. Kavita Patidar. धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय. मैं सर्वप्रथम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री एवं उनकी दूरदर्शी सरकार का हार्दिक अभिनंदन करती हूं, जिनकी कृषक कल्याणकारी योजनाएं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री सफल बीमा योजना तथा किसानों की आय दुगना करने का संकल्प आज देश के अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर, सशक्तिकरण और सम्मान की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ा रहे हैं. मैं स्वयं एक कृषक परिवार से हूं, इसलिए किसानों की पीड़ा और परिश्रम को गहराई से समझती हूं. इसलिए किसानों की एक गंभीर समस्या को सदन के समक्ष रखना चाहती हूं. वर्तमान में घोड़ा रोज और जंगली सुअर लहलहाती फसलों को पल भर में बर्बाद कर रहे हैं. मेरे किसान भाई सीमित साधनों के चलते अपनी फसलों को नहीं बचा पा रहे. कुछ किसान भाई लोहे की तार फेंसिंग करवा भी लेते हैं, पर घोड़ा रोज 20-12 फीट की लंबी लंबी छलांग लगाकर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं और मेरे किसान भाई कुछ भी करने में असमर्थ है. अतः मेरा सरकार से विनम्र आग्रह है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष अभियान चलाकर इन वन्य पशुओं को पकड़कर संरक्षित अभयारण्यों में भेजा जाना चाहिए या विशेषज्ञों की राय लेकर इस समस्या का निराकरण करने हेतु एक व्यवस्थित योजना बनानी चाहिए, ताकि मेरे किसान भाई घोड़ा रोज और जंगली सुअरों से अपनी फसलों को बचा सके और इस समस्या का से उनको छुटकारा मिल सके. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. श्री गुलाम अली. शुक्रिया डिप्टी चेयरमैन सर. Demand to combat drugs menace through community participation. Arise to draw the attention of government to the alarming drug menace plaguing Jammu and Kashmir. An estimated 1.35 million people in J&K, about 8% of the population, are affected by substance abuse. Sir, 90% of these drug users are youth between 17 and 33-year-old. The proliferation of opioids, especially heroin, has created a public health crisis. For instance, shared needles have driven hepatitis C prevalences to nearly 20% among injecting drug users. Law enforcement alone cannot curb this epidemic, which is eating away at our social fabric. The need of hour is a massive community-driven fight back against drugs. We cannot succeed unless the fight becomes
a public movement involving all sections of society. I ask the government to facilitate the formation of village-level anti-drug committees, empowering local leaders, teachers, religious heads, and especially women in dedicated anti-drug committees will help combat the menace at the grassroots. Notably, women can play a pivotal role in rehabilitation and awareness. Setting up all women anti-drug committees and support groups will help destigmatize addiction and save our youth. Furthermore, there is a need to strengthen rehabilitation infrastructure. There is no proper arrangement or policy for rehabilitating drug addicts in J&K, leading many to relapse after detoxification. Therefore, I ask the government to establish a comprehensive rehabilitation policy, increase the number of de-addiction centers, ensure follow-up tracking of record individuals, and reintegrate them via skill training. Shukriya. धन्यवाद. श्री सुभाष चंद्र बोस पिल्ले. Deputy Chairman, sir, thank you very much, sir. The aquaculture in the state of Andhra Pradesh is facing big crisis due to tariff attack by United States President Donald Trump. For a year, every time the price Wanami shrimp increases in the international market, hence there has been some kind of trouble. Prices fall has become a regular occurrence. Even though there are no problems, local buyers are reducing prices and hurting the aqua farmers. The latest Trump announcement has once again reduced Wanami prices, which has opened the door to new concern among farmers. Wanami shrimp cultivation is taking place in the coastal region of Andhra Pradesh in lakhs of acres. It has become a habit for buyers to reduce the prices of shrimp by making it look like scandal, even if there is an international incident. Wanami shrimp fetched a good price in March this year. A large number of shrimp was coming in the market. The price was reduced by 220 rupees per count. When Trump announced the tariff in the first week of April, they blocked it, reduced the prices drastically. The price fell to rupees 60 per count. Later, the US announced that would be postpone the imposition of tariff for 3 months, but it is not worthy. The price was increased by only 15 per count. More than 70% Wanami, tiger shrimp and other shrimp exported from coastal Andhra are being exported to the United States. In this past, the anti-dumping box was 4.5% and the CVD tax was 5%, making total rupees 9.5%. The Trump government is implementing an additional 25% tax on this. Total tax burden is 34.9%. In addition to that, penal tax is another 25%. That is, total tax burden is 59.4% instead of 9.5%. Instead of 9.5%, this tax burden is 59.4%. And the farmers will not hesitate to take a temporary break from cultivation, sir. I urge the central government on behalf of YSR Congress Party to take immediate step to sort out the issue at the earliest possible. Thank you, sir. Thank you, Dr. Bhim Singh. Mahoday, subject demand for establishment of modern, well-planned and self-reliant new towns named Namo Nagar
महोदय, आज देश में तीव्र गति से शहरीकरण हो रहा है। गांव और छोटे कस्बों से लाखों लोग रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप बड़े शहरों पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव पड़ रहा है, जिससे वहां की मूलभूत सुविधाएं जैसे जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, यातायात, स्वच्छता एवं आवास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वर्तमान शहरों की पूर्व निर्धारित व्यवस्था इस तेजी से बढ़ती जनसंख्या का भार वहन करने में असमर्थ होती जा रही है। इस परिस्थिति को देखते हुए समय की आवश्यकता है कि देश में नए नगरों की योजना और स्थापना की जाए। ये नगर इस प्रकार विकसित किए जाएं कि सभी आधुनिक सुविधाएं जैसे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आवासीय संरचनाएं, सार्वजनिक परिवहन, हरित क्षेत्र और साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हों। इससे न केवल वर्तमान नगरों पर जन दबाव कम होगा, बल्कि यह नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर भी प्रदान करेगा। अतः मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि देश के विभिन्न हिस्सों में नमो नगर नाम से आधुनिक, सुनियोजित और आत्मनिर्भर नए नगरों की स्थापना हेतु एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए, ताकि शहरी संकट का समाधान निकाला जा सके और समावेशी विकास को बल मिल सके। धन्यवाद। श्री नरेश बांसल। उपसभापति जी, डिमांड फॉर फर्म पॉलिसी फॉर वेस्ट मैनेजमेंट इन द कंट्री। हमारे शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन एक गंभीर समस्या है और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने इसको समझा और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की, जिससे बहुत अच्छे परिणाम आए। अब जरूरी है स्थानीय निकायों में कचरे के निस्तारण की। भारत का ई कचरा उत्पादन लगभग 50% बढ़ गया है। प्रत्येक वर्ष नगर निकाय में ठोस कचरे की मात्रा बढ़ रही है और अनुमान है कि हर साल 110 मिलियन मैट्रिक टन नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का उत्पादन होता है। भारत अब आधिकारिक तौर पर अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कचरा जनरेटर है। इस कचरे के निस्तारण के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने की जरूरत है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बायोडिग्रेडेबल कचरे को स्रोत पर ही अलग किया जा सके और संसाधित किया जा सके। यहाँ तक कि जब कचरा संग्रहण और परिवहन हो भी रहा है तो कचरे का पृथक्करण और पुनर्चक्रण आवश्यकता अनुसार नहीं हो पा रहा है। इसलिए मौके पर ही कचरे का पुनर्चक्रण और पृथक्करण और प्रसंस्करण आवश्यक है। इसके साथ ही पूरी प्रक्रिया को विकेंद्रित करने की आवश्यकता है, ताकि स्थानीय स्व सरकारें स्रोत पर कचरे को संभालने के लिए सशक्त हो। सरकार को इस मामले पर तत्काल गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री सदानंद जी। Thank you, Upasabhapati Mahoday. My special mention is need for establishment of 150-bedded ESIC hospital at Mulgaon in North Goa district. I rise to draw the attention of the government to the urgent need for establishment of 150-bedded Employee State Insurance Corporation hospital at Mulgaon in North Goa district in Goa. At present, the ESIC scheme covers over 2.54 lakh insured persons and approximately 8.5 lakh beneficiaries in Goa. A large number of these insured persons reside in North Goa district. Currently, Goa has only one ESIC hospital located in Margaon in South Goa district. This results in difficulties for insured workers who have to travel long distance for seeking timely medical attention and treatment. In this regard, it is also important to note that in the 189th meeting of the ESIC, the acquisition of approximately 5 acres of land at Mulgaon was approved at a proposed rate of Rs 14.16 crore for the construction of the ESIC hospital, and accordingly, the sale deed was executed in December 2023, and possession of the land was also handed over to the ESIC by the Goa Housing Board Corporation. This new proposed ESIC hospital in Mulgaon, North Goa district, will be operated directly by ESIC
and will cater to nearly 1.35 lakh insured person in North Goa, as well as an insured person is adjoining Sindhudurg district of Maharashtra, which also lacks an ESIC hospital. This new ESIC hospital in Mulgaon is not just a need, it is a critical requirement for the welfare of the insured working population in the North Goa district. I appeal to the government to ensure that the construction of the 150-bedded ESIC hospital at Mulgaon is taken up on priority and that all pending processes are expedited at the earliest. Thank you, sir. Thank you. Ms. Swati Maliwal, not present. Sri Brijlalji. Thank you, Deputy Chairman, sir. My subject, need for tapping of geothermal power. The Prime Minister's vision for a clean and green energy, Atmanirbharta by 2040, encompasses several key areas. Energy security, which involves diversifying energy sources, boosting domestic production of alternative fuels like hydrogen and biofuels, solar, wind, hydro, and reducing dependence on imported oil and gas. Geothermal power is a new addition to it. Geothermal energy is a heat from Earth's interior generated by radioactive decay. India has 381 thermally anomalous sites identified by the Geological Survey of India GSI with a potential to generate 10,600 megawatt, enough to power 10 million households. ONGC is leading India's first geothermal power project in Puga Valley, Ladakh, with the aim of generating 1 megawatt power in the initial phase. This pilot project, located at 14,000 feet, is also the world's highest geothermal power plant. The project will involve drilling 2 wells, each reaching 1,000 meters deep, to tap the geothermal reservoir. Key projects include 20 kilowatt pilot plant in Manuguru, Telangana, Dirang in Northeast, and ONGC's 1 megawatt project in Puga Valley, Ladakh, and finally, which will be a commercial scale plant of 250 megawatt in future. Since Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu Kashmir, Northeast have many known spots of geothermal energy, we should tap these sources of energy which is non-polluting, carbon-free and sustainable. The project is expected to not only provide electricity but a great help to the force deployed at remote and inhospitable terrains. I urge the government to look into it. Thank you, sir. धन्यवाद. इंदुवाला गोस्वामी जी. धन्यवाद उपसभापति महोदय. My special mention is demand for the construction of Utrala Holy Road in Bajnath, district Kangra, Himachal Pradesh. उपसभापति जी, मैं सरकार का ध्यान अपने राज्य हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के बैजनाथ में उतराला होली मार्ग के निर्माण की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ. जिला कांगड़ा चंबा की दूरी कम करने वाले इस मार्ग का निर्माण बेहद महत्वपूर्ण है. इस सड़क के निर्माण से जिला कांगड़ा और चंबा की दूरी 200 किलोमीटर से कम होकर महज 60 किलोमीटर रह जाएगी. धौलाधार पर्वतमाला के दोनों ओर होली, भरमौर और कांगड़ा क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय और जनजातीय लोगों को आसान आवागमन की सुविधा मिलेगी. पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा एवं भूस्खलन के कारण जब मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तब यह वैकल्पिक मार्ग जनजीवन को सुचारू रखने में अहम भूमिका निभाता है. इस सड़क के निर्माण से दोनों जिलों के दुर्गम क्षेत्रों के लिए भी आवागमन आसान होगा और क्षेत्र के लोगों की जीवन रेखा भी सुदृढ़ होगी. यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भी भरपूर है. इस सड़क के बनने से पर्यटकों का आवागमन तेज होगा और धौलाधार पर्वतमाला के मनोरम अनछुए क्षेत्र भी पर्यटकों के लिए खुल जाएंगे. साथ ही यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से विकसित होकर रोजगार के अवसर भी सृजित करेगा. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर सरकार से अनुरोध करती हूं
कि उतराला होली मार्ग के निर्माण को केंद्र सरकार की योजना के अधीन लेकर शीघ्र कार्य प्रारंभ करवाने की कृपा करें, ताकि लाखों लोगों को इस मार्ग के बनने से राहत और हिमाचल के विकास को लाभ मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री महेंद्र भट्ट। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपका आभारी हूं। क्या आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान अति महत्वाकांक्षी योजना जिसके तहत हर आदमी को उचित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने हेतु प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खुलवाने की ओर दिलाना चाहता हूं। इस संदर्भ में यह कहना है कि उत्तराखंड एक सीमांत राज्य है जो भौगोलिक परिस्थितियों में हिमालयी क्षेत्र में बसा हुआ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार की घोषणा कि प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, इससे यहाँ के नागरिकों में एक खुशी की जागृति हुई है। पिछले लंबे समय से उस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा जिला मेडिकल कॉलेजों के लिए केंद्र से संपर्क साधा जा रहा है, परंतु अभी तक अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आए हैं। परंतु राज्य के सभी सीमा तटीय जिले जिनमें चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत सहित अनेकों जिलों में मेडिकल कॉलेज की नितांत आवश्यकता है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि जनपद में मेडिकल कॉलेज खुलवाने की महत्वाकांक्षी योजना को यथाशीघ्र अमली जामा पहनाया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री नीरज दंगी नॉट प्रेजेंट। श्री मयंक कुमार नायक। धन्यवाद। माइक। धन्यवाद सर। Requested for the including of additional villages of Mehsana district in Shama Prasad Mukherjee Urban Mission SPMRM। मैं सरकार का ध्यान श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन SPMRM की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस योजना के उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधा युक्त बनाना है। महसाणा जिले में अब तक केवल एक रूरल क्लस्टर बेचराजी स्वीकृत किया गया है, जिसके अंतर्गत पाइपलाइन नेटवर्क, उन्नयन, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का पुनर्निर्माण तथा लैंडफिल साइट का विकास जैसे कार्य 2020-21 तक पूरे किए जा चुके हैं। लेकिन महसाणा जिले के अन्य तहसील जैसे विसनगर, कड़ी, ऊंझा, खेरालू, वडनगर आदि भी इस मिशन के मापदंडों पर खरे उतरते हैं और विकास की दृष्टि से इस योजना में शामिल किए जाने के पात्र है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि आगामी चरणों में महसाणा जिले के अन्य गांवों को भी रूरबन क्लस्टर में शामिल कर वहां समग्र विकास को बढ़ावा दिया जाए। थैंक यू सर। थैंक यू। श्री केसरी देव सिंह जाला। थैंक यू Deputy Chairman, sir. थोड़ा उद्दम काम करिए सर। Mike. Sir, I rise to my subject today, sir, is the demand for the legal recognition and support for last-minute living wills in India. Sir, I rise today to advocate for the legal recognition and support of last-minute living wills in India, an issue which is vital to preserving human dignity and autonomy in healthcare. A last-minute living will, sir, or an advanced medical directive enables individuals to express their medical preferences should they become unable to communicate, especially in cases of terminal illness, comas, or irreversible conditions. Sir, the right to autonomy in healthcare is enshrined in our Constitution. In 2018, the Honorable Supreme Court upheld the legality of passive euthanasia and affirmed the right to self-determination in the end-of-life care. Yet, despite this landmark ruling, the practical implementation of a last-minute living will remains limited. This gap leaves many vulnerable to prolonged suffering through unwanted medical interventions. To address this, sir, I propose the following. First, the legal accessibility and the awareness. Citizens must be empowered to create these wills easily with clear guidelines and support systems. Secondly, the healthcare integration. Hospitals should be mandated to honor these wills with proper training for medical staff to respect patient directives. Third, the safeguards and the oversights. A medical board must review these wills to ensure ethical compliance and to prevent misuse. And the fourth is the emotional relief that the families get. These wills spared loved ones from making painful decisions during medical crisis. In conclusion, sir, through you, I urge the government to bring legislation that supports the creation and enforcement
of last-minute living wills in India, let us uphold every citizen's right to choose dignity and peace at the end of their lives. Thank you. Thank you. Sri Sujit Kumar. Sir, I rise to draw the attention of the government to the need for establishing a national tribal medicinal research and innovation center in Odisha, which would serve as one of India's richest repositories of tribal ethnomedicine and forest-based medicinal plants. Sir, Odisha is home to many tribal communities, including 30 particularly vulnerable tribal groups, PVTGs, such as Bonda, Dongriya, Kond, and Saura. For generations, these communities have preserved traditional treatments for ailments such as malaria, respiratory disorders, and orthopedic injuries using endemic herbs from Simlipal, Niyamgiri, and Gandhamardan hills of Odisha. Yet the state lacks any dedicated and permanent institutional infrastructure for research, documentation, or value-added innovation in the field of tribal medicine. Despite the identification of over 30 globally valued medicinal plants like vetiver and frankincense, Odisha still lacks a dedicated research center. A local facility, unlike the one recently supported under AIMS Delhi, would better integrate with the state's ecosystem and tribal communities that preserve this knowledge. Although limited efforts under the National Ayush Mission have supported some cultivation and nursery projects, there is still no centralized innovation hub for tribal medicine. I therefore urge the government to establish such a center with a focus on preservation and scientific validation of tribal medicinal knowledge, B, intellectual property rights protection and benefit sharing with tribal communities, C, support for tribal-led enterprises, and D, promotion of GI-tagged tribal medicinal products for global markets. Such an institution, sir, would not only safeguard indigenous traditions but also empower tribal communities as key stakeholders in India's growing Ayush economy. Thank you. Thank you. Dr. Sasmeet Patradi. Honorable Vice Chairman, sir. My special mention today is need for strategic imperative of data availability for India's artificial intelligence and technology startups. Honorable Vice Chairman, sir, I rise to draw attention of the government to a bottleneck that could decide whether India becomes a global artificial intelligence leader or remains a consumer on account of the acute scarcity of structured, high-quality, and interoperable data sets. Data is not merely the new oil. It is the new electricity powering algorithms, training large language models, enabling generative AI, and driving innovation from healthcare to defense technology. While nations like United States of America and China have developed open data regimes, federated data networks, and synthetic data pipelines, Indian startups remain constrained by fragmented public data sets, locked away private data, and absence of harmonized standards. This forces innovators to spend up to 60% of project cost on the data acquisition and cleaning, which is a crippling drag on speed and competitiveness. I urge 6 decisive steps from the government. 1. Establish a national data commons, anonymized, standardized, machine-readable data sets across digital domains. 2nd, mandate interministerial data harmonization so all public data sets follow common formats and metadata standards. 3, create secure public-private data sharing protocols with legal clarity and liability safeguards. 4, incentivize industry to contribute non-sensitive data sets backed by recognition and tax credits. 5, adopt privacy-preserving computation methods, federated learning, differential privacy, and secure multi-party computation, enabling innovation without compromising citizens' rights. 6,
invest in large-scale data annotation and labeling infrastructure, leveraging universities, research institutes, and startups to ensure data sets are AI-ready and globally competitive. Without such infrastructure, India risks importing foreign AI rather than exporting Indian AI. With it, we will leapfrog global peers, anchor leadership for the global South, and power a $1 trillion innovation economy. I thank you, sir. Thank you, Shri Dharyasil Mohan Patil. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य के कोकण क्षेत्र के लिए एनडीआरएफ की स्थायी स्टेशन की मैं मांग कर रहा हूं। सभापति महोदय, महाराष्ट्र का कोकण क्षेत्र, जिस क्षेत्र में रायगढ़, पालघर, ठाणे, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जैसे जिले आते हैं। अध्यक्ष महोदय, भौगोलिक एवं जलवायु दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील ये क्षेत्र है। इसके कारण प्राकृतिक आपदा यहाँ भारी घटना यहाँ पर घटित होती है। चक्रवात, भारी वर्षा, बाढ़, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा यहाँ पर आम बात है। अध्यक्ष महोदय, गेले 2-3 दिनों से कोकण में भारी वर्षा हो रही है और कोकण का जो भूतल है उसका जो तीव्र उतार है, उसके कारण यहाँ पर आने वाली बाढ़ बहुत ही कम वक्त में आती है और बहुत ही बड़ी क्षति करके यहाँ से चली जाती है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर होने वाली वर्षा 3,000 से 4,000। You have to go by the text only. आपने जो टेक्स्ट दिया है वही आपको पढ़ना है। बाहर की बातें नहीं ला सकते। बराबर है। बीते कुछ वर्षों में अध्यक्ष महोदय, इसमें निसर्ग तोकते जैसे चक्रवात, भारी वर्षा के साथ आने वाली बाढ़ जैसी घटनाओं ने कोकण क्षेत्र में जनधन को बहुत क्षति पहुंचाई है। साथ में ही अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में होने वाले औद्योगिक विकास के साथ होने वाली दुर्घटनाओं का भी विचार करना आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, आपदा होने के बाद पुणे स्थित एनडीआरएफ स्टेशन से आने वाली इकाइयां बचाव कार्य के लिए आती तो है, लेकिन उसमें बहुत सारा विलंब होता है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए अगर कोकण क्षेत्र में मध्य क्षेत्र में हुए पेंड, रोहा, पनवेल के आसपास अगर स्थायी एनडीआरएफ स्टेशन स्थापित हो तो पूरे कोकण क्षेत्र को इसका कवरेज मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, कोकण क्षेत्र के आसपास रहने वाले मुंबई, नवी मुंबई क्षेत्र को भी त्वरित मदद मिलना संभव है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं ये मांग करता हूं कि केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र के लिए पेंड स्थित स्थायी एनडीआरएफ स्टेशन स्थापित किया जाए। ऑनरेबल मेंबर, आपका जो अप्रूव्ड टेक्स्ट है, जो आपने दिया था, जो अप्रूव हुआ है, उसी को पढ़ना है। अंत में बाकी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। अंत में मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि कोकण महाराष्ट्र के पेंड स्थायी एनडीआरएफ स्टेशन की स्थापना की जाए, जिसमें पर्याप्त जनशक्ति, आधुनिक आपदा उपकरण, जल एवं स्थल दोनों प्रकार के बचाव साधन टेक्स्ट में नहीं है। और मेंबर, वही पढ़ रहा हूँ। जो टेक्स्ट आपको अप्रूव हुआ है वही पढ़ रहा हूँ। अभी जो पढ़ रहे हैं वो टेक्स्ट में नहीं है, आपका अप्रूव टेक्स्ट में नहीं है। नहीं, मुझे यही मिला है सर। चलिए समाप्त कीजिए। अब वही बोल रहा हूँ। फिर पढ़ूं मैं? नहीं, आप आखिरी पैराग्राफ पढ़िए। सेम ही है, ठीक है। यह कदम केवल आपदा प्रतिक्रिया की गति और क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि कोकण क्षेत्र में लाखों निवासियों के लिए जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। आभारी। धन्यवाद पाटिल जी। श्रीमती संगीता यादव। माननीय उपसभापति जी, आपको बहुत बहुत आभार। सब्जेक्ट है मेरा डिमांड टू इम्प्लीमेंट द रिफॉर्म फॉर डिसेबल पीपल ऑन प्रायोरिटी बेसिस अंडर द स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना के तहत दिव्यांगजन को यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, यूडीआईडी
जारी करने से उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र पूरे देश में मान्य हो गया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन अभी कई सुधार आवश्यक हैं। अस्थि बाधित दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल देने में 80% की दिव्यांगता की अनिवार्यता के कारण कई दिव्यांगजन जिन्हें शिक्षा रोजगार के लिए यात्रा करनी होती है, इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। अतः सरकार से अनुरोध है कि 50% से अधिक बेंचमार्क अस्थि बाधित दिव्यांगजनों को इस योजना में शामिल किया जाए। यूडीआईडी कार्ड और प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से दिव्यांगजन समस्याओं का सामना करते हैं। राज्य के समेकित क्षेत्रीय केंद्रों सीआरसी के विशेषज्ञों को प्रमाणीकरण बोर्ड में शामिल कर इस प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। साथ ही सीआरसी और डीडीआरसी के संविदा कर्मचारियों की सेवा शर्तों को भी अस्थायी करने का सरकार से आग्रह है। सहायक यंत्रों उपकरणों की खरीद फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना के तहत श्रवण बाधित बच्चों को कोक्लियर इम्प्लांट की सुविधा दी जाती है, लेकिन रखरखाव के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। प्रोसेसर और बैटरी बदलने का खर्च गरीब परिवार नहीं उठा सकते हैं। अतः सरकार से अनुरोध है कि इसमें वित्तीय सहायता दें। उपकरण निर्माता कंपनियों से 10 वर्ष का बीमा करें। ब्लॉक स्तर पर संसदीय स्वास्थ्य मेले आयोजित कर दिव्यांगजनों के प्रमाणीकरण, उपकरण वितरण, रोजगार और चिकित्सा सुविधाओं को एक मंच पर उपलब्ध कराया जाए। आय प्रमाण पत्र हेतु स्वयं प्रमाणन सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा दी जाए और विशेष शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति की भी सुनिश्चित किया जाए। आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि इन जो भी मैंने डिमांड रखी है उसको प्राथमिकता से लागू किया जाए। धन्यवाद। श्रीमती किरण चौधरी। Thank you, sir. So my subject is concern over irregularities in crop compensation for Kharif 2023 in Charki Dadri district and Bhiwani district in Haryana. सर, मैं सरकार का ध्यान हरियाणा में जिला भिवानी और जिला दादरी में खरीफ 2023 की कपास की फसलों में प्राकृतिक आपदाओं, गुलाब सुंडी जिसको कहते हैं, में हुई क्षति के मुआवजे वितरण में गड़बड़ियों के मुद्दे की तरफ आकर्षित करवाना चाहती हूँ। मुआवजा वितरण का काम एक निजी बीमा कंपनी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिला था। कपास का मुआवजा क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट CCE के तहत होता है, जिसमें उपरोक्त मुआवजे की राशि लगभग 450 करोड़ रुपए थी, परंतु मुआवजे का मापदंड CCE से हटाकर सैटेलाइट इमेजरी डाटा के आधार पर करवा लिया गया, जिससे किसानों में बहुत ही जबरदस्त व्यापक रोष है। यह भी उल्लेखनीय है सर कि CCE के मापदंडों को हटाकर सैटेलाइट इमेजरी डाटा का बदलाव सैटेलाइट टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के नाम पर किया गया, जो उस समय निलंबित थी। इस निर्णय से किसानों को 340 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ तथा निजी कंपनी को 340 करोड़ रुपए की अनुचित फायदा हुआ है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस मामले में हस्तक्षेप कर किसानों को उचित मुआवजा व सरकारी अमले की जवाबदेही तय करने के लिए मामले की समुचित जांच व आवश्यक कार्रवाई करवाने की कृपा करें, ताकि किसानों को उनका न्याय मिले और उनका मुआवजा पूरा उनको मिले। थैंक यू। धन्यवाद। मैसेज फ्रॉम लोकसभा सेक्रेटरी जनरल। Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 20th August 2025 adopted the following motion: that the bill further to amend the Constitution 130th Amendment Bill 2025, the Government of Union Territories Amendment Bill 2025 and the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2025 be referred to a joint committee of the Houses consisting of 21 members from this House and 10 members from Rajya Sabha to be nominated by the Honorable Deputy Chairman. That in order to constitute a sitting of the joint committee, the quorum shall be as near as may be 1/3 of the total number of members of the joint committee. That the committee shall make a report to this House by last day of the first week of next session. That in other respects, the rules of procedure and conduct of business of this House relating to parliamentary committees shall apply
with such variations and modifications as the Speaker may make, and that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said joint committee and communicate to Lok Sabha the names of members to be appointed by Rajya Sabha to the joint committee. We'll go back to special mention now. Sri K.R.N. Rajesh Kumar. Not present. Dr. Sumer Singh Solanki. धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। नर्मदे हर। माननीय उपसभापति महोदय, उद्यानिकी फसलें केला, पपीता, संतरा, अनार, आम को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल करने से संबंधित मेरा स्पेशल मेंशन है। मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। यह विषय देश के उन लाखों किसानों से संबंधित है जो उद्यानिकी फसलों की खेती कर अपने परिवार और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में अनेक योजनाएं लागू की है। इन्हीं में से एक ऐतिहासिक योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, अतिवृष्टि, सूखा, ओलावृष्टि, पाला, तूफान आदि कारणों से होने वाली फसलों के नुकसान की भरपाई करना है, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य और सुरक्षा मिल सके। आज देश के अनेक हिस्सों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत केवल खाद्यान्न, दलहन और तिलहन फसलों को अधिसूचित किया गया है, जबकि उद्यानिकी फसलें जिनमें केले, आम, अनार, संतरा, पपीता जैसी फसलें शामिल नहीं है, इस योजना में अधिसूचित नहीं किया गया है। बड़वानी जिले के 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की खेती की जाती है, जिनमें लगभग 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में उद्यानिकी फसलों का उत्पादन होता है। खास तौर पर केले की खेती की जाती है, जिसका औसत उत्पादन लागत 7 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर है। यह लागत तुलना में अधिक हो जाती है अगर कोई प्राकृतिक आपदा जैसे तूफान, ओलावृष्टि इन बागानों को नष्ट कर देती है। तो चिंताजनक बात यह है कि वर्तमान में ऐसी कोई फसल बीमा योजना नहीं है जो इस नुकसान की भरपाई कर सके। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उद्यानिकी फसलों को तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत अधिसूचित किया जाए या इन फसलों के लिए पृथक बीमा नीति बनाई जाए, ताकि उद्यानिकी किसान भाइयों और बहनों को इसका लाभ मिल सके। जय हिंद, नर्मदे हर। धन्यवाद। श्री महाराजा संजोबा लेसम। Thank you, sir. Sir, my subject of my special mention is demand for two-pronged approach in the construction of Jiribam Imphal Railways project. Sir, Jiribam Khongsang section 55.36 km had already been completed and commissioned in September 2022. However, remaining portion of Khongsang None 18.25 kilometers and the None Imphal 37.02 kilometers are yet to be completed. Apart from frequent burns, blockades and extortion, etc., our national highways are prone to mud and landslides during the rainy seasons, which hampers the movement of good trucks carrying essential commodities in the state. So, the speedy completion of this railway project will be the only solution for all these inconveniences. I therefore draw the kind attention of government to start the construction work also from Imphal and so as to speed up the project. As of now, the construction work is being progressed only from Jiribam side. Therefore, two-pronged approach for construction from both sides will give the required impetus to move the construction works towards a speedy completion. Otherwise, it will take another 2 or 3 more years to complete the project. Thank you, sir. Thank you. Dr. Fozia Khan, not present. Srimati Maya Narodia. त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। धन्यवाद उपसभापति महोदय जी, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपके माध्यम से
सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूं, जो देश भर के करोड़ों अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से संबंधित छात्रों और युवाओं से जुड़ा हुआ है। यह एक स्थापित तथ्य है कि केंद्रीय सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को हर वर्ष नया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है, जबकि अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ऐसी कोई वार्षिक नवीनीकरण की प्रक्रिया अनिवार्य नहीं है। माननीय महोदय जी, यह दोहरा मापदंड न केवल अनुचित है, बल्कि इससे छात्रों को हर वर्ष अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिससे न केवल समय और संसाधनों की बर्बादी होती है, बल्कि कई बार योग्य अभ्यर्थी अंतिम तिथि तक प्रमाण पत्र न जमा कर पाने के कारण सुनहरे अवसरों से वंचित रह जाते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए भी जाति प्रमाण पत्र को स्थायी रूप से मान्यता देने की व्यवस्था करें, जैसा कि एससी और एसटी वर्ग के लिए प्रचलित है। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर सिकंदर कुमार। Thank you, sir, for giving me the opportunity to speak on very important subject. My special mention is on concern over the effects of plastic pollution. महोदय, मैं सरकार का ध्यान भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट की बढ़ती गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। प्लास्टिक ने आधुनिक भारत जीवन में क्रांति तो ला दी है, लेकिन इसके साथ साथ अब यह गंभीर पर्यावरणीय चुनौती भी बन गया है। पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट इत्यादि कई राज्यों में प्लास्टिक से बने सामानों का उपयोग, कटलरी, पैकेजिंग, दैनिक उपभोग लगातार बढ़ने से पर्यावरण में प्रदूषण और नए युग के लिए स्वास्थ्य का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। प्लास्टिक अपशिष्ट अब माइक्रोप्लास्टिक में विघटित होकर भोजन, जल और मृदा तंत्र प्रणालियों में भी प्रवेश कर गया है। प्रतिबंध के बावजूद सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रभुत्व को अभी भी नकारा नहीं जा सकता। मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि भारत के बढ़ते प्लास्टिक अपशिष्ट के संकट को दूर करने के लिए कड़े प्रयासों और कठोर नियमों के निर्धारण की समीक्षा की जाए, जिससे इस गंभीर समस्या के दुष्परिणामों से भविष्य को बचाया जा सके। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर वी शिवरासन, not present. Dr. Medha Visram Kulkarni. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. My subject for today's special mention is urgent demand to resolve Aadhaar access barriers faced by biometrically unfit citizens. Honorable Deputy Chairman, sir, I rise to draw the attention of this august House to an urgent and deeply concerning issue affecting thousands across our country. There are countless citizens, particularly senior citizens, persons with disabilities, manual laborers, farmers, and those in rural and remote areas who are unable to authenticate their Aadhaar due to worn out fingerprints, retinal damage, or physically impairments. Many also suffer from chronic health conditions that prevent biometric verification. As a result, they are being denied access to essential services such as food rations under PDS, old age pensions, healthcare benefits, and even banking. This is not merely a technical flaw, it is a denial of dignity and basic rights to the most vulnerable. While UIDAI does provide for exceptional enrollment and alternative mechanisms such as facial recognitions and OTP-based authentication, these alternatives are not being implemented effectively at grassroots. Frontline staff are often unaware and unwilling to facilitate such cases. Sir, I urge the government to take the following steps on priority. Implement alternative Aadhaar authentication methods in mission mode. Ensure no citizen is denied access to welfare
due to biometric mismatch, launch a nationwide awareness campaign and establish dedicated grievance redressal system, appoint a nodal officer in each district to ensure easy access and swift resolution. Sir, I urge the government to look into this matter. Thank you, sir. Thank you, Sri Samik Bhattacharya. Thank you, sir. The subject concern over impediments in completion of the new Godia Sector 5 and Airport Metro line in Kolkata. I wish to draw the attention of the government to delay in completion of the new Godia Sector 5 Airport Metro Corridor, a project critical to the urban mobility infrastructure of Kolkata. While significant progress has been made and the stretch from New Godia to Sector 5 is almost ready for commissioning, a crucial 366-meter segment near Chinglihatta remains incomplete. The short but vital section has become a choke point, holding up the inauguration and operation of the entire route. The delay not only undermines the spirit of the timely infrastructure delivery, but also deprives lakhs of daily commuters, especially IT professionals, students, airport-bound passengers, of a last and modern transport solution. There has been little headway in resolving the pending issues involving land acquisition, alignment, clearness of interdepartmental coordination. I urge the government to ensure that the remaining stretch at Chinglihatta is expedited on priority. Completion of this metro corridor will significantly boost connectivity between South Kolkata, the IT hub at Sector 5 and the airport, benefiting the city's economy and easing urban mobility. Thank you, sir. Thank you, Sri Sanjay Singh. Not present. Sri Sanjay Seth. Not present. Srimati Devi Mathur. Not present. Dr. K. Lakshman. Thank you, sir, for allowing me to speak on the most concerned and alarming issue. The subject is concern over menace of online gaming and betting apps among youth. I rise to express concern over the exploding menace of online gaming and betting apps that are rapidly ensnaring the Indian youth. These platforms, camouflaged as entertainment or skill-based games, are driving countless individuals into addiction, debt, and even suicide. In cities like Hyderabad, suicide helplines have reported a 60% surge in distress calls from betting addicts. In one harrowing case, a young girl fell into a 9 lakh debt trap after initially winning on a casino app. Tragically, such stories are now common across states. What makes this worse is the glamorization of these platforms by celebrities and influencers, whose endorsements mislead lakhs of impressionable users. This cannot be allowed to continue unchecked. Sir, I request the government to take multi-pronged action, that is to launch a nationwide digital de-addiction awareness campaign to educate youth and families about the psychological and financial harms. There is a need to bring strict and centralized regulation over online betting and real money gaming apps, including mandatory age verification, spending caps, and Aadhaar-linked logins. ASCI, Advertising Standards Council of India, is required to be empowered to regulate and prohibit celebrity endorsements of such apps. Further, banning of all betting and gambling platforms that endanger social and financial stability may be considered. Let us act before a generation is lost chasing illusions behind screens. We must uphold the safety and dignity of our youth, the architects of Vikasit Bharat. Thank you, sir. Thank you. Sri Raghav Sadda. Thank you, sir, for permitting me to raise an important issue under special mention. My subject is demand for free subscription of advanced generative AI tools to all Indians. भारत के हर नागरिक को एडवांस जनरेटिव एआई टूल्स की मुफ्त सब्सक्रिप्शन दी जाए। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इस बदलती हुई दुनिया में एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं,
बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की, सपने देखने की और उन्हें पूरा करने की। ये हमारे किसान भाइयों के लिए स्मार्ट खेती है, स्टूडेंट्स के लिए 24/7 अवेलेबल ट्यूटर है, व्यापारियों के लिए बिजनेस प्लानर है, नौजवानों के लिए करियर गाइड है और बुजुर्गों के लिए डॉक्टर भी है। आपके हर सवाल का जवाब, आपकी हर समस्या का समाधान एआई के पास उपलब्ध है। यही कारण है सर कि आज यूएई, सिंगापुर, चाइना जैसे देश अपने हर नागरिक को एडवांस्ड एआई की सेवा, फ्री एक्सेस, फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। वहीं भारत में जहां 140 करोड़ सपने पलते हैं, लोग इन एडवांस्ड एआई टूल से वंचित हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये टूल्स महंगे हैं। एक रिसर्च कहती है कि 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस $15 ट्रिलियन की वैल्यू क्रिएट करेगा। अगर हम इस रेस के लिए अभी से तैयार नहीं हुए तो भारत इस रेस का विजेता बनने की बात तो छोड़िए, इस रेस से बहुत पीछे छूट जाएगा। अगर भारत सरकार हर नागरिक को एडवांस्ड जनरेटिव एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक, क्लॉड को सभी उम्र के और हर वर्ग के स्थानीय भाषाओं में मुफ्त और सुरक्षित तरीके से उपलब्ध कराए तो यह देश की प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा सकता है और लोगों का कीमती समय बचा सकता है। चाहे कोड लिखना हो, डेटा एनालिटिक्स हो या कोई सरकारी फॉर्म भरना हो, ये सारे काम एआई की मदद से और आसानी से और जल्दी से किए जा सकते हैं। ये डिजिटल डेमोक्रेसी की ओर अगला कदम है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस क्रांति में कोई भारतीय पीछे ना छूटे और इंडिया सचमुच में डिजिटल इंडिया बने। मेरी सरकार से यह मांग है कि इस विषय पर ध्यान दिया जाए। जय हिंद। धन्यवाद। श्री रामजीलाल सुमन, नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर दिनेश शर्मा। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय, आपने समसामयिक विषय के संबंध में कि बच्चों में और युवाओं में जो विसंगतियां, असमानताओं का भाव जागृत होता है, उसके संबंध में मुझे वक्तव्य देने का अवसर प्रदान किया। आपका आभार। मैं सरकार का ध्यान बच्चों में पौराणिक और शास्त्रीय ज्ञान की कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हमारे बच्चे हमारे समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर से दूर होते जा रहे हैं। तकनीकी विकास और आधुनिक शिक्षा के कारण बच्चों में पौराणिक कथाओं, शास्त्रों और हमारे महान विचारों की जानकारी का अभाव होता जा रहा है। हमारे शास्त्रों में निहित ज्ञान और पौराणिक कथाओं में निहित नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का स्थान बच्चों के जीवन में विशेष महत्व रखता है। ये ज्ञान न केवल उनकी नैतिकता और चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं, बल्कि हमारे समाज की मूल परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को भी संरक्षित रखते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारे सरकारी और निजी विद्यालयों के पाठ्यक्रम में पौराणिक और शास्त्रीय विषयों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए। महाभारत, रामायण, गीता और अन्य शास्त्रों में निहित शिक्षाएं बच्चों को नैतिक मूल्यों, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा देती हैं। इससे वे न केवल अपना चरित्र सशक्त बना सकते हैं, बल्कि अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान और गर्व की भावना को भी विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों को पौराणिक कथाओं और शास्त्रों से जोड़ने के लिए विशेष कक्षाओं या कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा सकता है। यह पहल न केवल बच्चों के मानसिक और नैतिक विकास में सहायक होगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को हमारी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। माननीय सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस विषय पर ध्यान देते हुए आवश्यक कदम उठाया जाए ताकि बच्चों को पौराणिक ज्ञान और शास्त्रों की शिक्षा दी जा सके। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर दिनेश शर्मा। डॉक्टर जॉन ब्रिटस, नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। धन्यवाद महोदय।
आपने मुझे आज मौका दिया कि मैं जो लो स्पीड एंड लिमिटेड कवरेज ऑफ 5G सर्विसेज इन इंडिया है, भारत में है, उसके बारे में अपनी बात रख सकूं। सर, देश में 5G की शुरुआत अक्टूबर 2022 में डिजिटल इंडिया के सपने के साथ हुई थी। सरकार UPI, डिजिटल पेमेंट्स और AI आधारित गवर्नेंस की बात करती है, जिसका विजन था कि विदेश में बैठा एक डॉक्टर भारत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सर्जरी कर सकेगा। भारत की औसत 5G डाउनलोड स्पीड 2023 की शुरुआत में 304 Mbps थी सर, 2023 में, जो 2023 के अंत तक 280 Mbps रहेगी और आज सर सिर्फ 91 Mbps तक गिर चुकी है। ये वैश्विक रैंकिंग में भारत 12वें स्थान पे था और वो फिसलकर 26वें स्थान पर आ गया है। UAE, कतर, दक्षिण कोरिया जैसे देश 400 Mbps की स्पीड के साथ काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ 2024 में 5G यूजर्स की संख्या 29 करोड़ हो चुकी है और 2028 तक 77 करोड़ होने का अनुमान है। ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में 5G अभी भी एक सपना रह गया सर, वहां तक तो पहुंचा ही नहीं। सबसे चिंताजनक बात है BSNL की, जो सरकारी कंपनी है। जियो और एयरटेल ने तो 2022 में 5G लॉन्च कर दिया था, तब से लेकर आज तक BSNL ने 5G की शुरुआत ही नहीं की है। पहले डेडलाइन थी दिसंबर 23, मतलब 1.5 साल पहले ही, फिर जून 24 हुई और अब जुलाई 25 थी और वो भी सर निकल गया। मेरा सरकार से आग्रह है कि वह इस विषय को गंभीरता से ले और देश भर में 5G नेटवर्क कवरेज, स्पीड स्पेक्ट्रम उपयोगिता की पारदर्शी निगरानी सुनिश्चित करे और एक नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी करे, जिससे सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों की जवाबदेही तय हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री गोला बाबूराव। Thank you very much, Vice Chairman Mahoday. The subject is concern over issues faced by Vizag Steel Plant. Being India's first shore-based integrated steel plant, the RINL was earning profits and had a positive net worth. But subsequently, it started incurring losses due to not having captive mines. RINL is buying iron ore from open market at higher rates. Unlike other PSUs, steel companies which have captive mines and enjoy cost of advantages. Secondly, RINL is borrowing money at the rate of 14% interest for working capital. As a result, the cost of production has gone up, thereby affecting its profitability. RINL has been appealing for allocation of iron ore mines under Section 17A of the MMRDR Act 2015, but no significant progress has happened so far. I therefore demand that time has come to allot iron ore mines to RINL to make it profitable. Further, the employees of RINL are facing issues of wage revision, promotion policy, recruitment, delayed payment of salaries, cuts in salary, perks, HRA, etc. Recently, RINL has introduced 2 voluntary retirement schemes. Nearly 1,500 employees have been given VRS. Andhra Pradesh Assembly has also passed the unanimous resolution against the privatization of the RINL. Steel Ministry says that CCEA approved 100% RINL disinvestment. Hence, I make the following demands from the government. The immediate allocation of iron ore mines to RINL. Second, stop retrenchment of employees. Third, provide more money
for working capital. Fourth, merge RINL with SAIL. Thank you so much. Thank you, Sri Sant Balbir Singh, not present. Dr. Anil Sukhdev Rao Bonde, not present. Sri Santosh Kumar P, not present. Sri Mithilesh Kumar Ji. मेरा सब्जेक्ट है डिमांड फॉर एक्सपेंडिंग इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर एक्सपेंशन ऑफ राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। मैं नई दिल्ली स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के विस्तार कार्य में हो रही देरी का मुद्दा उठाना चाहता हूं मान्यवर, जो मुख्यतः प्रक्रियात्मक और पर्यावरणीय स्वीकृतियों में आ रही बाधाओं के कारण लंबित है। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के विस्तार का कार्य कोविड-19 महामारी से पहले ही प्रारंभ हुआ था, जिसका उद्देश्य ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, जेरियाट्रिक्स और उन्नत सर्जिकल देखभाल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आरएमएल अस्पताल की क्षमता को सुदृढ़ करना था, किंतु पिछले कई वर्षों से परियोजना बार बार अटकी रही। पहले महामारी कारण, बाद में दिल्ली वन विभाग से स्टेप सेकंड वन स्वीकृति प्राप्त करने में देरी के कारण विस्तार के लिए चिन्हित 8.8 एकड़ भूमि पर पेड़ हैं और विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा 10.1 प्रतिपूरक वृक्षारोपण की प्रतिबद्धता के कारण स्वीकृतियां वर्षों तक लंबित रहीं। अब ये परियोजना अप्रैल 2026 तक पूरे होने की स्थिति में है। हाल ही में 470 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज ब्लॉक के निर्माण हेतु एक नई विस्तार परियोजना को स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत एमबीबीएस सीटों को 100 से बढ़ाकर 250 किया जाएगा और ये परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वो महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना से जुड़ी परियोजनाओं के लिए स्वीकृति परियोजनाओं की पुनर्रचना की जाए और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हुए त्वरित स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति हेतु एक फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिस स्वाति मलिवाल। Thank you, Chairman, sir, for allowing me to speak, to put up a special mention on a crucial issue. सर, दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में अवैध डेयरियां एक गंभीर समस्या बन चुकी हैं। गाय को हमारे समाज में मां का दर्जा दिया गया है, लेकिन कई अवैध डेयरियां मुनाफे की भूख में गौ माता पर अत्याचार कर रही हैं। दूध निकालने के बाद इन गाय और भैंसों को दिन भर सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। भोजन और पानी के अभाव में ये कचरा खाती हैं और थककर सड़कों पर बैठ जाती हैं। इससे दुर्घटनाएं होती हैं और गाय तथा वाहन चालकों दोनों की जान जोखिम में पड़ती है। 2023 से 2025 के बीच दिल्ली में ऐसी 2500 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इन बेजुबान गाय की कोई गलती नहीं है। डेयरी में इनके स्वास्थ्य, टीकाकरण और पोषण की कोई व्यवस्था नहीं है। बीमारियां, चोटें और संक्रमण आम हैं। दूध निकालने के बाद इन्हें बेसहारा छोड़ दिया जाता है। दिल्ली में सैकड़ों अवैध डेयरियां बिना लाइसेंस और नियंत्रण के चल रही हैं। मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि इन अवैध डेयरियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और नई और आधुनिक गौशालाएं बनाई जाएं, जहां गाय को सुरक्षा, सेवा और सम्मान मिल सके। यदि हम ये कर पाए तो गाय और आम जनता दोनों की दुआएं लगेंगी। थैंक यू सर। धन्यवाद। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 21st August 2025.
Hello and welcome viewers. You're watching In Depth with your host Kriti Mishra. The PM Gati Shakti National Master Plan has transformed India's infrastructure landscape with a coordinated, efficient and integrated approach. It integrates ministries and national schemes like Bharatmala, Sagarmala, Udan and various industrial corridors, creating a unified framework for roadways, railways, ports, waterways and airports. The plan addresses inefficiencies in India's traditionally compartmentalized infrastructure development approach. Here's everything you need to know about PM Gati Shakti. Come along. On the 75th Independence Day, Prime Minister Narendra Modi announced the PM Gati Shakti initiative during his address to the nation from the ramparts of the Red Fort. The National Master Plan for Multimodal Connectivity, launched on October 13, 2021, celebrated its third anniversary recently. This digital platform is designed to bring various ministries, including railways and roadways, to ensure integrated planning and coordinated execution of infrastructure projects. The initiative aims to provide seamless and efficient connectivity for the movement of people, goods and services across various modes of transport, thereby enhancing last-mile connectivity and reducing travel time. PM Gati Shakti incorporates the infrastructure schemes of various ministries and state governments such as Bharatmala, Sagarmala, Inland Waterways, Dry and Land Ports and Udan. PM Gati Shakti incorporates the PM Gati Shakti National Master Plan has onboarded 44 central ministries and 36 states or UTs, and a total of 1,614 data layers have also been integrated. To ensure data accuracy, key infrastructure ministries have finalized standard operating procedures for a 3-tier system. SOPs for 8 infrastructure ministries and 15 social sector ministries have been notified, with development continuing for other ministries and states and UTs. A milestone of assessing 208 big-ticket infrastructure projects worth 15.39 lakh crore rupees of various ministries adhering to PM Gati Shakti principles has been achieved. Additionally, 434 projects under 3 economic corridors of the Ministry of Railways have been evaluated and shared with the PMO, and they are energy, mineral and cement corridors, high traffic density corridors and rail sagar. A district master plan portal is being developed to extend PM Gati Shakti to the district level. This portal will aid district authorities in collaborative planning, infrastructure gap identification and scheme implementation. A beta version of this portal has already been created for 28 aspiration districts, and user accounts were provided to these districts on September 18, 2024. Trial runs of the portal are ongoing, with orientation programs in October 2024. The portals for all countries' districts will be developed in a phased manner and completed by March 31, 2025. Let's take a look at the key accomplishments under PM Gati Shakti National Master Plan. The PM Gati Shakti has resulted in numerous achievements across various sectors, significantly improving project planning, speed and execution. The Ministry of Road Transport and Highways planned over 8,891 kilometers of roads using NPM, while the Ministry of Railways used this to plan more than 27,000 kilometers of railway lines. Railways also accelerated the completion of final location surveys, completing 449 final location surveys in financial year 2022 compared to 57 in financial year 2021. The Ministry of Petroleum and Natural Gas streamlined the process of detailed route survey, reducing the time required to create reports from 6 to 9 months to just 1 day using electronic DRS. Using NMP principles,
a 13-gigawatt renewable energy project from Leh in Ladakh to Kaithal in Haryana, achieved optimal alignment of the green energy corridor for interstate transmission. Goa used the NMP platform to develop a disaster management plan for flood-prone areas along the Yamuna River. The Uttar Pradesh government employed the State Master Plan to identify locations for new schools in underserved areas. Gujarat planned its 300 km coastal corridor, which reduced the number of NOC permissions required for clearance from 28 to 13, enhancing connectivity between 4 districts while boosting tourism. The Department of School Education and Literacy used the NMP portal to link PM Shri schools with local industries for district-specific skill training. The Ministry of Health and Family Welfare identified internet shadow areas and mapped sites for new healthcare facilities. The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship used it to identify suitable locations for new training institutes near economic clusters. The Ministry of Rural Development integrated schemes such as Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana for better asset planning and implementation. The Ministry of Tribal Affairs identified infrastructure gaps for particularly vulnerable tribal groups using the PM Janman portal. These accomplishments highlight the PM Gati Shakti's broad utility in improving planning, efficiency and collaboration across various ministries and sectors. साथियों, 2014 से पहले जब भी मैं आप जैसे साथियों से बात कर रहा था तो एक बहुत बड़ी शिकायत, और आपको भी पुराने दिन याद होंगे या कभी आज जाते होंगे तो देखते होंगे, जहां भी देखो लिखा होता था वर्क इन प्रोग्रेस। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन हमारे यहां होता यही रहा कि पहले कहीं सड़क बनती है, फिर बिजली के लिए सड़क खोदी जाती है, फिर पानी वाले पहुंचते हैं, वो पानी फेर देते हैं, फिर टेलीफोन वाले आते हैं, वो कुछ और ही खड़ा कर देते हैं। एक सड़क बजट खर्च हो रहा है, काम खत्म नहीं हो रहा है। ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा है। और इसलिए होता है कि सरकारी विभागों का एक दूसरे के साथ न तो संवाद होता है,